दिल के सारे राज खोलता है जब ये डायमंड बोलता है। दिल की ऐसी बातों को डायमंड से बुलवाओ। मलाबार और अब पाइए डायमंड वैल्यू पे अप टू 25% ऑफ ड्यूरिंग माइंड डायमंड फेस्टिवल। From igniting a vision to propelling it forward, Gujarat embarked on its automotive journey at the first Vibrant Gujarat in 2003. And today, that spark has evolved Gujarat into a globally acclaimed automobile hub. From the world's largest emerging plug-and-play automobile hub to India's first lithium-ion battery manufacturing plant, from the preferred base of global auto manufacturers to cutting-edge institutes for advanced sector training, Gujarat's growing automobile industry is propelling India towards achieving the vision of Vikasit Bharat at 2047. Be a part of Gujarat's growth momentum at Vibrant Gujarat Global Summit 2024. Gateway to the future. जब डेटा ब्रीच अलर्ट के बिना हो हैकर्स के पास अथॉरिटी, फिर किस बात की साइबर सिक्योरिटी। क्विक हील, आज के लाइफ की प्रायोरिटी साइबर सिक्योरिटी। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। Top headlines at 10:30. Massive breakthrough after 12 years of negotiation as government strikes big success on Ulfa peace deal. Historic centre Ulfa peace deal likely to be inked today. Huge buzz ahead of JDU National Executive meet in the national capital. Sparks fly high over Lalan Singh's possible resignation as party chief. Cracks widen in India alliance over Prime Minister face. Now Siddaramaiah pitches for Rahul Gandhi as Prime Minister face, while AAP and TMC bat for Kharge. State set for the Grand Ram Mandir unveiling. Prime Minister Modi to visit the holy city tomorrow to launch projects worth more than 11,000 crore rupees. Amid buzz over major bureaucratic reshuffle, Prime Minister Modi to preside over Chief Secretary's meet in the national capital. Dense fog engulfs the national capital. Visibility drops to nearly zero in many areas. Very good morning. It's 10:30. We are live and breaking. I'm Samiksha Srivastava, starting this edition with the latest that's coming in on news. It's in fact news from Canada, where there is no end to Khalistani rampage. It's Canada temple priest's son who's now been attacked by armed men. In fact, around 15 rounds were fired at the house of Satish Kumar's son, who is the temple priest. In Canada, Satish Kumar, note, is president of Lakshmi Narayan Temple in Canada's Sarai. So a famous temple in Canada which has now come under attack by the Khalistanis. In fact, it's the chief priest's son who seems to have been attacked by these armed men. This is the famous Lakshmi Narayan Temple in Canada's Sarai, where armed men were seen firing 15 rounds at temple towards the temple. And it's temple priest's son who seems to have been targeted by these armed men. Let's go across to Amandeep, who's getting us the details. Amandeep, first up, give us more updates on those, on the health status rather of the temple priest's son, on whom 15 rounds were fired at by these armed men. Absolutely, Samiksha. This incident takes place on 27th of December early in the morning. And in fact, 2 armed men strike at the residence of
president of Lakshmi Narayan Temple, Satish Kumar's son. And in fact, multiple rounds, around 15 rounds, has been fired, and later they managed to flee from the spot. And in fact, immediately after that incident, they have reported to the Royal Canadian Mounted Police, and they reached the spot. In fact, no one injured in this incident, according to the police statement that they have identified the holes and identified identification marks of the firing incident. And in fact, they said now the CCTVs are also being scrutinized by the police, and even they are also questioning the witnesses to this entire incident, just because it is a very serious incident, Samiksha. Satish Kumar, who is the president of Lakshmi Narayan Temple in Canada's Sarai, and the same Lakshmi Narayan Temple has been vandalized in the month of August by these pro-Khalistani elements by putting out some posters, pictures, and even written the graffitis on the walls of pro-Khalistani slogans. The same Lakshmi Narayan Temple is being targeted by these Khalistani elements, and they have carried out the rally outside that temple during the night in the month of December with the flags and the posters of pro-Khalistan. Same Lakshmi Narayan Temple has been earlier targeted by these Khalistani elements several times in Kani. Just because Samiksha, Sarai turned out to be one of the favorite places of these Khalistani elements who are active in Canada, and in fact, repeated incidents are clear-cut indication that there are certain people who are basically belongs to Hindu community. They are not feeling safe, and in this recent incident, these are the raising questions over the Canadian government that what they're trying to do to secure the Hindus in that area. If the firing has been taking place and openly firing, it might claim anybody's life when this incident has been taken place. But now the RCPM, the Royal Canadian Mounted Police, is claiming that investigation is on, and in fact, they have also released some helpline numbers, and if anybody identify those accused involved in this firing incident, they may deliver the information on that WhatsApp or calling numbers as well. But the point is that after Justin Trudeau's statement regarding this Hardeep Singh Nijjar's killing and blaming India, these Khalistani elements who are active in Canada, they are getting so much space and targeting Indians there. They are targeting the Hindu religious places, including temples. Just few days back, we have seen how a temple has been vandalized in Canada's Nawaz Scare in California, as I beg to pardon, in Nawaz Scare in US as well. So these temples are being targeted continuously by these Khalistani elements. Sarai is one of the hub of these Khalistani activists. So let's wait and watch how the investigation will pan out, just because earlier also certain vandalization of the temples has also been witnessed by these done by these Khalistanis, and in fact police every time claiming that investigation is on and they are trying to find out the links between these Khalistanis and the vandalization of the temples. But this time straight away firing on the son of temple president, and this is a very serious incident, and let's see what will come out during the course of investigation done by RCPM. Yes, Samiksha. Amandeep, that's exactly the point I was coming to. Like you're telling us, this is not the first time that the temple has been attacked by the Khalistani miscreants. But tell us more that because since this incident happened on the 21st, why is it that it's coming to light only now? Is there a possibility that there was possibly an attempt to keep this incident under the wraps by the Trudeau government? Well, initially, Samiksha, it was an apprehension that some extortionist might target Satish Kumar's son. But later, Satish Kumar himself identified that just because he is the president of Lakshmi Narayan Temple, his son has been targeted. And in fact, this statement has also been given by Satish Kumar to Royal Canadian Mounted Police also. And further, they have started the investigation. Once they have started the investigation, only then this news came out that certain incident has also been reported. Even this earlier, the incident is being approved by RCMP, but the point is that now this Khalistani angle has been developed, and the son
temple priest's son's residence has been targeted with a specific reason also. So that is the reason. This is all in the statement of Royal Canadian Mounted Police that they are investigating the matter, and this incident has been taken place on 27th of December early in the morning, and now they are trying to figure out the people who are involved into this entire incident. They are gathering the CCTV footages installed nearby the areas. They are trying to record the statements of the witnesses who were present during this incident also, and they are trying to find out the linkage of this entire incident, that what is the motive behind this firing incident. So far, the clear-cut indication is that Khalistani goons might be behind this firing incident, just because they are already in their move to target the Hindu community, to target the temples, and even the targets to the Indian diplomats as well. Earlier also, Samiksha, we have seen that how Indian diplomats has been attacked when they tried to enter in the Gurdwara in Glasgow as well. The people all the way traveled from London to Glasgow just to attack the Indian diplomat, and he managed to escape safely from that point also. And later, several incidents reported in Canada and US that how the temples has been vandalized by these Khalistani goons. But now they have started targeting the people and the priest of the temple as well to establish their own agenda. This is a very serious incident, and in fact, Satish Kumar has also given his statement to the police that try to find out the reason behind the firing, just because that is the most important part in this entire incident. If these Khalistani goons are behind the shooting, so that is very serious, and Canadian government should take the very serious note and action. Yes. There seems to be some problem with the network of Amandi, but let's focus to what's happening in the holy city, where an important meet is going to be taking place today. And this meet is going to be crucial, given that Ram Lalla will be selected. In fact, the idol of Ram Lalla is going to be selected at this meeting that is slated for today at the Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra. Now, according to sources, the idols of 3 artists will be placed in front of all the members of the trust, and all members will then vote after seeing the statues. So the idol of Ram Lalla was going to be decided, with more members in favor will be chosen. So, of course, a key meet that would be taking place in Ayodhya, and this is going to be crucial, given that the idol of Ram Lalla will be decided upon in this meet, where members of the Janmabhoomi Teerth Kshetra would be present. In fact, as per sources, the idols of 3 artists would be placed in front of all the members of the trust, and all members will then vote after seeing the statues. Let's cut across to Priyanka, who's been getting us all the colors from the holy city. Priyanka, to begin with, talk to us more about the Ram Lalla idol, which the trust is going to decide on today. We understand that all the members of the trust will be present to decide on the idol of Ram Lalla. Well, that's right, Samiksha. We are being told that Champat Rai and Gopal Rai, along with the head priests as well, who are going to be present there, the main people of the trust who are going to be present when the 3 idols of Ram Lalla are going to be unveiled. Now, let us talk about the idols, because this entire process has taken several months. For 6 months at least, only the sketches were being made by the core team of the trust, and also the architects who had been present, who were designing the entire outline of the temple. Now, in that, there were sketches which were made, over which, basis of which they had been given to these 3 sculptors who had been called from Karnataka and Rajasthan, who had been in Ayodhya for over 10 months, and they had been holed up in their own work shed, and they had been making the idols by themselves. Now, if we talk about the stones that are being used, because the significance of that is also going to be very, very important when it comes to whether the idol of Ram Lalla is going to be dark-skinned or light-skinned, because 2 of the artists from Karnataka have used black marble in making those idols, and the other artist from Rajasthan, in fact, has used a white marble in making the same idol as well. In fact, the entire size of the idol, we are being told, is over 51 inches, because this is Ram Lalla's idol. That is the child version of Lord Ram that is going to be put in the main temple of Ram Janmabhoomi temple as well. So that is going to be decided on the 2 characteristics of divinity and innocence that again and again the trust members, and specifically Champat Rai, while he was speaking to the media, had also confirmed that these are the 2 aspects that they are going to be taking into consideration when the vote
voting takes place on the selection of the idol, because there will be all of the trust members, all of the saints who are the main saints of the temple who are going to be present, people who have played a key role in the entire establishment of the Ram Janmabhoomi temple who are going to be present, post which there will be a voting process that will take place over the 3 idols that will be unveiled in front of them, and by tonight we can expect that there will be a decision that will be taken. Now this also comes in the backdrop of the Prime Minister's visit tomorrow that is all set to take place, and today we are being told that the review meeting for the Chief Minister is also underway as we speak. In fact, we are right outside the place where the meeting is taking place, where we are being told that Champat Rai, Nripendra Mishra and all the authorities for the security arrangements and also for the developmental projects to be in place are present inside, and they are also carrying out a review meeting before the Chief Minister arrives here at around 2 p.m. Now, in front of the Chief Minister as well, perhaps these sketches would be put, these pictures of the Ram Lala idol will be put, and then this decision will also be taken as well, because we are being told that the Chief Minister is going to be in Ayodhya from 2 p.m. till about evening. It might be possible that he will stay the night, because it is tomorrow morning that the Prime Minister will be landing in Ayodhya, will be carrying out a grand road show, and then will be addressing a rally as well. So all of those things are happening in the next 48 hours, Samiksha, where rapid developments when it comes to the idol will also take place, and we are of course waiting for the inauguration of the projects, the developmental projects, thousands of crores worth of developmental projects that will be inaugurated and dedicated to the nation tomorrow by the Prime Minister. So this is what is in place for the next 48 hours. But today itself, by about afternoon, is when that meeting will take place, when the voting will take place, and by evening, either today evening or tonight, we will have a decision as to which idol has been selected. Now, of course, that idol will not be unveiled in front of the people. Those pictures will also not be shared, but the idol will be placed inside of the temple. We are being told 2 to 3 days before 22nd of January, when the entire Muhurat will also be taken out as to how this idol will be placed inside the temple. And another unique fact of this entire selection, Samiksha, if we could share with our viewers, according to the rituals, according to the customs, any time that a Ramlala idol is installed in a new temple, the idol is in fact taken for a parikrama of sorts across the entire village or city that the temple is based in. But keeping in mind that this is Ayodhya, and the kind of law and order situation that would also spark, the authorities in fact had stated that they will not be able to control the entire situation if such a parikrama takes place. So there will be a 100 to 200 meter parikrama that will be done outside of the temple. But tonight, Samiksha, the wait will be over, and there will be a decision that will be taken over the 3 idols as to which idol will be selected to be kept in the main temple of the Ram Janmabhoomi. Right. Priyanka, thank you so much. Priyanka, of course, getting us all those reports and has been reporting from the holy city. But note that Ayodhya is all set to welcome Prime Minister Modi tomorrow. In fact, the Prime Minister will be inaugurating projects worth more than 11,000 crore rupees, which includes a redeveloped railway station as well as the Ayodhya airport. Here's a report on the developments in the holy city ahead of Prime Minister's visit tomorrow. की बदौलत और जान जिस्म में बोलिए अयोध्या रामलला सरकार की जय. Ayodhya is decked up to welcome Prime Minister Modi, who's coming to the holy city on Saturday. The Prime Minister will inaugurate the Valmiki International Airport and the redeveloped railway station. Prime Minister Modi is slated to hold a roadshow from the airport to the railway station. प्रधानमंत्री 30 तारीख को जब एयरपोर्ट की सौगात देने के लिए आ रहे हैं, उस दौरान प्रधानमंत्री एक लंबा रोड शो भी करेंगे, जिसकी शुरुआत इसी साकेत चौक से होने वाली है. इस साकेत चौक से प्रधानमंत्री के रोड शो की शुरुआत होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहां पर उस अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की सौगात भी उन लोगों को देंगे जो देश के कोने कोने से अयोध्या आने की तैयारी कर रहे हैं. यूं तो पूरी अयोध्या नगरी को भव्य तरीके से सजाया गया है, खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, लेकिन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट की तस्वीर देखते ही बन रही है.
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट की तस्वीर तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन मेरे पीछे आप देखिए मैं मौजूद हूँ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर, जिसको दुल्हन की तरह सजाया गया है। चारों तरफ रोशनी से नहाया हुआ है रेलवे स्टेशन। केवल रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि यह हाईटेक रेलवे स्टेशन है। बड़े बड़े एयरपोर्ट से भी बेहतर सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन पर हैं। लाउंज है, कैफे है, तमाम सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन पर हैं। और आप देखिए जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक चारों तरफ से इस रेलवे स्टेशन को खूबसूरती से लाइट से सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइटों से इस अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को सजाया गया है। तैयार होने के बाद अब इसकी सजावट का काम किया जा रहा है, क्योंकि 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका लोकार्पण करना है। उसको देखते हुए इसको भव्य तरीके से, खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। The authorities have stepped up security in the district. हम लोगों ने अयोध्या के सभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे वो लगभग कंप्लीट हैं और उनको अंतिम टचअप का कार्य किया जा रहा है, ब्यूटिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि अयोध्या को आने वाली सभी सड़कों को 4 लेन ऑलरेडी किया जा चुका है। रेलवे लाइन की डबलिंग का कार्य अंतिम चरण में है। रेलवे स्टेशन का टर्मिनल बिल्डिंग बन चुका है। एयरपोर्ट की तैयारी हो चुकी है। तो अयोध्या आने की व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है और हम लोग उसको सजा रहे हैं। Prime Minister Modi's visit to Ayodhya comes weeks ahead of the grand inauguration of the Ram Mandir on January 22nd. Bureau Report, Republic TV. Taking to a very short break. Coming up on the other side, the latest that's making news from across the country. Cracks widen in opposition bloc as Sidha now calls her Rahul as the Prime Minister face. मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। अक्सर मन में डर सा आता है, तुम बस एक हाथ बढ़ाओ, राह हम बना लेंगे। तुम बस मैदान तक जाओ, हम जीत को अपना लेंगे। लेट्स प्लेज टू हेल्प मेक इंडिया समर्थ बरहंडे, मंजिल उनकी, साथ हमारा। hande.co.in पर लॉग इन करें। Alright, getting in a big lead in the Israel embassy incident probe. In fact, as we understand that the police in the latest has identified both suspects. The suspects apparently took auto from the Jamia University. The police is now scanning CCTV footage of the area. So this is in relation to the alleged Israel embassy blast case. Both suspects apparently took an auto from Jamia to Prithvi Raj Road. The police having identified the suspects. In fact, the police has identified the auto driver who revealed that the suspect did not know Hindi and spoke in English. The suspect stopped at Prithvi Raj Road for about 5 minutes before leaving in another auto. The police is now examining CCTV footage of the entire route. All right, let's go across to Akhil, who's joining us live from the national capital. Akhil, that's a big lead in the Israel embassy incident probe. The police, as we understand, has identified both the suspects. As we understand that both the suspects did take an auto from the Jamia University. Well, absolutely. The latest input that we are getting from our sources that both the suspects who have been seen in that CCTV footage have taken an auto ride from Jamia to Prithvi Raj Road. As we all know that the incident which took place near the Israeli embassy just outside the Hindi Training Institute, just few meters away from the Hindi Institute, where an explosion was heard, and then after that the police team was roped in over there, and then they saw that
there was nothing as of a major blast, but what the initial probe revealed that there was a letter which was found in this case, and in which and later the incriminating details have found, and in which abusive words and foul language were also used by the suspects. And if you see what we know so far in this case, that both the suspect have basically taken an auto from Jamia to reach the Prithvi Raj Road, and right now the police have recorded the statement of the auto driver. They have identified the auto driver who basically took both the suspects from Jamia to Prithvi Raj Road, and the police have recorded their statement. And in that statement, the auto driver revealed that both of them didn't know Hindi language. They were speaking in English, and both of them hired that auto driver for rupees 150, and they told that they need to go to Prithvi Raj Road. And then after that, they were there for approximately 15 minutes initially for 5 minutes, and then the auto driver moved from that place. And he said that both of them have moved from Prithvi Raj Road to Kartavya Path Road. So this is what the latest update that we are getting from our sources. And if you see what we know apart from this, that the police team have recovered approximately 500 CCTV footages in this case, and they are examining all those CCTV footage to know the exact detail that which route was taken by both the suspects who have been zeroed in all the CCTV footage that have been recovered so far. So the police team, the special team which have been investigating the case, is trying to recover the details of the path which was followed by both the suspect. And apart from that, there's another thing that is coming up in this case, that approximately 5,000 calls have been identified, and police are working on those calls that the suspects have made those calls to whom. So the police team is the investigation will be clear, then only it will be mature to say that what has come so far in this case. Apart from that, when that incident took place, after that what we saw at the ground zero, the next day NSG team also reached over there, NIA team again reached over there, and they have recovered materials from that very ground zero, and the forensic and all those details were handed over to the forensic team. So forensic team have recovered all those data from there, and so once the FSL report and other details, crucial details, will come out, then only the larger picture will be cleared, that how the entire incident was planned and what was their modus operandi and how they were planning to execute that plan. And another important point to be noted, that the letter which was written, which was found enveloped in a flag, so it was mentioned over there that Sir Allah Resistance was the organization which was seemed to be behind that. Yes. Right, Akhil, thank you for the moments. Of course, I keep tracking the latest in that Israel embassy incident probe. For now, we slip in a very short break. In 2003, the first Vibrant Gujarat Global Summit enabled Gujarat's emergence as an industrial force. Today, 2 decades later, it serves as the launchpad, propelling Gujarat towards IT supremacy. With the aim to become a global IT hub, Gujarat envisions to achieve INR 25,000 crores in IT exports. By establishing leadership in advanced technologies like quantum computing, AI and blockchain, creating skilled workforce that befits the global industry's needs, and enforcing policies that focus on sectoral achievements. Gujarat's progressive IT growth is propelling India towards achieving vision of Viksit Bharat at 2047. Join India's futuristic IT ecosystem at Vibrant Gujarat Global Summit 2024. Gateway to the future. RP Sanjeev Goenka Group, growing legacies over 200 years.
Pulse beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। Top headlines this morning, massive breakthrough after 12 years of negotiation as government strikes big success on ULFA Ulfa peace deal. Historic Centre Ulfa peace deal to take shape today. Huge buzz ahead of JDU National Executive meet in the national capital. Sparks fly high over Lalan Singh's possible resignation as party chief. Probe reveals both suspects took an auto from the Jamia University. CCTV footage now being scanned. Cracks widen in India alliance over Prime Minister face. Now Sadharan pitches for Rahul as Prime Minister face, while AAP and TMC bat for Kharge. State set for the Grand Ram Mandir unveiling. Prime Minister to visit Ayodhya tomorrow to launch projects worth more than 11,000 crore rupees. Amid buzz over major bureaucratic reshuffle, Prime Minister Modi to preside over Chief Secretary's meet in the national capital. All right, we start with the latest that's coming in on the suspense that's been brewing over change in leadership in the JDU. The latest that is coming in is that the party chief Lalan Singh has reached at Bihar Chief Minister's residence in the national capital. So amid rumours that Lalan Singh could be retiring, rather stepping down from the post as JDU chief, he has now arrived at Nitish Kumar's residence. All right, so a key meet that would be taking place, the national executive meet, so as to say, of the JDU, that is slated for 11:30 this morning. And while those key meetings of the JDU would be taking place, there are strong speculations that Lalan Singh could be making way for Nitish Kumar as the party chief. All right, before we go across to Harsha, let's go across to Prakash, who's been tracking this very closely. Prakash joining us live from the national capital. Prakash, once again, take us through what exactly has been happening within the JDU-1 and the kind of statements that have been coming in, particularly from Lalan Singh and Nitish Kumar, who've denied any sort of rift between the two when it comes to that change in leadership that is expected of the JDU. Well, right now I spoke to Devesh Chandra Thakur, who is the chairman of the Legislative Council, as well as he's the top leader. You should play out that interview. It's a massive interview. He has clearly hinted at the possibility of a political realignment in Bihar taking shape. And he said in clear terms that politics is a game of possibility. And to my question that Giriraj Singh and various other leaders are claiming that the doors of the BJP are shut for Nitish Kumar, Devesh Chandra Thakur categorically said that Giriraj Singh is outside the house. He doesn't have the key to the house, and the key to the house is only with those who are inside the house.
hinting at Narendra Modi and Amit Shah like it happened in 2017 when the top leaders of the BJP were not even aware of what was happening and brewing in the mind of the top leadership of the BJP. Well, that's for future. But right now I'm here at the Constitution Club. In some time from now, the National Executive Meeting of the BJP, of the JDU would be held and various deliberations would take shape. And it is most likely that Lalan Singh, the current incumbent president, would be resigning from his post, and in order to keep the flock together, Nitish Kumar is likely to take over as the president of the party, so that because there is there are talks going on that Lalan Singh was cozying up to Lalu Yadav, and he had also paraded few MLAs. But as far as the political realignment taking shape, Nitish Kumar had to take charge, or any other leader. We'll have to wait and watch. It's a high voltage political drama unfolding in Bihar, because after the sweep in the Hindi heartland, specifically in Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh, and with Nitish Kumar doing a caste census and reservation policy, and in order to gain traction among the EBC voters, maybe a political realignment would take shape, but that's for the future. But today, it's most likely that a decision would be taken, and a step in that direction may be taken with the ouster of Lalan Singh and Nitish Kumar taking charge once again. Back to you. Right, Prakash, requesting you to stay with us. In fact, let's play out that exclusive conversation you had with one of the JDU leaders ahead of the National Executive Meet that would begin in just a while from now. तो नीतीश कुमार अगर कमान संभालते हैं जेडीयू के अध्यक्ष पद की, जैसा कि एक बार और संभाले थे शरद जी को हटाने के बाद, तो क्या ये पार्टी के हित में होगा? पार्टी मजबूत होगी इससे? निश्चित रूप से। मैंने कहा, आदरणीय राजीव रंजन सिंह जी भी, आदरणीय ललन सिंह जी भी कहते हैं कि भाई हमारे भी तो नेता नीतीश कुमार ही हैं, और वो पिछले 30 साल 40 साल से उनके साथ रहे हुए हैं। ये अगर कोई सोच रहा है कि दोनों में अनबन है, तो ये बिल्कुल ही मतलब बेवकूफी होगा ये समझना। जो भी हो रहा होगा, दोनों ने बात विचार करके पार्टी के भविष्य के लिए जो बेहतर है उसी के आधार पर उन्होंने अपनी कोई एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी, ऐसा मैं समझता हूं। जब से इंडिया अलायंस ने, इंडिया गठबंधन ने, जब नीतीश जी तो आए थे कि भाई उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा बड़े रूप में, नेता के रूप में, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के रूप में घोषित किया जाएगा, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। और जैसी कि उम्मीदें थी कि लालू जी भी सहमति दिए थे कि नीतीश कुमार को देश की राजनीति में जाना है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सब हुआ नहीं। तो इससे लगता है कि नीतीश जी को झटका लगा है, और उनको पाने के लिए तो अब कुछ है नहीं इंडिया अलायंस में। ये तो वादा खिलाफी जैसी बात हो गई लगता है। मुझे नहीं याद है, मैं भी इस पार्टी में एक निर्वाचित विधान परिषद का सदस्य हूं। मुझे नहीं याद है कि कभी भी नीतीश जी ने इच्छा जाहिर की हो कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। वो इतने हल्के राजनेता नहीं है कि इस तरह से एक ढीली बयानबाजी करे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन उनका स्टेचर इतना है, जो आदमी 20 साल से बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जिन्होंने बिहार को संभाला ही नहीं है, संवारा है, सजाया है, तो आम जनता के एक जनमानस में ये बात आ जाती है कि जो इतना अनुभवी आदमी है, एक पिछड़े समाज का नेता है, और 20 साल का सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री का अनुभव, उससे पहले भारत सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उन्होंने काम किया है, तो एक स्वाभाविक रूप में, एक विकल्प के रूप में तो पूरा देश उनको देखता ही है, और बिहार विशेषतः देखता है। और देखता है तो बुरा क्या है? हम क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरे राज्य का और हमारे नेता प्रधानमंत्री बने? तो आपने जैसा कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आपकी नेचुरल अलाई है चुनावी राजनीति के लिए? नहीं, अलाई तो हमारे आरजेडी के साथ भी बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब भविष्य में क्या होने जा रहा है आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं बताया हूं, मैं तो 10 दिन अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में था, और दोनों पार्टी ने हमको बताया था कि आप जाइए अपना लोकसभा तैयारी कीजिए, तो हम उस तैयारी में लगे हुए थे। तो अब लेकिन सवाल है, जब पार्टी की इतनी बड़ी यहाँ पर कार्यक्रम हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से मैं चाहता हूं कि मैं भी देखूं कि क्या सब हो रहा है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है।
आगे जो आप बता रहे हैं। और कुछ देखिए, जैसे मैंने कहा, राजनीति संभावनाओं की खेल है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, मैंने अभी तक अनबन नहीं देखा है आरजेडी के साथ जेडीयू के लोगों का। लेकिन अनबन, जैसे आपने कहा कि एक बार दो बार तो इधर उधर, मैंने भारतीय जनता पार्टी भी के साथ भी सरकार में रहे हैं तो बहुत कंफर्टेबल थे नीतीश जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। इसलिए कुछ भी हो सकता है और कुछ नहीं भी हुआ तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। All right, let's go straight to Prakash, who's joining us. Prakash, what we see right now is a very big update coming in. And what we see that the big question is, will Nitish Kumar replace Lalan Singh as a party president? That's a big question we asked, Prakash. What do we know about this? I mean, is there a big churn that we can expect, or will it be what JDU is projecting itself in the conclave, that just a normal day-to-day or annual affair that they're having? Well, it's not normal, absolutely not normal, with the JDU president being removed, replaced, whatever we may call it, just ahead of the Lok Sabha elections. It is not normal. There is some political realignment taking shape. That's what I can see. Whether, because if at all it had to happen, it could have happened after the Lok Sabha elections, but not just before, 2 months before the Lok Sabha elections. And that is an indication that all is not well within the JDU. Maybe Nitish Kumar would be planning some sort of political rethinking in terms of political aspirations as well, because he had gone to the Mahagathbandhan with an aim to nurture his political ambitions to become the prime ministerial face or the convener of the India alliance, and that did not happen at all. So in a way, after the snub by the India alliance parties, and specifically Mamata Banerjee in particular, I'm joined by Devesh Thakur once again. Devesh ji, what would be undergoing in the meeting now that you have come for the meeting after that exclusive interview in which you hinted political realignment taking shape? I'm sorry, I did not hint anything. And what is going to happen? Please don't put your words into my mouth. What is going to happen inside? First, There's a meeting which is going to happen inside. National Executive and then the National Council. That's right. That's right. That's right. And then the certain decisions should be taken if at all it is being Naturally, that will all depend on the Supreme Leader. So there you have Devesh Thakur again. I'll let you go, Devesh Thakur, and keep tracking you later in the evening what is unfolding in Bihar, because you have already mentioned that the keys of the house are with the top leadership of the BJP and not with those who are outside the house like Giriraj Singh and other BJP leaders. So of course, in politics, anything happens not without any reason. And this is a big reason, because JDU is removing its president and Nitish Kumar is most likely to take charge. We will wait and watch what unfolds. But what we gather from our sources is that I'm joined by Bihar Minister Sunil Kumar. Sunil ji, you've come here for the meeting. What is going to happen here? What are we hearing? Rajiv ji, please come. Good morning. And the National Executive will meet today, the Janata Dal United, and the agenda will be given to us, and the discussion will take place. Let us see what the agenda are. But primarily it's a meeting, routine meeting. Which are hearing that Lalan Singh is being removed as the president. Will it be for the betterment of the party and a new political realignment taking shape in Bihar? Because just ahead of the election, Sunil ji, party president is removed not without any reason. There's a lot of speculation in the media. There's a lot of speculation in the media regarding the post of the president. But the decision will be taken by the executive during the meeting. And what do you think that the party stands united, as the name suggests, the Janata Dal United, the parties stands united. If Nitish Kumar takes over as the president of the party, will it be for the betterment of the party? Come to know. Whoever is the party president, we stand united. I'm joined by Rajiv Ranjan of the JDU. We'll try and get a word from him. We'll try and get in a word from him. Rajiv ji. So here we have Rajiv Ranjan Prasad. Rajiv ji,
ये जो जेडीयू के अध्यक्ष पद से ललन जी हट रहे हैं, तो 2 महीने पहले चुनाव के 2 महीने पहले बिना पार्टी के अनेक नेताओं ने इसका खंडन किया है। अभी तो राष्ट्रीय कार्य समिति और परिषद की बैठक ही नहीं हुई है और इस तरह के कई सवाल आए हैं। इसीलिए कारण के तो ये राष्ट्रीय परिषद की ये भारतीय जनता पार्टी खबरों को प्लांट कराती है, उसके बयान लोगों से प्लांट तो नहीं कराती है। खैर बहरहाल यहाँ पर केसी त्यागी जी भी हैं, सो we'll try and get in a word from Kashi Tyagi as soon as he is free. And there you have, there is something that is brewing in the mind of all the JDU leaders. I am joined by Chandeshwar Chandravanshi. He's a JDU MP from Jahanabad, quite close to Nitish Kumar. इंडी गठबंधन जो है उसको संयोजक को लेकर के काफी दबाव बनाया गया नीतीश कुमार की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल सर, आपकी तरफ से क्या प्रस्ताव भेजा जाएगा इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने सब लोगों को एक साथ जोड़ा है, तो अब कुछ ऐसा? हम नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के निर्माता हैं और बिहार में जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया तेज हुई है, हमें प्रसन्नता है कि आज सारे देश की राजनीति का वो विमर्श बन गया है। तो कार्यकर्ता तो नारेबाजी कर रहे हैं कि अब नीतीश कुमार ही सीएम होने चाहिए, हालांकि इंडिया गठबंधन नीतीश है। उनको देखिए, कोई आदमी क्या बोलता है हम तो नहीं सुने हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी हम लोगों के सर्वमान्य नेता हैं। ललन बाबू इस पार्टी के लिए सर्वमान्य नेता हैं। पार्टी के सभी साथी एक मुश्त से खड़ा है। जो आदरणीय नीतीश कुमार जी निर्णय लेंगे हम लोग उनके साथ। नीतीश जी अगर फिर से जाते हैं अध्यक्ष के रूप में, तो क्या ये पार्टी की बेहतरी के लिए होगा? देखिए, ये हम नहीं बोल सकते हैं, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व इस बात। त्यागी जी, I am joined by Kashi Tyagi, senior leader of the JDU. Sorry, ये बताइए त्यागी जी कि ये पार्टी के बैठक में क्या होने जा रहा है? देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर, देश की आर्थिक नीति पर विस्तार से चर्चा होगी। जनता दल यू का अन्य दलों के साथ किस तरह से तालमेल होगा उस पर चर्चा होगी। पॉलिटिक्स में संभावनाएं तो बनी रहती हैं। 2017 में भी वो खिड़की दरवाजे बंद थे और अचानक से किसी को पता नहीं चला, सारे बीजेपी के एमएलए सीएम हाउस में घुस गए। कुछ इसी तरह की पटकथा तो नहीं लिखी? मुझे याद नहीं है। आप कैसे याद नहीं है? सब याद है। So there you have Kashi Tyagi, senior leader of the JDU, speaking about the political developments and what would unfold here at the Constitutional Club in Delhi in few moments from now. And it is most likely that there is going to be a huge political shake-up as far as the politics in Bihar is concerned. Back to you. Some big breaking update coming here on Republic TV, and this is the big update which we are coming for you. What it says is that there seems to be more update in terms of a huge hint being dropped by the JDU top brass. Nitish, top leader, hints at open line with the BJP. So the big question is what is really happening here? Will there be some kind of a political a shake-up? Will Nitish's man change camps? Well, that is the big question coming out right now, viewers. Remember, amid the intense speculation about the leadership change in the party, the top leaders of Bihar's ruling JDU will attend a crucial meeting of the party. In the run-up to the crucial Lok Sabha polls, the JDU is poised to make significant decisions about its organizational structures. Let's go ahead, viewers, that as we get a huge scoop for the mega super exclusive, let's go ahead, viewers, and play out those reactions. पर कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई हुई है और उसमें अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक आर्थिक मुद्दों पर विमर्श होगा, जिससे पार्टी की आगे की रणनीति तय होगी। नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। नीतीश कुमार, हमको तो आप पहला आदमी है जो सुना रहे हैं। आप तैयार हैं? नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात हो रही है। क्या उसमें अब देखिए, अब उसमें क्या होगा ये अभी हम कैसे बता सकते हैं? उसमें तो जो भी मुद्दा एजेंडा पर आएगा उसी पर न विमर्श होगा। और अभी तो हम लोगों के जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी हैं, तो अभी तो वो हैं। सर्वोपरि है और पार्टी संगठन की जिम्मेदारी
आदरणीय सांसद श्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जी को है, और वो बहुत बखूबी चला रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब आगामी लोकसभा चुनाव है, इस पृष्ठभूमि में हो सकता है हमारे दोनों शीर्ष के नेताओं ने कुछ आचार विचार किया होगा कि कैसे पार्टी की परफॉर्मेंस और बेहतर हो। उस विचार से अगर कोई विचार किया होगा, हम तो शाम में आए हैं, कल हम ये सब जो भी यहाँ चल रहा है, एक सभापति होने के नाते तो उसका हिस्सेदार हो भी नहीं सकते, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इसकी कुछ खास जानकारी नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ एक सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस से कह रहा हूँ। इसलिए कौन इस्तीफा पेशकश किसकी हो रही है, नहीं हो रही, जो हो रहा होगा दोनों के बात विचार से ही हो रहा होगा। आप एक तरीके से इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो हो रहा है। तो नीतीश कुमार अगर कमान संभालते हैं जेडीयू के अध्यक्ष पद की, जैसा कि एक बार और संभाले थे शरद जी को हटाने के बाद, तो क्या ये पार्टी के हित में होगा? पार्टी मजबूत होगी इससे? निश्चित रूप से। मैंने कहा आदरणीय राजीव रंजन सिंह जी भी, आदरणीय ललन सिंह जी भी कहते हैं कि भाई हमारे भी तो नेता नीतीश कुमार ही हैं, और वो पिछले 30 साल 40 साल से उनके साथ रहे हुए हैं। ये अगर कोई सोच रहा है कि दोनों में अनबन है तो ये बिल्कुल ही मतलब बेवकूफी होगा ये समझना। जो भी हो रहा होगा दोनों ने बात विचार करके पार्टी के भविष्य के लिए जो बेहतर है उसी के आधार पर उन्होंने अपनी कोई एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी, ऐसा मैं समझता हूं। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाई होगी। तो आप इशारा कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजी कुछ तो बन रही है दोनों के बीच में। तो ये मान ले हम कि ललन जी अभी राष्ट्रीय जनता दल के करीब देखे जाते हैं, जब से मंत्री पद नहीं मिला था उन्हें तो बीजेपी से खासे नाराज रहते हैं। तो क्या ललन जी हट रहे हैं और नीतीश जी बन रहे हैं तो ये रास्ता, दरवाजा खुल रहा है? जो गिरिराज जी कल हमको इंटरव्यू में पटना में बोले कि दरवाजे बंद हो गए हैं नीतीश जी के लिए, मैंने अभी लाइव में कहा कि दरवाजे बंद होते नहीं है। तो क्या ये नया पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की शुरुआत होगी? क्या फिर जो पुराने गठबंधन दल हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ जेडीयू जा सकती है? देखिए, राजनीति संभावनाओं की खेल है, लेकिन जैसे भी मैंने आपको बताया कि मैं तो शाम में आया हूं, मुझे बिल्कुल किसी इन बातों की जानकारी नहीं है। आज शाम में अगर आप मुझसे पूछे तो शायद मैं कुछ उस पर ज्यादा प्रकाश डाल सकूं। शाम में जरूर फिर हम आपसे बात करेंगे। आप तो नीतीश जी के खासम खास हैं, नीतीश जी कहीं भी जाते हैं आपको लेकर जाते हैं। संभावनाओं का खेल आपने बताया, तो क्या पार्टी जब से इंडिया अलायंस ने, इंडिया गठबंधन ने, जब नीतीश जी तो आए थे कि भाई उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा बड़े रूप में, नेता के रूप में, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के रूप में घोषित किया जाएगा, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। और जैसी कि उम्मीदें थी कि लालू जी भी सहमति दिए थे कि नीतीश कुमार को देश की राजनीति में जाना है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सब हुआ नहीं। तो इससे लगता है कि नीतीश जी को झटका लगा है और उनको पाने के लिए तो अब कुछ है नहीं इंडिया अलायंस में। ये तो वादा खिलाफी जैसी बात हो गई लगता है। मुझे नहीं याद है, मैं भी इस पार्टी में एक निर्वाचित विधान परिषद का सदस्य हूं। मुझे नहीं याद है कि कभी भी नीतीश जी ने इच्छा जाहिर की हो कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। वो इतने हल्के राजनेता नहीं है कि इस तरह से एक ढीली बयानबाजी करे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन उनका स्टेचर इतना है, जो आदमी 20 साल से बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जिन्होंने बिहार को संभाला ही नहीं है, संवारा है, सजाया है, तो आम जनता के एक जनमानस में ये बात आ जाती है कि जो इतना अनुभवी आदमी है, एक पिछड़े समाज का नेता है और 20 साल का सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री का अनुभव, उससे पहले भारत सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उन्होंने काम किया है। तो एक स्वाभाविक रूप में, एक विकल्प के रूप में तो पूरा देश उनको देखता ही है, और बिहार विशेषतः देखता है, और देखता है तो बुरा क्या है। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरे राज्य का और हमारे नेता प्रधानमंत्री बने। तो आपने जैसा कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आपकी नेचुरल अलाई है चुनावी राजनीति के लिए? नहीं, अलाई तो हमारे आरजेडी के साथ भी बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब भविष्य में क्या होने जा रहा है आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं बताया हूं, मैं तो 10 दिन अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में था, और दोनों पार्टी ने हमको बताया था कि आप जाइए अपना लोकसभा तैयारी कीजिए, तो हम उस तैयारी में लगे हुए थे। तो लेकिन सवाल है, जब पार्टी की इतनी बड़ी यहाँ पर कार्यक्रम हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से मैं चाहता हूं कि मैं Let's go to Prakash, who's joining us. Prakash is in Delhi, and Prakash, we know where you are. That's where all the action is, live action coming from where you are, and everybody has only one question in mind. Nitish's man, what will he do next? What exactly will he do next? Everyone is wondering that.
Well, in some time from now, the JDU National Executive as well as the National Council meeting would be held. Nitish Kumar has not yet arrived, so has Lalan Singh. Both would be coming together, and it looks like a possible change of guard here in the run-up to the 2024 Lok Sabha elections. And I've been saying that in politics, any incident that takes place, it doesn't happen without any reason. And the most important reason is that Lalan Singh is being removed or replaced as the president of the party, with Nitish Kumar taking charge to keep his flock together. There's been allegations against Lalan Singh that he was cozying up to Lalu Yadav, much to the dislike of Nitish Kumar. And after the recent snub of Nitish Kumar by the India Alliance parties, Nitish Kumar has started looking for political realignment, I can say, and that is what has been happening here in Bihar, and now the political momentum gaining shift here in the Constitution Club here in Delhi, and in some time from now the National Executive meeting would take place, and there in the meeting the deliberations would take shape, and thereafter it's most likely that Lalan Singh would resign as the president of the party and Nitish Kumar will take charge of the president of the party. We expect that in some time from now the Bihar Chief Minister Nitish Kumar is arriving here, and with Bihar Chief Minister Nitish Kumar arriving here in the Constitution Club. We'll wait and watch as to how things unfold. And there you see Nitish Kumar arriving here arriving here for the meeting. The vehicle is now moving, both Lalan Singh and Nitish Kumar. They have arrived here. They have arrived here and they are going towards the back gate. That's what we see. And in the Constitution Club annexi, अंदर क्या रास्ता है? और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोनों नेता पहुँचते हुए तमाम पदाधिकारी नेता पहले आ चुके हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम आपने देखा होगा। There you see the carcass of Nitish Kumar reaching outside the back gate of the Constitution Club, and thereafter Nitish Kumar embarking out of the vehicle. Embarking out of the vehicle. हो गया खूब खींच रहे हो यार। There we can see Nitish Kumar along with his top political leaders. We had Chief Minister.
All right, so what we see is a lot of activity there outside the Constitution Club. Nitish Kumar also in frame, and we can see a huge media frenzy there because what we are learning is that a source is also coming up with some of the details that Lalan could be removed as the party president. And that is also one of the points coming across. Nitish is arriving for the high-level meeting, which will be taking place. A two-day conclave being held of the JDU here in New Delhi. Getting some more breaking updates coming in right now, where we are learning London will be removed as a chief, and that is what the top sources are telling us at this point of time. And this is coming up with intense speculation about a leadership change in the party. Top leaders of Bihar's ruling JDU will attend a crucial meeting of the party. And let's go back to Prakash, who's joining us right now. Prakash, if you could take our viewers through exactly what is happening, what are the sources telling you? Lalan Singh to resign, Nitish to take charge. Is that really happening? And will Lalan Singh really switch sides? नीतीश जी सर्वमान्य नेता हैं। पार्टी का नेता का जो भी निर्णय होगा सहर्ष स्वीकार करेंगे पार्टी के लोग। आपको लगता है कि नीतीश जी को अध्यक्ष बन जाना चाहिए फिर से? हम तो कह रहे हैं भैया, अध्यक्ष की हम बात नहीं कर रहे हैं। सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार जी पार्टी की। नया कोई पॉलिटिकल गठबंधन भी होगा? कोई पॉलिटिकल गठबंधन नहीं होगी। नीतीश कुमार जी का जो निर्णय होगा सारे पार्टी के लोग एक मत से समर्थन करेंगे। हो गया। अरे बोलना है क्योंकि बोल के आते हैं। Right over there, Prakash is right over there, and what we see right now is JDU mulling a NDA return? Well, that's one of the questions being asked right now. And what we see at this point of time, a big updates coming in at this point of time, where as a speculation keeps us all guessing what will happen next. What will happen next? Will there be some kind of alliance of Lalan Singh with the NDA? That's a big question coming up. What is really happening? Of course, it's source-based information coming in at this point of time. Let's go to Prakash, who's joining us. Prakash, let's come to you right now. And what we see at this point of time is, a big question mark being raised. The meeting will begin very shortly. But what are you learning about right now? What is the top update coming in? Well, although it's an annual meeting of the National Executive as well as the National Council, which hasn't been held for quite some time, and every party within the protocol, they have to organize such meetings. But all of a sudden, a National Council meeting was convened, which goes to state the fact that there is something important that is going to happen. And what we have been gathering from the sources, that if Lalan Singh is ousted as the president of the JDU, that will not come as a surprise, because as Devesh Thakur, the senior JDU leader and the Bihar Legislative Council chairman, has expressed his thoughts on the possibility of anything taking shape in Bihar that is pertaining to political realignment, as he categorically said that they had very cordial relationship with the BJP when the BJP was in alliance with the JDU. And the most important reaction that came from Devesh Thakur, which should run on the channel, that leaders like Giriraj Singh are not even aware of who holds the keys of the house, and they are outside the doors of the house, and the key is with somebody else, hinting at Amit Shah and Narendra Modi like it happened in 2017. So
I don't rule out a possibility of a political realignment taking shape because Bihar is the only bottleneck as far as the Hindi heartland is concerned. And with Nitish Kumar's fragile health, I will not be surprised if the rank and file of the JDU wants a political realignment with the BJP. So, huge political drama unfolding here in the Constitution Club in Delhi and hectic political activities underway, and we'll try and get in some more voices if possible. And the cameras are going inside now for the video of the meeting if possible, and there we see so the videos. ठीक है, बिल्कुल खाली कैमरा है, खाली कैमरा कर रहा है, बिल्कुल खाली कैमरा। क्या हुआ? कैमरा है, जाओ 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 जाओ, सिर्फ विजुअल के लिए। एक मिनट दो कैमरा अंदर जाने दीजिए पहले। बबलू जी, All right, so we're waiting for the press conference to begin right now, live from Constitution Club, and sources say political alignment is on the cards at this point of time. Amid intense speculation about a leadership change in the party, top leaders of Bihar JDU will attend a crucial meeting of the party. And after this, what we are seeing, a couple of points coming up. Number one, Nitish arriving for the high-level JDU meet. Number two, this is the national executive meeting of the JDU, by the way. Many questions being raised about Nitish's man, where we believe, according to our sources, that Lalan Singh could be stepping down as a party president. He's in touch with the NDA. These are just speculations, but this story is very important because this really shows the churn within the party. You know, within the party in Bihar politics, what will happen next? And this will have huge political repercussions ahead, viewers. So top update coming on Republic TV. And as we keep getting you updates, Nitish will be taking charge of, or could be taking charge of the JDU. So will that really happen? That's a source-based information coming in. And what will really happen next? And what kind of impact will this have ahead of the Lok Sabha elections, ahead of 2024 elections? As we keep getting you more updates, let's tell you that Lalan Singh his moves are extremely controversial right now. Nobody knows what he will do next. Even though Nitish Kumar, Lalan Singh is saying everything is well within the party, but according to speculation, according to our sources, there could be a kind of a shake-up that we can expect next. And we are seeing that anything can happen. Number one is that Lalan Singh could step down as a party president, and the big question that we are also raising, that is, does he have some kind of you can say be in touch with the NDA? That is right. So right now Nitish could take charge as a JDU president. That's what we are learning, and this is happening as the national executive meeting scheduled to commence around 11:30 a.m. is expected to delve into the party's strategy for the upcoming Lok Sabha elections. A backdrop of talks about a possible split within the party adds urgency to Nitish Kumar's potential leadership takeover, viewers. A top update coming on Republic TV. And this is coming in as a meeting between Nitish Kumar and Lalan Singh at Kumar's residence, followed by the joint arrival at the party office, serves as a symbolic gesture to project unity within the party. And the two leaders share a long-standing alliance, except for a short, brief break between 2010 and 2013, when Singh parted ways with the JDU. So that update is coming in right now. And the Bihar CM Nitish Kumar dismissed the ongoing speculations, terming the JDU conclave as a routine event. But he remains tight-lipped about rejoining the NDA for. Lalan Singh, on the other hand, reacts to reports of his resignation, affirming the normalcy within the party. Top update coming on Republic TV, where Nitish
open to come back to NDA fold? That is a big question which is being raised right now. And anything can happen. That is what we are coming to know from our top sources. Anything can happen. And JDU mulling NDA return, that's a big question which is being asked at this point of time, viewers. Top update coming to Republic TV. And as we keep getting you more updates, let's tell you that this is a top story which is coming in at this point of time. So that is what we are learning of right now. And this is as amid intense speculations about a leadership change in the party. Top leaders of Bihar's ruling JDU will attend a crucial meeting of the party on Friday. And this is the run-up to the Lok Sabha polls. We're waiting for that press briefing to begin at any point of time, which is poised to make significant decisions about its organizational structure. The speculation is rife that Bihar CM Nitish Kumar might ascend to the party leadership, leading to the likely resignation of the current JDU president, Rajiv Ranjan Singh, widely known as Lalan Singh. However, Singh has denied these rumors. Taking a short break, much more coming up. Stay tuned. हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी, तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। आंध्रा की वर्मा फैमिली को गरम भाजी पसंद है, आगरा की वर्मा फैमिली को धर्म भाजी पसंद है। फैमिलीज जितनी भी सेम लगे, होती अलग है। इसलिए नया वीमैक्स पोस्टपेड जो दे हर फैमिली को उनकी पसंद की चॉइसेस, जैसे इजी डाइनर, डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड मोर। वीमैक्स पोस्टपेड, चूज व्हाट यू वांट टू यूज। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। All right, viewers, Lalan Singh will be removed as the chief after learning to officers telling us information. Lalan Singh to resign, Nitish to take charge. And that is a big update coming here on Republic TV. And we are getting us top updates coming in. Critical decision at the JDU meet, which is coming in right now. And this coming in, viewers, as what we know is that this story is getting bigger, by the way. Critical decision has been taken at the JDU meet, but what that decision is, that is a big question that is coming in right now, where we are learning Lalan Singh will be removed as the chief, Lalan Singh to resign, Nitish to take charge over it. That's what we are learning. Top update coming here to Republic TV. And critical decision has been taken at the JDU meet. That is what we are learning. And this coming in, viewers, as we are still waiting for the press conference to begin at this point of time. What will happen next? Now, of course, they are coming out with a united front. But what really will happen next? What exactly is going to happen politically? Will there be a leadership change in the party? Top leaders of the Bihar ruling JDU will attend a crucial meeting of the party, which is happening right now. In the run-up to the crucial Lok Sabha polls, the JDU is poised to make significant decisions about its organizational structure. Speculation is rife that Bihar Chief Minister Nitish Kumar might ascend to the party leadership, leading to the likely resignation of the current JDU president, Rajiv Ranjan Singh, widely known as Lalan Singh. However,
However, Singh has denied all these rumors, but our sources are telling us something else. Lalan Singh will be removed as the chief. Lalan Singh to resign, Nitish to take charge. That is what we are learning at this point of time. So this exclusive image coming in right now on Republic TV, and political alignment is on the cards. That is what we are learning of. Taking a short break, much more coming up on the other side. से 4 व्हीलर में अपग्रेड तो करना है, पर इसमें से क्या खास बात है? इसमें एक खासियत हो तो बताएं। टाटा इस गोल्ड पेट्रोल CX में है दमदार इंजन जो दे बढ़िया पिकअप, बड़ी और स्ट्रॉन्ग लोड बॉडी और मेंटेनेंस एकदम कम। तो अब सोचो, समझो और टाटा इस गोल्ड पेट्रोल CX लो। जब प्राइवेसी प्रोटेक्शन के बिना हो हैकर्स के पास अथॉरिटी, फिर किस बात की साइबर सिक्योरिटी? क्विक हील, आज के लाइफ की प्रायोरिटी साइबर सिक्योरिटी। इस पल को मुमकिन करने के लिए अबीर ने पहले से ही शुरुआत कर दी थी। ये पल सच हुआ, ये पलकों पे सूरज सा उगा, ये पल मानो रुक सा। और म्यूचुअल फंड से शुरुआत करना समझदारी की निशानी है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। Okay, joining us is Prakash Singh, who's joining us live right now. Prakash, you know, what I want to ask you is that when will that meeting really begin? We are waiting for the press conference to start. What can we really expect in this, Prakash? Because these exclusive images coming in. What do you think is going to happen next? What really is happening? Is it true that Lalan Singh is stepping down on his own, or what is the case really here? Well, as far as Lalan Singh is concerned, all this turn of events have taken place after Mallikarjun Kharge's name was proposed by Mamata Banerjee in the India Alliance meeting, and the recent snub that took place in Delhi, and Nitish Kumar was furious, we are told, and thereafter the meeting of the JDU was convened in Delhi, and in which the National Executive meeting, the annual meeting, was supposed to be held, but not the National Council meeting in which important decisions are taken. And thereafter, we are told that Lalan Singh had tendered his resignation before Nitish Kumar, saying that he would not like to continue as the party president. There are two connotations to it. One, that with Lalan Singh remaining as the president because he was cozying up to Lalu Yadav, no new political realignment can take shape vis-a-vis the BJP, because Lalan Singh and the BJP do not see eye to eye ever since Lalan Singh was not made a cabinet minister by Narendra Modi, and he was ousted, and RCP Singh, the then protege of Nitish Kumar, was handpicked as the minister in Modi's cabinet in 2020. And thereafter Lalan Singh started orchestrating the ouster of RCP Singh from the party, and last year he was removed, and Mahagathbandhan too was forged, and an alliance with Lalu was stitched. So I see this possibility happening, which was emphasized very categorically by Devesh Chandra Thakur, the chairman of the Legislative Council, and the top JDU leader, that politics is a game of possibility.
And as far as the BJP leaders are concerned, they are saying that, specifically Giriraj Singh, whom I interviewed yesterday, he said that the doors of the BJP are shut for Nitish Kumar. Devesh Thakur replied back that Giriraj Singh does not have the key of the BJP. Those who have the keys of the BJP, they are inside the room and have locked the room as well as the latch, and when they have to start a conversation, first they will open the ventilator. That's a big statement, and that's an indication. That's how political leaders talk and give hints about a new political formation. But all these are conjectures and political possibilities. We'll wait and watch what unfolds today here at the Constitutional Club. Right now, a moment back, for the viewers, we showed the live images from the inside the meeting hall where Nitish Kumar was chairing the meeting, and I was also present there. This was exclusive visuals, and for throughout the day, we'll getting all the exclusive details of the JDU meeting that is underway here at the Constitution Club in Delhi for a huge political shake-up and high voltage drama that is unfolding here in the politics of Bihar, and that will certainly have national ramifications in future. Back to you. Right. Prakash, that is the big story, that this will have political ramifications before the Lok Sabha elections 2024. But according to you, Prakash, if you could take us through exactly what might happen next. Now, the second speculation is that Lalan could side with the NDA. Is that something of a possibility? No. Lalan Singh will not side with the NDA. As I told you, that Lalan Singh do not see eye to eye with the BJP. He was not given a cabinet berth by Narendra Modi in 2020, and that is how the animosity started with the BJP, and a Mahagathbandhan was forged. But the recent turn of events have definitely given a political churning in the state of Bihar, and Nitish Kumar may have to rethink about his political decisions, what he has taken. And majority in the party feel that they're not comfortable with the RJD going into the elections and the future of the party, the very existence of the party. Now, with Nitish Kumar's ill health also, he's suffering from certain ailment. The future of the politicians in the JDU is not very stable. They are looking for opportunities. So in order to keep the house together, Nitish Kumar will have to take certain decisions. Otherwise, the JDU as a party will fight for its survival beyond May, June, beyond the Lok Sabha elections. That's what I see. But what will unfold? It's in the future. What will happen? It's in the future. And we are looking at this important meeting very closely, and the decisions taken in this meeting will set the overtone of the political landscape in Bihar for sure. All right, Prakash, getting us top updates coming in right now, and as we keep getting our viewers top updates, let's tell you exactly what is happening. What we see is that political alignment is on the cards. Prakash, thank you so much for joining us here. We have to keep keeping a very close eye on the story, as the big question mark about what is really happening in Bihar politics. And viewers, what is happening next? Still waiting for a formal reply to come in from the JDU. What will happen next? Will Lalan Singh step down as a JDU president? Taking a short break. There's a reason why over 200 new age companies scout for talent from our campuses. It's because we've future-proofed our courses with a higher technological baseline, with a thrust on specialized industry skills and tech innovation skills. The Amrita School of Engineering. Tomorrow's engineering today. आइवरी या क्रीम? कोई भी। बताओ ना। टाइल्स जो भी हो, लगाने के लिए MI के लेटिक्री टाइल एडेसिव।
MY के लिए टिकरी टाइल एडेसिव, फॉर्मूला ऐसा कि टाइल ना टूटेगा ना छूटेगा। फिल्म अनुकूल नीति, सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन शूटिंग की अनुमति और सब्सिडी की सुविधा ने उत्तर प्रदेश को बनाया है देश का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। 80 फिल्मों को सब्सिडी के तौर पर दिए गए हैं 44 करोड़ रुपए। विभिन्न स्थानों पर 450 से अधिक फिल्मों की हुई है शूटिंग। स्थानीय कलाकारों को मिला है अपना हुनर दिखाने का अवसर। माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि सकारात्मक फिल्में समाज को जागरूक बनाने का आधार हैं। इसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस इंटरनेशनल फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। फिल्म स्टूडियो, होटल्स, मॉल्स, थीम पार्क, मिक्सिंग और रिकॉर्डिंग स्टूडियो जैसी सुविधाएं फिल्म उद्योग के माध्यम से आकर्षित करेंगी पूंजी निवेश। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। JDU meet begins in Delhi, viewers. JDU leader has hinted at a big churn in Bihar, saying the doors open with the BJP soon. So major breakthrough is coming in. And as we are telling you that there could be a big churn in the politics of Bihar. What will happen next? What repercussion will it have on the 2024 Lok Sabha elections? Will Lalan Singh step down willingly or has he been asked to leave? And will Lalan Singh go ahead and side with the BJP or the NDA? Well, that is a big question being asked. Nitish has arrived for the high-level JDU meeting, and what we see right now is still a formal word to come in. Now, remember, viewers, that this is a top story which is making the headlines. It's amid intense speculation about a leadership change in the party. Top leaders of the Bihar's ruling JDU will attend a crucial meeting of the party. We're getting some reactions coming in. Let's play them out. तो नीतीश कुमार अगर कमान संभालते हैं जेडीयू के अध्यक्ष पद की, जैसा कि एक बार और संभाले थे शरद जी को हटाने के बाद, तो क्या ये पार्टी के हित में होगा? पार्टी मजबूत होगी इससे? निश्चित रूप से। मैंने कहा, आदरणीय राजीव रंजन सिंह जी भी, आदरणीय ललन सिंह जी भी कहते हैं कि भाई हमारे भी तो नेता नीतीश कुमार ही हैं और वो पिछले 30 साल 40 साल से उनके साथ रहे हुए हैं। ये अगर कोई सोच रहा है कि दोनों में अनबन है तो ये बिल्कुल ही मतलब बेवकूफी होगा ये समझना। जो भी हो रहा होगा, दोनों ने बात विचार करके पार्टी के भविष्य के लिए जो बेहतर है उसी के आधार पर उन्होंने अपनी कोई एक स्ट्रेटजी बनाई होगी, ऐसा मैं समझता हूं। जब से इंडिया गठबंधन ने, जब नीतीश जी तो आए थे कि भाई उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा बड़े रूप में, नेता के रूप में, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के रूप में घोषित किया जाएगा, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। और जैसी कि उम्मीदें थी कि लालू जी भी सहमति दिए थे कि नीतीश कुमार को देश की राजनीति में जाना है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सब हुआ नहीं। तो इससे लगता है कि नीतीश जी को झटका लगा है और उनको पाने के लिए तो अब कुछ है नहीं इंडिया अलायंस में। ये तो वादा खिलाफी जैसी बात हो गई लगता है। मुझे नहीं याद है, मैं भी इस पार्टी में एक निर्वाचित विधान परिषद का सदस्य हूं। मुझे नहीं याद है कि कभी भी नीतीश जी ने इच्छा जाहिर की हो कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। वो इतने हल्के राजनेता नहीं है कि इस तरह से एक ढीली बयानबाजी करे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन उनका स्टेचर इतना है, जो आदमी 20 साल से बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जिन्होंने बिहार को संभाला ही नहीं है, संवारा है, सजाया है, तो आम जनता के एक जनमानस में ये बात आ जाती है कि जो इतना अनुभवी आदमी है, एक पिछड़े समाज का नेता है और 20 साल का सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री का अनुभव, उससे पहले भारत सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उन्होंने काम किया है, तो एक स्वाभाविक रूप में, एक विकल्प के रूप में तो पूरा देश उनको देखता ही है और बिहार विशेषतः देखता है। और देखता है तो बुरा क्या है? हम क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरे राज्य का और हमारे नेता प्रधानमंत्री बने? तो आपने जैसा कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आपकी नेचुरल अलाई है चुनावी राजनीति के लिए?
नहीं, अलाई तो हमारे आरजेडी के साथ भी बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब भविष्य में क्या होने जा रहा है आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बताया हूं, मैं तो 10 दिन अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में था और दोनों पार्टी ने हमको बताया था कि आप जाइए अपना लोकसभा तैयारी कीजिए, तो हम उस तैयारी में लगे हुए थे। तो अब लेकिन सवाल है, जब पार्टी की इतनी बड़ी यहाँ पर कार्यक्रम हो रही है तो स्वाभाविक रूप से मैं चाहता हूं कि मैं भी देखूं कि क्या सब हो रहा है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है आगे जो आप बता रहे हैं। और कुछ देखिए, जैसे मैंने कहा, राजनीति संभावनाओं की खेल है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैंने अभी तक अनबन नहीं देखा है आरजेडी के साथ जेडीयू के लोगों का। लेकिन अनबन जैसे आपने कहा कि एक बार दो बार तो इधर उधर तो मैंने भारतीय जनता पार्टी भी के साथ भी सरकार में रहे हैं तो बहुत कंफर्टेबल थे नीतीश जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। इसलिए कुछ भी हो सकता है और कुछ नहीं भी हुआ तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। पर कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई हुई है और उसमें अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक आर्थिक मुद्दों पर विमर्श होगा, जिससे पार्टी की आगे की रणनीति तय होगी। नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। नीतीश कुमार, हमको तो आप पहला आदमी है जो सुना रहे हैं। आप तैयार हैं? नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात हो रही है, क्या उसमें अब देखिए, अब उसमें क्या होगा ये अभी हम कैसे बता सकते हैं। उसमें तो जो भी मुद्दा एजेंडा पर आएगा उसी पर न विमर्श होगा। और अभी तो हम लोगों के जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी हैं, तो अभी तो वो हैं, दूसरे के बनने का अभी कहाँ सवाल। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में फैसला हो सकता है आपको? क्या राष्ट्रीय बैठक, जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक है उसमें भी तो यही बात होगी ना। अभी तो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन बाबू हैं, तो फिर दूसरे के बनने की कहाँ बात है। तो नीतीश जी को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए अध्यक्ष पद की? हम कह रहे हैं कि अभी ललन बाबू अध्यक्ष है और अच्छे से काम कर रहे हैं। हो गया, दे चुके हैं, अब आपको कोई स्पेशल नहीं है, स्पेशल आप थोड़ी हैं। चलिए आप दिए वहाँ पर नहीं थे, आप नहीं थे तो मत रहिए। चलिए, आपके नैरेटिव पर अरे फिर आप इतना चिल्ला रही हैं तो हमसे सवाल क्या पूछिएगा? पूछ रहा, आप इतना चिल्ला रही हैं। आप पहले ये जनता दल यूनाइटेड की नियमित बैठक है और नियमित बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की होती है और ये नियमित बैठक है। आपका मैनेजमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है। हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं, आपका मैनेजमेंट नियंत्रण में है। नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको सेट करते हैं। हमको इस्तीफा पोस्टर आपका ये अध्यक्ष हैं, आपका पोस्टर इनको हम बोले हैं कि आपका पोस्टर लगा देंगे। गाड़ी इधर Top headlines this afternoon. JDU meet begins in the national capital. JDU leader hints at big churn up in Bihar, says doors with the BJP open. Massive breakthrough after 12 years of negotiation as government strikes big success on Ulfa Peace Deal. Historic Centre Ulfa Peace Deal to be inked today. Very good afternoon. It is 12 p.m. We are live and breaking. We are counting down to the Grand Ram Mandir inauguration that will take place in just less than a month from now. In fact, the temple town is being decked up with flowers, lights and sculptures to give it a divine look as well. Now note that the Prime Minister will be in Ayodhya tomorrow and will be unveiling a plethora of projects, which includes the Grand Railway Station along with an airport that will also be inaugurated
by the Prime Minister. So, of course, all eyes will be on that grand visit of by the Prime Minister, and on the anvil are a lot of projects amounting to more than 11,000 crore rupees. In fact, details coming in on these projects that would be inaugurated by the Prime Minister. This is a redeveloped railway station that will be inaugurated by the Prime Minister, as well as that airport, along with other projects valued at above 11,000 crore rupees. All right, not sure if Priyanka is with us, but just to tell our viewers, in just less than 24 hours, a massive roadshow is going to be held by the Prime Minister. He will be inaugurating several projects in the holy city, and this in the run-up to the Grand Ram Mandir inauguration that would take place in less than a month on the 22nd of January. So, Prime Minister is going to be in the holy city tomorrow, will be inaugurating a lot of projects, and among those projects include the Grand Railway Station, which will be a redeveloped version of the old railway station, as well as an airport. Also, to talk a little more about the Jan 22nd consecration ceremony that would be held, special rituals are also being performed in Ayodhya in the run-up to the Grand Ram Mandir inauguration next month. It is less than 24 hours to go for the Prime Minister to arrive in Ayodhya, where he will be inaugurating thousands of crores worth of project and dedicating them to the nation. But this, of course, also requires a lot of security arrangement, and you can see how right behind me there have been several police officers that have been deployed, and in fact this is across the city of Ayodhya that this kind of a bandobast is in place, especially keeping in mind that the Yogi Adityanath, the Chief Minister for Uttar Pradesh, is going to be arriving here, taking a stock of the entire situation, carrying out review meetings as well, right before the Prime Minister's arrival in Ayodhya as well. In fact, police officers from across the state have been deployed in the city of Ayodhya. We also see RPF as well that has been deployed along the route in this particular national highway on the entrance of Ayodhya as well. And that essentially helps us understand the kind of security that is in place, because it is not just one rally. There is going to be a huge road show that the Prime Minister is going to be also carrying out. Keeping that in mind, the security is in place. In fact, this is the entire Dharm Path that we also get to see, where in fact the police has been deployed. The police has been kept and making sure that each and every vehicle that is passing by from that particular place and that particular point is also being checked. And that's how the security is in place, just less than 24 hours for the Prime Minister to arrive in Ayodhya. With video journalist Vipin Mori, I'm Priyanka Sharma for Republic. Now note that special rituals will be performed from the January 14th till the 22nd. In fact, the festivities will include the Amrit Mahotsav and a 1008 Hundi Maha Yagya as well, that would culminate in consecration ceremony that would take place on the 22nd. Not just that, a procession that would feature 100 idols of Lord Ram would also be placed, and that would take place on the 17th, beg your pardon. That would add to the spiritual fervor. A special report from Ayodhya on the celebrations and the massive preparations that have been taking place in the run-up to the grand unveiling on the 22nd. मेरी झोपड़ी के भागा जाग जाएंगे, राम आएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। Elaborate arrangements have been made for Amrit Mahotsav. तो आपको बता दें कि इंतजार 22 तारीख का है, जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन आपको बताएं उससे पहले किस तरीके की तैयारियां अयोध्या नगरी में देखने को मिल रही हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त एक ऐसी जगह पर है जहां पर 14 तारीख से उत्सव की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि अमृत उत्सव यहां मनाया जाएगा, जो कि राम भद्राचार्य जी के द्वारा यहां आपको बता दें कि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में अनुष्ठान किए जाएंगे, और इसी के साथ में
में कई ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। The ritual will be conducted by Jagat Guru Rambhadracharya. क्या तैयारी है यहाँ पर, किस तरीके से कितनी यज्ञशालाएं बनाई गई हैं, कैसे कैसे ये अनुष्ठान होगा? ये तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अष्टोत्तर सहस्र यानी 1008 कुंडीय श्री हनुमान महायज्ञ होगा और 14 जनवरी को महाराज श्री जगत गुरु जी का जन्म दिवस है। उस दिन से यह कार्यक्रम शुरू होगा 14 जनवरी से 22 जनवरी पर्यंत। और इस यज्ञ के आचार्य हमारे गुरुदेव राजस्थान से डॉक्टर बालकृष्ण जी कौशिक होंगे। और यज्ञशाला की अभी तैयारियां चल रही है, कुंड निर्माण हो चुके हैं, लेकिन जो शेष तैयारी है वो पूर्ण हो रही है, अभी जारी है। और ये अनुष्ठान जो है इसमें 1008 जोड़े भी बैठेंगे? बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि 14 तारीख से शुरू होकर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही इसका समापन है। 22 जनवरी को ही इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। आपको ये तस्वीर देखने को मिल जाएगी कि अभी जो यज्ञशालाएं हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। इसी यज्ञशाला में हवन होते हुए यहाँ पर नजर आएगा और जिसमें 1008 जोड़े यहाँ पर बैठेंगे और 1008 ही जो यज्ञशालाएं हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। तो आप देखिए कि प्रभु राम के आगमन को लेकर, मंदिर निर्माण को लेकर किस तरीके का उत्सव आपको अयोध्या नगरी में देखने को मिलेगा। जगह जगह इसी तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर होंगे और रामभद्राचार्य जी का जन्म दिवस है 14 तारीख को और उसी शुभ दिन से शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी अमृत उत्सव की, जो कि मनाया जाएगा, जिसमें बड़े गणमान्य लोग भी यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं जो पहुंचेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए जो 14 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक एक बड़ा उत्सव आपको अयोध्या नगरी में देखने को मिलेगा। साथ में आपको ये भी बता दें कि लगभग 1008 हवन कुंड बनाए गए हैं जिसमें सीधे तौर पर अनुष्ठान को संपूर्ण किया जाएगा। वो कुंड भी हम आपको दिखाएंगे, लेकर चलेंगे और यहाँ पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो भी होने वाले हैं। पीछे भी एक बार संतोष आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मंच अभी तैयार हो रहा है, सजाया जा रहा है और अभी तैयारी यहाँ लगातार जारी है। From special rituals to cultural programs such as Ram Katha will be conducted in the build-up to the Pran Pratishtha. Bureau Report, Republic TV. श्री राम की बदौलत और जान जिस्म में, बोलिए अयोध्या रामलला सरकार की जय। Ayodhya is decked up to welcome Prime Minister Modi, who's coming to the holy city on Saturday. The Prime Minister will inaugurate the Valmiki International Airport and the redeveloped railway station. Prime Minister Modi is slated to hold a roadshow from the airport to the railway station. प्रधानमंत्री 30 तारीख को जब एयरपोर्ट की सौगात देने के लिए आ रहे हैं, उस दौरान प्रधानमंत्री एक लंबा रोड शो भी करेंगे जिसकी शुरुआत इसी साकेत चौक से होने वाली है। इस साकेत चौक से प्रधानमंत्री के रोड शो की शुरुआत होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहां पर उस अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की सौगात भी उन लोगों को देंगे जो देश के कोने कोने से अयोध्या आने की तैयारी कर रहे हैं। यूं तो पूरी अयोध्या नगरी को भव्य तरीके से सजाया गया है, खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, लेकिन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट की तस्वीर देखते ही बन रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट की तस्वीर तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन मेरे पीछे आप देखिए, मैं मौजूद हूँ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर, जिसको दुल्हन की तरह सजाया गया है। चारों तरफ रोशनी से नहाया हुआ है रेलवे स्टेशन। केवल रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि यह हाईटेक रेलवे स्टेशन है। बड़े बड़े एयरपोर्ट से भी बेहतर सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन पर हैं। लाउंज है, कैफे है, तमाम सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन पर हैं। और आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक चारों तरफ से इस रेलवे स्टेशन को खूबसूरती से लाइट से सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइटों से इस अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को सजाया गया है। तैयार होने के बाद अब इसकी सजावट का काम किया जा रहा है, क्योंकि 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका लोकार्पण करना है। उसको देखते हुए इसको भव्य तरीके से, खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। The authorities have stepped up security in the district. हम लोगों ने अयोध्या के सभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे वो लगभग कंप्लीट हैं और उनको अंतिम टचअप का कार्य किया जा रहा है, ब्यूटिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि अयोध्या को आने वाली सभी सड़कों को 4 लेन ऑलरेडी किया जा चुका है। रेलवे लाइन की डबलिंग का कार्य अंतिम चरण में है। रेलवे स्टेशन का टर्मिनल बिल्डिंग बन चुका है। एयरपोर्ट की तैयारी हो चुकी है। तो अयोध्या आने की व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है और हम लोग इसको सजा रहे हैं।
Prime Minister Modi's visit to Ayodhya comes weeks ahead of the grand inauguration of the Ram Mandir on January 22nd. Bureau Report, Republic TV. Alright, a quick look at news in brief as the country awaits the grand inauguration of the Ram Mandir on the 22nd. The highway walls near Ayodhya airport are being painted and women workers are working on polishing the stones to be used in the Ram Mandir. Prime Minister Modi is scheduled to conduct a roadshow in Ayodhya tomorrow. Prime Minister Modi will also be inaugurating the Ayodhya airport as well as railway station that's been redeveloped. Later, a 15-kilometer roadshow is also slated to take place. With just a few days to go for the Republic Day celebrations, parade rehearsals are underway at the India Gate. French President Emmanuel Macron would be the chief guest on the grand occasion. Delhi police conducted a security drill in East Delhi in preparation for New Year and Republic Day. The mock exercise drill involved various teams including the Delhi Fire Service, Traffic Police, Bomb Squad as well as Dog Squad and SWAT commandos as well. DMDK Chief Vijay Kant's mortal remains will be brought to Island Ground in Anna Salai for public homage. The mortal remains would later be taken to the office to perform his last rites. In Thiruvananthapuram, protesters raised black flags against Kerala Governor Arif Mohammed Khan near a government hospital in the city. The police, meanwhile, detained the protesters behind the incident. Meanwhile, the count of COVID-19 cases has been steadily rising in last few weeks, with 9 states and union territories confirming the existence of JN.1 virus subvariant. Kerala, meanwhile, reported 78 cases of new variant, positioning the state with the highest count of active cases of the new variant. Alright, moving on to the news break which is coming in. This one in relation to the meet which has happened between Chandrababu Naidu and Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar. In fact, we'll pull out those exclusive visuals also that we've accessed of the meet between TDP Chief and Karnataka Deputy Chief Minister. Now note that this meet comes just ahead of the Andhra polls that are slated to take place next year. TDP, note, did not contest the Telangana polls, which also helped Congress win the polls. So, this is the latest that's coming in. A meet which has happened between Karnataka Deputy Chief Minister and TDP Chief Chandrababu Naidu. Alright, let's cut across to our Republic Kannada newsroom. In Bengaluru, Piru, I understand, is joining us with more details. Please share with us what do we really know about this meet which has happened between Chandrababu Naidu and D.K. Shivakumar. Yes, it was a brief meet today held from that happened in Devnalli Airport. Chandrababu Naidu and the troubleshooter, what we call here for D.K. Shivakumar for Congress, the same person met Chandrababu Naidu. And the start about this meet is that passing all the security, keeping all his security aside, Chandrababu Naidu and D.K. Shivakumar met in person for a brief 1 minute or 2 minutes. And we have to understand that D.K. Shivakumar has made a lot of changes, has created an impact in Telangana elections. And Andhra is going to contest, Andhra is going for elections next year. And due to this, there might have been at least an initiation of the talk might have started in Devnalli Airport in Bangalore. Tossing back to studio. Anchor group
Right. All right, so that was Chiru, beg your pardon, from Republic Kannada newsroom, giving us important details on this meet which has happened between Chandrababu Naidu, the TDP chief, and DK Shivakumar. Now, important to note here that this comes just ahead of the polls that would be taking place in Andhra Pradesh, and that's a key meet that's happening between Chandrababu Naidu and the Karnataka Deputy Chief Minister. We are heading into a short break. Coming up on the other side, the latest on the Center-Ulfa peace talks. Historic deal set to be inked today. CSMT-Amritsar, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी, तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। टाइल ग्राउट मतलब SP100, जो जॉइंट को दे अल्टीमेट प्रोटेक्शन। MY के लेटिक्रीट SP100, जोड़ हो तो ऐसा। कोल का स्टाइलिश पंखा सिर्फ हवा ही नहीं देता, आपके आलीशान घर के कोने कोने में ठंडी हवा के झोंके पहुंचाता है। कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर को सुंदर बनाएं। 5 स्टार BLDC कूल फैन से बिजली भी बचाएं। समय आ गया है घर के पंखे बदलने का और कूल फैंस घर लाने का। Narasimha Rao, when he was Prime Minister, kept referring to the disputed structure as a mosque. So was that also an attempt to instigate? See, it was always referred to as the disputed structure. It was never referred to as mosque. Till Narasimha Rao said there is a mosque. And then this whole clash of temple versus mosque was built. Muslims versus Hindu was built. Secularism versus nationalism was built. Mulayam Singh Yadav, in order to pander to the Muslim vote bank, started saying if more people were required to be killed, then the security forces could have done it. You see, Mulayam Singh Yadav became the face of Islamic politics in 1990. He very clearly said that I will not allow Karseva to go on. Still, the Karsevaks performed the Karseva and many were killed. People say it is the BJP which did it. It is actually the collective conscience of the Karsevaks who believed in drama. They did it. They had nothing against anybody. Now, red alert has been issued for dense fog in Delhi, Punjab, Haryana and Chandigarh. A thick layer of fog has even engulfed the national capital, leading to reduction in visibility. Akhil gets us this bird's eye view of the thick fog that's engulfed the Delhi-NCR region.
Right now, I'm just standing at the center of Yamuna Bridge, and here you see the visual of dense fog behind me and towards my right and towards my left. There you see a dense fog has engulfed this Yamuna Bridge at the DND flyover. And if you see, a red alert has been issued for dense fog in Delhi, Punjab, Haryana and Chandigarh. So a thick blanket of fog in the national capital has led to over 100 of flights being delayed, due to which, and dense fog in the Delhi and the neighboring region, that is the Delhi-NCR region. If you talk about Gurgaon, if you talk about Noida, if you talk about Greater Noida, if you talk about Faridabad, so in the entire region, the dense fog, the thick layer of dense fog has covered everything right now. And what we know so far, that Delhi is expected to see this dense fog on Friday, that is today and tomorrow itself, and with the minimum temperature to hover around 7 to 8 degrees Celsius. This is what we have been told by the IMD. And what we know so far, that schools in Noida and Greater Noida will remain shut due to the dense fog. And there have been reports that several flights have been delayed due to the dense fog. Not only the flights, the air traffic has been affected. Apart from air traffic, if you talk about the vehicular traffic, I would like to request my vijay to show you this side visual. Here you see the visibility is pretty less, and due to which the cars moving on this road is not moving very fast. And right now, apart from this, if you talk about the train movement, so train movements is also got delayed, and several trains have been cancelled. Apart from that, what we know so far, that some trains are running very late for almost 6 to 8 hours. With video journalist Rawat Akil for Republic TV. Here's a look at news in brief from across the country as the country awaits a grand Ram Mandir inauguration. Highway walls near Ayodhya Airport are being painted, and women workers are seen engaged in polishing the stones to be used in the Ram Mandir. Prime Minister Modi, meanwhile, is scheduled to conduct a roadshow in Ayodhya on 30th of December. Prime Minister Modi will be inaugurating Ayodhya Airport tomorrow and later proceed for a 15-kilometer extensive roadshow. With just a few days to go for the Republic Day celebrations, parade rehearsals have been underway at the India Gate. French President Emmanuel Macron has been invited to be the chief guest. Meanwhile, the Delhi police conducted a security drill in East Delhi in preparation for New Year and Republic Day. The mock drill exercise involved various teams, including the Delhi Fire Department, traffic police, as well as dog squad and SWAT commandos as well. DMDK Chief Vijay Kant's mortal remains have been brought to Island Ground in Anna Salai for public homage. The mortal remains would later be taken to the office to perform his last rites. Meanwhile, protesters raised black flag against Kerala Governor Arif Mohammed Khan near Thiruvananthapuram General Hospital last evening. The police even detained protesters during the protest. Meanwhile, the count of COVID-19 cases have been steadily rising in recent weeks, with 9 states and union territories confirming the existence of JN.1 virus subvariant. Heading into a very short break, coming up on the other side, the latest into embassy incident probe. As it reveals, the investigation reveals both suspects took an auto from the Jammu University. There's a reason why over 200 new age companies scout for talent from our campuses. It's because we've future-proofed our courses with a higher technological baseline, with a thrust on specialized industry skills and tech innovation skills. The Amritsar School of Engineering. Tomorrow's engineering today. Gujarat is going places. The vibrant Gujarat Global Summit paved the way of its economic growth. Today, it enjoys the lion's share in India's total exports. It is well supported by an extensive transportation network of roads,
railway lines, airports, boats, and warehouses, Gujarat goes beyond. It has formulated the first of its kind integrated logistics and logistics parks policy, always going the distance towards boosting exports and trade. For over 20 years, Gujarat has played a pivotal role in India's development and now heralded as the growth engine of Vikasit Bharat at 2047. Vibrant Gujarat Global Summit 2024, Gateway to the Future. 3 से 4 व्हीलर में अपग्रेड तो करना है, पर इसमें से क्या खास बात है? इसमें एक खासियत हो तो बताएं। टाटा इस गोल्ड पेट्रोल CX में है दमदार इंजन जो दे बढ़िया पिकअप, बड़ी और स्ट्रॉन्ग लोड बॉडी और मेंटेनेंस एकदम कम। तो अब सोचो, समझो और टाटा इस गोल्ड पेट्रोल CX लो। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। Top headlines at 12:30. JDU meet begins in the national capital. JDU leader hints at big churn up in Bihar, says doors open with BJP. Massive breakthrough after 12 years of negotiation as government strikes big success on Ulfa peace deal. Historic Centre Ulfa deal set to be inked. Probe reveals both suspects took auto from the Jamia University. CCTV footage now being scanned. Tracks widen in India alliance over PM face. Now Sadharan pitches for Rahul Gandhi as Prime Minister face, even as AAP and TMC differ. State set for the Grand Ram Mandir unveiling. Prime Minister Modi to visit Ayodhya tomorrow to launch projects worth more than 11,000 crore rupees. Amid buzz over major bureaucratic reshuffle, Prime Minister Modi to preside over Chief Secretaries meet in the national capital. Alright, let's cut across to the big news break that's coming in. Lalan Singh has resigned as the JDU chief, something which is on the expected lines. So big lead in Bihar politics. Lalan Singh finally tendering his resignation as the JDU chief, thereby confirming Republic Newsbreak as well. Remains to be seen when exactly Nitish Kumar takes over the reins as the JDU chief, but this is a big confirmation coming in. Lalan Singh having resigned as the JDU chief, making way for the Bihar chief minister to be the next JDU chief. So it's a Republic Newsbreak that's now getting confirmed with Lalan Singh resigning from his current post. And with this, remains to be seen when exactly Nitish Kumar takes over the reins as a JDU chief. But this is a Republic Newsbreak confirmation. Lalan Singh finally tendering his resignation as a JDU chief. We have our senior editor Prakash, who's getting us this newsbreak. Prakash, this is a confirmation, something that was told by Republic earlier. Tell us more about this resignation.
और संभवतः जैसा कि रिपब्लिक टीवी पर हम लोग लगातार खबर दिखा रहे थे कि ललन सिंह का इस्तीफा होगा और नीतीश कुमार जो हैं वो अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, तो रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत के खबर पर मुहर लग गई है एक तरीके से, जो हम लोग 3 दिन से लगातार दिखा रहे थे। और आज देवेश ठाकुर ने भी यह कह दिया कि नया पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो सकता है और बिहार में राजनीतिक भूचाल आएगा और एक तरीके से विधायकों पर भी कड़ी नजर रहेगी। अब सभी पार्टियों की, जेडीयू की तो नजर रहेगी। जेडीयू की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब अपने विधायकों को एकजुट रखना होगा, देखना होगा कि ललन सिंह क्या करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी और माले मिलकर जो बहुमत का आंकड़ा है उसके काफी करीब है और बीजेपी भी लगातार नजर बनाई हुई है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार की आगे की रणनीति क्या होती है, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा। जैसा कि हम लोग लगातार बता रहे हैं, नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और उसके बाद जैसा कि आज सुबह में देवेश ठाकुर बता रहे थे कि नया पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो सकता है। पॉलिटिक्स संभावनाओं का खेल है। और दर्शकों के लिए फिर से हम बता दें कि अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, जिसमें कि प्रस्ताव ललन सिंह ने खुद पेश किया अपने इस्तीफे की, और जिसके बाद हम अंदर चल बढ़ने की कोशिश करते हैं जहां पर बैठक चल रही है और इस्तीफे की पेशकश की, जिसे स्वीकार कर लिया गया और वहां पर सभी ने ये प्रस्ताव दिया और धन्यवाद दिया उनके कार्यकाल के लिए। अब देखना है कि अब राष्ट्रीय परिषद में नीतीश कुमार को, इसके बाद जो बैठक होगी उसके बाद राष्ट्रीय परिषद में नीतीश कुमार को नया अध्यक्ष चुना जाता है या नहीं, लेकिन संभावना यही है कि नीतीश कुमार ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और बिहार की राजनीति में एक तरीके से देखा जाए तो नया भूचाल आया है। ललन सिंह पर तमाम तरह के आरोप लग रहे थे कि लालू यादव से करीबी होने का, जिसको लेकर नीतीश कुमार खासे नाराज भी थे, अनबन की बातें आ रही थी। और जब से ये इंडिया अलायंस की बैठक हुई और जिसके बाद नीतीश कुमार को दरकिनार किया गया, नीतीश कुमार खासे नाराज थे उसको लेकर, और तब से ये बातें चलने लगी कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई जाएगी, जो कि पहले नहीं बुलाई गई थी। और इसी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा, जिसमें नीतीश कुमार संभावित रूप से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अब असली राजनीति का खेल बिहार में शुरू होगा, शाह और मात की, क्योंकि इस पूरी घटनाक्रम पर लालू यादव भी नजर बनाए हुए हैं। लालू यादव की पैनी नजर होगी, क्योंकि क्या अगर नीतीश कुमार फिर से पाला बदलते हैं या नहीं। और देखना यह है कि सबसे बड़ी बात कि क्या विधायक भी एकजुट रह पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जेडीयू 2 धड़ा में बच चुका है। एक जो चाहता है, जिसकी संख्या कम है, वो आरजेडी के साथ रहे। बहुमत के जो विधायक है वो चाहते हैं बीजेपी के साथ रहें। जेडीयू के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ जाने के लिए। लेकिन अब देखना है नीतीश कुमार की आगे की राजनीतिक चाल क्या होती है। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं कि नीतीश कुमार का अध्यक्ष बनना ये अनायास ही नहीं है, और ललन सिंह का अध्यक्ष पद से हटाया जाना भी ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि 2 महीने लोकसभा चुनाव के हैं और 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने नीतीश कुमार अध्यक्ष बन जाते हैं। इसका मतलब ललन सिंह की बीजेपी से तलखी थी और अब नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनते ही हो सकता है कि नए राजनीतिक समीकरण शुरू हो जाए बिहार में। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ललन सिंह ने इस्तीफा सौंप दिया है अपना, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्यों ने उनके कार्यकाल की तारीफ की, प्रशंसा की कि पार्टी को आगे बढ़ाया, और संभवतः राष्ट्रीय परिषद में अब नए अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी और नीतीश कुमार को कार्यभार सौंप दिया जाएगा। बैक टू यू। Right. Prakash, requesting you to keep talking to us. In fact, give us a broader sense that how is this Bihar politics going to shape national politics, one, and when exactly can we really expect Nitish Kumar to formally take over the reins as a JDU chief? See, for the comfort of the Hindi and English viewers both, जहां तक कि ये राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात है, राष्ट्रीय राजनीति की बात है, उसमें ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है आज ये, क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा था पहले कि हिंदी पट्टी राज्यों में जैसे कि बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से विजय हासिल की, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, बिहार एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है उनके नजरिए से। और जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स है, जिस तरीके से
नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना किया, कास्ट सेंसस किया, फिर उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किए। भले ही उसकी कोई महत्व न रह जाए, लेकिन पिछड़ी जातियों में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और दोनों जो हैं पुराने अलायंस पार्टनर्स रहे हैं, बीजेपी और जेडीयू। अब भी इस पर नजर रखनी होगी कि क्या कोई पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होगा या नहीं। सबसे बड़ी बात, या नीतीश कुमार चाहेंगे कि लालू यादव के साथ ही रहकर चुनाव लड़े और उसके बाद आगे की रणनीति तय हो। लेकिन जहां तक मैं देखता हूं कि ललन सिंह का अध्यक्ष पद से हटना ये कोई छोटी घटना नहीं है, वो भी लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले, क्योंकि ललन सिंह के बारे में ये कहा जा रहा था कि लालू यादव से काफी करीबी हैं। दूसरी बात कि नीतीश कुमार के बनते ही पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट के दरवाजे खुल जाएंगे, जैसा कि पहले वहां पर जब अरुण जेटली हुआ करते थे तो उनसे उनके तार जुड़े हुए थे, काफी करीबी संबंध था नीतीश कुमार का। और अरुण जेटली ने ही पिछले बार 2017 में बीजेपी और जेडीयू को एक साथ लाए थे। अब वो भूमिका कौन निभाता ये देखना होगा। सबसे बड़ी बात कि हरिवंश नारायण सिंह, जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं और जेडीयू के सांसद भी हैं, उनके जरिए बैक चैनल नेगोशिएशन हो सकता है। संजय झा हैं, जिनके काफी करीबी संबंध रहे हैं और नीतीश कुमार के काफी करीबी मंत्री भी हैं, और वो एक सूत्र बन सकते हैं। और जेडीयू का एक मजबूत धड़ा चाहता है कि बीजेपी से नेगोशिएशंस हो। अब इसकी राष्ट्रीय राजनीति पर जरूर कुछ ना कुछ असर पड़ेगी, खास। और सबसे बड़ी बात कि लालू यादव भी चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से काफी कम विधायकों की जरूरत है। तो इस पूरी घटनाक्रम पर तेजस्वी यादव और लालू यादव नजर बनाए हुए होंगे, क्योंकि ललन सिंह का जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटना लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए भी एक तरीके से झटका है। तो अब देखना है कि बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, ललन सिंह ये सब क्या करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्या नीतीश कुमार अपने पूरे विधायकों को, कुंभों को एकजुट रखना चाहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में ये देखा गया है कि नीतीश कुमार की तबीयत भी ठीक नहीं है। उसको लेकर विधायकों में, जेडीयू के विधायकों में ऊहापोह की स्थिति है। अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर अनसर्टेन है, अनिश्चित है, सब अपनी अपनी जगह तलाश रहे हैं, और उस हिसाब से ये देखने वाली बात होगी। बैक टू यू। Right, Prakash, stay with us. In fact, let's go across to Harsha as well. She's joining us from the national capital. Harsha, we've seen over the last 24 hours, these are marathon meetings that have been taking place both in Bihar and in Delhi as well. But tell us any first reactions you're picking up from the JDU leaders as to what really transpired, rather the events that really led to this massive shake-up in Bihar politics, so as to say. So Samiksha, right now most of the ministers, MLA, MP, all are inside the meeting of the national executive only, but the Karyakartas are here outside, and most of the Karyakartas have been continuously stating that Lalan Singh was our national president, but they also stated that if Nitish Kumar takes over the charge as national president, then also JDU leaders will be very happy, because it is a time for 2024 election when the entire JDU has to go on ground. Also, we already know that there was a rift going on between Lalan Singh and Nitish Kumar, and earlier also yesterday when we were speaking to some of the office bearers of JDU, they claimed that this is not in the capacity of office bearers to tell something or to comment something on the resignation of Lalan Singh, but national executive, in the meeting of national executive, it will be decided. But let me show you the visuals, because a lot of movement could be seen here outside outside the place where outside the meeting room, where a lot of JDU Karyakartas could be seen, because for all of them, most of the JDU leaders already knew that this decision is going to be taken up in the national executive meeting, because it was already decided that Nitish Kumar is going to take charge as the national president, but this breaking has not come out as of yet. Right now, the information which we are learning is that Lalan Singh has resigned from his position as national president. We'll try to take up some work from the JDU leaders only, because there are so many who have gathered here at Constitution Club where this meeting is going on. Sir, एक सवाल आप लोगों से लेना चाहूंगी। ललन सिंह ने रेजिग्नेशन दे दिया है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से, तो आप जेडीयू के नेता इस तमाम चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? भाई, आपको बार बार बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार ही जदयू ये नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार सब कुछ है, और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द पूरा देश की राजनीति घूम रही है। तो नीतीश कुमार आएंगे तभी तो यहाँ के देश के प्रधानमंत्री हटेंगे। यानी कि जेडीयू के लीडर्स बहुत पहले से ही चाहते थे कि नीतीश कुमार वो जो कमान उन्होंने 2020 में छोड़ दी थी, उसको दोबारा से ग्रहण कर ले। बिल्कुल, नीतीश कुमार
को बहुत पहले ग्रहण कर लेना चाहिए था। अगर देश के प्रधानमंत्री को हटाना है तो नीतीश कुमार को आगे और आना होगा, और हम तमाम जदयू के वर्कर चाहते हैं कि नीतीश कुमार आगे आकर के देश की अगुवाई करें। तो ये यानी कि अंदर खाने ये सुगबुगाहट पहले ही हो गई थी कि ललन सिंह को हटाने का समय आ गया और नीतीश कुमार को कमान संभालने का समय आ गया। ललन सिंह को हटाया नहीं है, खुद हट रहे हैं ना। हटाए क्यों? हमारे यहाँ हटाया नहीं जाता है, अपने स्वेच्छा से ही किया जाता है। हटाया क्यों जाएगा? ललन सिंह ने स्वेच्छा जाहिर की है कि हम को पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है, हमारे साथ ये मजबूरी है तो हम चलें पार्लियामेंट। पार्टी और मजबूत तब होगी जब नीतीश कुमार कमान संभालेंगे, ये आप लोग का मानना है? बिल्कुल, नीतीश कुमार पहले भी कमान संभाले थे। मैं तो बोला कि नीतीश कुमार ये जदयू, जदयू ये नीतीश कुमार, बस इसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। आप लोग खुश हैं इस्तीफे से ललन सिंह के? हाँ बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है, क्योंकि मेन हमारे जो नीतीश कुमार हैं उनके नेतृत्व में और ज़्यादा विकास होगा और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, और ये ललन सिंह भी चाहेंगे। लेकिन ललन सिंह भी जेडीयू के नेता हैं, ऐसा क्या काम उनके नेशनल प्रेसिडेंट रहते हुए नहीं हो पा रहा था तो नीतीश कुमार के ये पदभार ग्रहण करने से होगा? आपको लगता है कोई दिक्कत थी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे रहते हुए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो एक चेंजेस का दौर आता है, मतलब कि कुछ डेवलपमेंट विकास के लिए थोड़ा चेंजेस की बहुत ये ज़रूरत है, इसीलिए दिक्कत ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन more news break coming in. This one again a confirmation to Republic news break. Nitish having taken over as a JDU chief, something that was broken by Republic earlier, that this was very much in the offing. Nitish Kumar is going to be leading the JDU now, with Lalan Singh formally tendering his resignation from the post. In fact, more details coming in that the former JDU president Lalan Singh proposed Nitish Kumar's name at this national executive meet that was held to replace him at the helm. So something that was spoken about earlier, Nitish Kumar, who is going to be leading the JDU now, he is the new JDU chief. In fact, his name was proposed by none other than former JDU chief Lalan Singh at the national executive meeting. Let's cut across to Prakash once again. Prakash, that's again a Republic Newsbreak confirmation. Nitish Kumar, who has now formally taken over the reins as the JDU chief. Manish. All right, not sure if Prakash is with us, but this is yet another confirmation coming in that Nitish Kumar would replace Lalan Singh. Let's cut across to Prakash again. Prakash, really, once again, take us to the context of this. What really led to a day such as this? And was this very much in the offing until a month ago that this is going to happen, given that Nitish Kumar has had a national ambition for a long time now? Well, a proposal has been moved that Nitish Kumar should be made the president, and thereafter Nitish Kumar has been appointed as the president of the JDU. And this proposal was moved by the Lalan Singh, the outgoing president. And here we can see that the supporters are gathered here, exuberant after Nitish Kumar has been made the president of the JDU. ये बताइए कि नीतीश जी फिर से JDU के अध्यक्ष बन गए हैं, पार्टी की राह अब क्या होगी? बाकी की राह बहुत अच्छा होगी। नीतीश जी सर्वमान्य नेता है जनता दल यूनाइटेड के, और नीतीश जी के नेतृत्व में देश में परिवर्तन होगा, यही होगा। मैं उत्तर प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश में बिहार के रास्ते से लहर फैल चुकी है और नीतीश जी के बनने से पार्टी और मजबूत हुई। ललन सिंह क्यों हटाए गए? ललन सिंह जी को लोकसभा चुनाव लड़ना था और टाइम पूरा हो गया था, और आदरणीय नेता हम लोग के नीतीश जी सर्वमान्य नेता हैं, तो बागडोर उनके हाथ में आया है तो और कार्यकर्ताओं के लिए और नेताओं के लिए और देश के लिए और राष्ट्र के लिए और अच्छा होगा। Today you have the JDU workers celebrating the appointment of Nitish Kumar as the JDU president. Now, what happens next from here is the bigger question. It's a big political question. We have been reporting for quite some time that Lalan Singh is resigning and Nitish Kumar would be becoming the president of the JDU. That has been, that confirmation has been done now, and it's a stamp to Republic TV and Republic Bharat's news break that we have been doing for the past 3 days, that Nitish Kumar is going to become the president of the JDU, and also there is some
events unfolding here, and we'll try and get to the events, the place where apparently the action is likely to take place. Apparently there is some movement here with we can see that I believe Nitish Kumar has come out of the party meeting, and Nitish Kumar after the meeting is going to his residence apparently for lunch. त्यागी जी 5 बजे बताएंगे। 5 बजे नया अध्यक्ष मिल जाएगा पार्टी को। त्यागी जी तो गाड़ी आ रही है, गाड़ी अब अध्यक्ष नीतीश जी हो गए ना, थोड़ा आराम से। अनिल जी ऐसे मत नीतीश कुमार निकल रहा है और आगे हमारे साथ में from the हम क्या कर रहे हैं पता नहीं, उससे मैं मीटिंग में नहीं। भाषण में क्या बोला है सर उन्होंने? Right now, what we see is that KC Tyagi is silent on the resignation of Lallan Singh. The only thing which KC Tyagi is iterating is that the press conference will be done at 5 o'clock, and after that press conference only, the situation will be cleared, and the press conference will be done to tell the entire thing which has happened in the National Executive meeting. But right now, the new poster has been put up outside Constitution Club with Nitish Kumar standing single-handed, standing alone in the poster, and lot of JDU Karyakartas have now come out with congratulating Nitish Kumar right now, as we all know that the proposal has been moved by Lallan Singh to make Nitish Kumar as the national president. Right now what we see is that Vijay Chaudhary अरे धूप चले, आज बैठक में थी, आज बैठक में अरे वहाँ चलिए ना, धूप में चलिए, धूप में चलिए, धूप में चलिए। हम भी थे वहाँ जब उन्होंने प्रस्ताव दिया था। तो नीतीश कुमार कब कार्यभार संभालेंगे? राष्ट्रीय कुमार जी ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया तो ये कहा जाए कि आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नीतीश कुमार है। अभी तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। विजय जी, कारण क्या रहे ललन सिंह के इस्तीफे देने? ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था, और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। विजय जी, नाराजगी की बात थी ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों के बीच में, क्या वो एक मुख्य वजह रही ललन सिंह के इस्तीफे की? किस चीज की? ललन सिंह के इस्तीफे की मुख्य वजह क्या दोनों के बीच में जो नाराजगी है वो भी एक मुख्य वजह रही? नाराजगी? ये तो नया शब्द आप कहाँ से ला रही है? ये इस शब्द का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। विजय चौधरी जी ये बताइए कि अब ये right now this is Vijay Chaudhary who clearly stated that Nitish Kumar has रीअलाइनमेंट की भी बात होगी। बिल्कुल, अभी बिल्कुल रीअलाइनमेंट की बात नहीं है। अभी सिर्फ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभालें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। इस राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर? फिलहाल अभी तो हमारे पार्टी पर भी कोई असर, दोनों वरिष्ठ नेता हैं, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू थे तभी मुख्यमंत्री की प्रभावी भूमिका थी। अब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, फिर भी ललन बाबू की प्रभावी भूमिका रहेगी। तो क्या बीजेपी के जो दरवाजे थे 2017 में जैसे खुले थे और अचानक सारे विधायक सीएम हाउस में घुस गए, क्या उसी तरह की पटकथा फिर लिखी जा सकती है? इस बात का उन सब बातों से कहाँ कोई मतलब है, न कोई जुड़ाव है, न कोई लेना देना है। इसलिए
इस बात का सिर्फ इतने मतलब था। जुड़ाव तो है विजय बाबू, जुड़ाव इसलिए है क्योंकि जुड़ाव इसलिए है विजय जी, जुड़ाव इसलिए है कि किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले तो नहीं हटता है। नहीं, हटने की कहाँ बात है, फिर आप हटने, हटना, हटाना ये सब शब्द कहाँ से ला रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब हम स्वयं चुनाव लड़ेंगे, इसलिए लगातार बाहर रहेंगे, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। और हमने कहा कि दोनों पहले प्रभावी दोनों की भूमिका होती थी, आगे भी रहेगी। कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं चौधरी जी, जो कि बता रहे थे कि क्या होगा आगे। अभी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, बैठक में हमारे साथ मौजूद हैं मदन सहनी जी, जो कि बिहार में मंत्री हैं। मदन जी, क्या हुआ बैठक में? बैठक में तो आज यही तय हुआ है कि जो ललन बाबू हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो अपनी व्यस्तता के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी से हमेशा इस बात को कहते रहते थे कि हमको इससे मुक्त कर दीजिए, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकार कर लिए हैं उनकी व्यस्तता को देखते हुए। और राष्ट्रीय जो अध्यक्ष का है, अभी आगे जो मीटिंग होगी उसमें तय होगा नीतीश जी बने या वो जो निर्णय ले, लेकिन अभी आगे का बैठक में तय होगा। लेकिन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने व्यस्तता के कारण इस बात का प्रस्ताव रखा है और सर्वसम्मति से हो सकता है आगे की बैठक में इसको पारित किया जाएगा। तो क्या इसकी राष्ट्रीय राजनीति पर भी कोई असर होगा? इस संगठन का जो बदलाव होगा या हो सकता है, इससे राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। जो हम लोग इंडिया गठबंधन के जो गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसका श्रेय सब लोग देते हैं, सिर्फ हम ही लोग नहीं देते हैं, उसका असर पड़ेगा। जो गति धीमी है उसको तेज करने का प्रयास किया जाए। में 2 धड़ा है, एक धड़ा चाहता है कि बीजेपी के साथ जाए, ये असंभव बात है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय होता है उससे अलग जनता दल यू का कोई भी धारा नहीं है, बस एक ही धारा है, उस धारा के साथ हम लोग चलते हैं। दूसरा कोई यहाँ न धारा है न कोई विकल्प है। निश्चित नीतीश कुमार जी का जो निर्णय 2 महीने पहले हटाया जाना ललन सिंह जी को, ये तो आश्चर्यजनक बात है। कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, वो बहुत पहले से कह रहे थे और ये आज ये पारित हुआ है, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। 5 बजे बैठक के बाद सर खड़े होकर बोलिए, सर खड़े होकर बोलिए, यही बोलिए, सर बोल दीजिए खड़े होकर, सर बोलिए, सर बोलिए, सुनिए आप आगे आके सुनिए। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सारे हाँ ब्रह्मा जी निकाल दे माइक। हेलो बताए हैं तो आगे नीतीश जी अध्यक्ष बनेंगे, तो इसका निर्णय हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी की ओर से हो जाएगा, अलग से उसमें कोई न्यूज नहीं। ठीक। विजेंद्र यादव बहुत ही सीनियर मिनिस्टर हैं बिहार के, लंबे समय तक देश के सबसे लंबे समय तक ऊर्जा मंत्री, और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो कि जेडीयू के कद्दावर नेता बलियावी जी आप भी हैं। बलियावी जी, क्या हुआ बैठक में? भाई बैठक में सर्वसहमति से जो बात थी कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बार नहीं कई बार कि भाई हमको चुनाव लड़ना है। लेकिन बलियावी जी, चुनाव लड़ना है, आप ही राजनीतिज्ञ हैं, मुस्कुरा रहे हैं आप। 2 महीने पहले किसी अध्यक्ष को क्यों हटाया जाता है? क्या कोई नया स्वरूप ले रहा है? बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है। आप तो अक्सर बयान ऐसा देते रहते हैं जिससे भूचाल आता है। आज सच बताइए दिल खोल कर। मैंने झूठ कभी बोला ही नहीं है, तो आज कैसे बोल दूं? क्यों हटाया गया है? अरे काहे को हटाया गया है? किसने कहा? ये दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। चूंकि हमारे आदरणीय ललन बाबू ने एक बार नहीं कई बार, चूंकि जो अभी चुनाव का स्वरूप है और जो हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री ने जो सारे दलों को एकत्रित किया, तो पार्टी ने सारे मामलों के लिए उनको अधिकृत भी किया। क्या लगता है नीतीश जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पार्टी को मजबूती मिलेगी? जो पार्टी कमजोर होती जा रही थी। पार्टी कमजोर नहीं होती जा रही थी, बल्कि जो आज जो जरूरत है देश की, इससे तो इनकार नहीं करेंगे ना कि सामाजिक समरसता के साथ
जो बिहार में विकास की एक नई गाथा माननीय मुख्यमंत्री ने लिखी है उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। गुलाम रसूल बलियावी जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य थे, तो ये रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी के खबर पर एक तरीके से मोहर लगता हुआ कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे। ललन सराफ जी विधायक हैं, ललन सराफ जी, और नीतीश जी के काफी करीबी हैं। नीतीश जी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, इससे क्या लगता है आपको पार्टी को मजबूती मिलेगी? नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं। आज उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को उन्होंने स्वीकार किया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं वर्क को डिसेंट्रलाइज करूंगा और सब। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे बहुत व्यस्तता है और पार्टी के संगठन पूरे देश में खड़ा करना है, उसमें मैं पूरी समय नहीं दे पाऊंगा। इसलिए सम्मानित नेता नीतीश कुमार जी से आग्रह किए जो आप स्वयं इसको संभालने का काम कीजिए, और कर्तव्य ध्वनि से सभी ने स्वागत किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उसे स्वीकार भी करने का किया। अभी नेशनल काउंसिल की बैठक हुई, उसमें मुहर ले जाएगी। एक और बात महेश्वर जी, एक बात लगातार कही जा रही है कि अब बीजेपी भी ये बात खुल करके कह रही है कि जो नज़दीकियां थी ललन सिंह की आरजेडी से, वो एक मुख्य कारण रहा क्योंकि नीतीश कुमार नाराज थे इस बात से, उनकी बढ़ती नज़दीकियां आरजेडी से, और वो एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से ललन सिंह के इस्तीफे की भी चर्चा सुखबुगाहट पटना से लेकर दिल्ली तक काफ़ी दिनों से थी। नहीं, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। कहीं कोई हमारा शीर्ष नेतृत्व न बोला है, न हम लोगों को कोई भी MP MLA बोला है। यह सिर्फ मीडिया की उपज थी, हम लोगों कहीं कोई नहीं थी। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और ललन बाबू में दोनों में इतनी मित्रता है, और जो पार्टी का फाउंडर मेंबर है दोनों आदमी, पार्टी के बनाने में, पार्टी के बढ़ाने में आदरणीय ललन बाबू की बहुत ही बढ़ चढ़ की हिस्सा रही है। इसलिए ललन बाबू पर कोई शंका नहीं कर सकता है। आज से ही नीतीश कुमार अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। नेशनल काउंसिल की बैठक होगी, उसमें मुहर लग जाएगी, उसके बाद संभालेंगे। एक और बात, नाराजगी की वजह क्या ये भी थी क्योंकि ललन सिंह को एक मुख्य भूमिका दी गई थी ये कन्वे करने के लिए कि नीतीश कुमार की मंशा है कि वो PM चेहरा हो, वो नेशनल कन्वीनर हो अपोजिशन ब्लॉक का, लेकिन ललन सिंह शुरू से कन्वे नहीं कर पाए, ये भी एक वजह बताई जा रही थी। सब कुछ ललन बाबू ने ईमानदारी से पार्टी के संगठन बढ़ाने का काम किया, पार्टी की मेहनत करने का काम किया, और चूंकि यह तो प्रक्रिया होती है, हर एक प्रत्येक वर्ष बैठक का 2 वर्ष हो चुका था, इसलिए आदरणीय ललन बाबू ने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को कहा कि आप संभालने का काम कीजिए, क्योंकि मैं चुनाव में व्यस्त रहूंगा। तो जेडीयू के लीडर्स खुश हैं नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से, क्योंकि 2020 के बाद अब वो कमान संभालेंगे, तो उनकी नेशनल एम्बिशन क्या अब खत्म हो जाएगी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाएंगे? वो सारे के सारे लोग खुश हैं, जितने भी हमारे नेशनल काउंसिल के मेंबर है, नेशनल राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सारे लोग खुश हैं। So this is Maheshwar Hazari who was speaking to us and clearly indicated that everyone in JDU is happy. And right now, if you see the Constitution Club, more and more leaders are present here, as everyone is stating that Lalan Singh has done a lot of work as a national president for the JDU. But we will talk to Devesh Thakur. Devesh जी, एक सवाल बस लेना चाहूंगी, आज जो फैसला हुआ, ललन सिंह ने अपना इस्तीफा सौंपा और नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रपोजल दिया, क्या इसकी सुखबुगाहट, इसकी चर्चा क्या कल ही हो चुकी थी, तमाम चीजें पहले ही तय थी? अगर आपको नहीं मालूम था कल कि कल क्या क्या हुआ था, तो हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? How will we come to know? We have come this morning. You are here in Delhi since long, so you must be having more information as to what was to happen. But there was already reports of Lalan Singh quitting from his designation as national president, and it was already iterated also that all these things will formally be announced in the national executive meeting. Could we say that the people, the veterans inside JDU already knew about it? Well, it was in the air. Definitely, it was there in the air, and he had himself announced. Honorable Rajiv Ranjan Singh, Lalan Singh, had himself announced that he wants to contest elections. He wants to go there in the field and work in his constituency, and that's why he wants to quit the post. But no fire is without the smoke. No smoke is without the fire, Deveji. You already know, and all the ongoing rift news was also because of close proximity of Lalan Singh with RJD leaders. And it was one of the reasons because of the growing rift. No, absolutely not. That's a rumor, I would say. That's not a very proper rumor to be spread around. We are in the government with the RJD. Where's the question of proximity? JDU is in the government with the RJD. So where's the question of proximity? The whole the complete JDU is in close proximity with the RJD as long as the government is there. It will always be there. But BJP continuously is iterating that Lalan Singh is the man.
All right, viewers, what we see right now is a big lead coming in what is happening in Bihar politics. Nitish takes over as the JDU chief, and Prakash, looks like what Republic TV had got, the leads that we had got were right after all. But the big question is, what will happen next, Prakash? Well, yes, I'm joined by Lalan Saraf, who's an MLC in the Bihar Vidhan Parishad and a very close confidant of Nitish Kumar. Nitish Kumar trusts him a lot. In fact, he is the eyes and ears of Nitish Kumar. Lalan Saraf जी, आप मीटिंग में मौजूद थे. क्या बातें हुई? हम लोग तो पहले से बता ही रहे थे कि ललन जी जा रहे हैं, नीतीश जी आ रहे हैं. देखिए, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इच्छा व्यक्त की गई है, उसकी संपुष्टि नेशनल काउंसिल की बैठक में होनी है. तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि इस पद से मैं मुक्त होना चाहता हूं और आप इस पद को संभालिए. तो मेरा ये मानना है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए और इंडिया गठबंधन का जो धुरी बन के उभरे हैं नीतीश कुमार जी, ये बहुत ही आवश्यक था और ये ससमय सही फैसला है. इससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा. नीतीश जी ने एक्सेप्ट कर लिया प्रेसिडेंटशिप का पोस्ट और क्या कहा? नीतीश कुमार जी का कहना था कि बहुत ही मुझ पर प्रेशर पड़ा और चूंकि इन्हें चुनाव भी लड़ना है तो मैंने स्वीकार कर लिया है, मैंने अपनी सहमति दे दी है और यदि राष्ट्रीय परिषद की संपुष्टि हो गई तो मैं इस पद को संभालूंगा. लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं लोगों को कार्यभार दूंगा, अलग अलग कार्यभार दूंगा और सबको काम करना पड़ेगा और सबने काम करने की सहमति दी है. और क्या वर्किंग प्रेसिडेंट ये सब भी बनाए जाएंगे? डिसेंट्रलाइज ऐसी कोई नहीं है, काम वो बांटेंगे, लोगों को अलग अलग काम देंगे. और सबसे बड़ी बात कि ललन सराफ जी, ललन सिंह का 2 महीने पहले चुनाव के हटना ये अनायास नहीं है. ये एक तरीके से देखा जाए तो राजनीति में गलियारे में बात चल रही थी कि लालू जी से क्लोज हो गए, पार्टी के विधायक टूट रहे हैं, जैसे आरसीपी सिंह पर आरोप लगा था. तो क्या आपको लगता है कि बिहार में नया पॉलिटिकल रिअलाइनमेंट हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ये जो भी बातें आई है, आप जानते हैं कि भाजपा जो मिथ्या और भ्रामक दुष्प्रचार करती है, मुझे उसी का ये नतीजा लगता है. ललन सिंह जी का अपना चुनाव है और उसके साथ ही साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को. हमारे 25 प्रदेश में संगठन है, 25 प्रदेशों में जाना और हर जगह चुनाव का काम करना और खुद चुनाव लड़ना, यही कारण होगा कि उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर करके और नीतीश कुमार जी विधायक आपके एकजुट रहेंगे हर हालत में नीतीश कुमार जी के साथ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सबके सब विधायक एकजुट हैं और विपक्ष के विधायक भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का नेतृत्व बना रहे. 2017 में भी आप लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे और अचानक खिड़की दरवाजा खुल गया और डिनर आयोजन हो गया. बीजेपी के बड़े नेताओं को हवा भी नहीं थी बिहार में, ऊपर से आदेश आया, सारे विधायक सीएम हाउस में घुस गए. तो क्या उसी तरह की पटकथा फिर से लिखी जा रही है क्या? 2020 से जो भाजपा ने हमारे नेता के साथ किया है, तो अब इसकी कोई संभावना नहीं, दूर तक कोई संभावना. 2020 से कई मॉडल, आप भी जानते हैं, कई मॉडल छुटवइयों से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना कि क्षेत्रीय दल खत्म कर दिए जाएंगे. तो इस तरह की जितनी बातें भाजपा ने की है, हमारे विधायकों को मणिपुर में तोड़ना, नॉर्थ ईस्ट में जब क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बन जाते, ऐसी बातें वो की है जो भाजपा जैसे नेशनल पार्टी को शोभा नहीं देता है और सही नहीं है. भाजपा से मोह भंग हो गया. भाजपा मुक्त भारत चाहिए. लेकिन आपके जेडीयू का तो एक मजबूत धड़ा चाहता है कि भाजपा के साथ फिर से मिल जाए, लालू जी के साथ नहीं रहना चाहते. ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती है. तो ये थे ललन सराफ जी, जो कि नीतीश जी के बड़ी करीबी व्यक्ति हैं. पिछले 40 साल से 48 साल, मैं करेक्ट करना, 48 साल से नीतीश कुमार के साथ करीबी रिश्ता रहा है, जब ये राजनीति में नहीं भी थे और साथ साथ रहना. जब नीतीश कुमार कहीं पूर्णिया मधेपुरा जाते हैं, भागलपुर में सेंट्रल जेल में थे, तो इन्होंने नीतीश कुमार की बातें बताई. एंड देयर यू हैव बिग पॉलिटिकल चर्निंग इन बिहार, बट आई डोंट ट्रस्ट
trust what Lalan Saraf is saying. There is more to it than meets the eye, and more political development will unfurl in the political arena of Bihar. Every political party is keeping a close eye, including the JDU. The major problem with the JDU is to keep its flock together with Nitish Kumar at the helm of affairs, and now RJD will also be keeping a close eye on the developments after the ouster of Lalan Singh, with whom Lalu Yadav and Tejasvi Yadav had got extremely close, and also the BJP will also be keeping a close eye because there are certain vote banks which the BJP also eyes in the run-up to the 2024 Lok Sabha elections. Back to you. Right. So let's go to Harsha as well. Harsha, Prakash, we'll come back to you. We are getting so many reactions coming in from the Constitution Club right now. This is a very big update. And Harsha, as you keep getting us also more details, I'll come back to you, Prakash, in just a moment. Prakash getting us all the top reactions right now. And Harsha, I'm going to tell all of viewers this, that Republic TV was right with all its leads. But the big question is, what will Lalan Singh do next? His moves next are something that everybody will be speculating about. Any kind of clue on that, Harsha? So, Shivangi, right now, what Lalan Singh spoke after leaving from Constitution Club is that, and most of the leaders of JDU also spoke that only. Lalan Singh is saying that he wants to work in the constituency, he wants to work in his constituency and ahead of the 2024 election, because I have to fight the elections. This is what Lalan Singh has said. And also the JDU leaders, because they have said that Lalan Singh has contributed a lot in the span of 3 years as the national president. But right now, the important chunk is that he wants to contribute and he wants to work for 2024 election in the state, and that is the reason why he has put on his resignation from his post as national president. But it was his, but no one asked him to put his resignation. It was he only who quit from the post of national president and formally announced and proposed that Nitish Kumar should be the national president. And today, Shivangi, in the formal meeting of the National Council, it will be announced also that from today onwards, Nitish Kumar is the national president of JDU. But Shivangi, I'll take you outside because a new poster of JDU has been put up at Constitution Club. If you will look at this poster, only Nitish Kumar standing alone with standing alone in this poster could be seen. None of the other JDU leaders are seen in this poster. This is the new poster which has been put up in Constitution Club after Nitish Kumar was formally announced as the national president and the proposal was tendered in the National Executive Meeting. This is the first poster, and if you look at this poster, none of the other JDU leaders are here, no other president, only Nitish Kumar is standing alone and strong and firm, because this is JDU leaders have been iterating that Nitish Kumar is the only leader who can be the PM face for opposition and also give a tough fight if the country wants to be saved from the rule of BJP. But we'll try and talk to other leaders as well, because continuously there's a lot of movement. Several JDU leaders are here. We'll try to take a word as we are live from Afaq Ahmed as well. Afaq जी, आप इस वक्त लाइव है, कई सारे लोग आपको बिहार में भी देख रहे हैं. बस एक सवाल लेना चाहूंगी, ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर के कल आपने एक बात कही थी कि ऑफिस बियरर्स की कैपेसिटी में नहीं है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो होगा वो देखा जाएगा. आज इस्तीफा हो गया है, तो ये माना जाए कि तमाम चीजें पहले से तय थी. जो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जो कुछ भी होगा वो राष्ट्रीय परिषद के बाद आपको बताया जाएगा. लेकिन जो प्रपोजल रखा ललन सिंह ने नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का जो प्रपोजल दिया, कहा जा रहा है नीतीश कुमार ने उसको स्वीकार भी कर लिया. सब परिषद में होगा, अभी नहीं कुछ भी. तो ये नेशनल काउंसिल की बैठक में ये माना जाए कि जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है फाक जी, वो फॉर्मल अनाउंसमेंट हो. ऐसे फैसले होंगे वो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होंगे. तो बतौर जेडीयू नेता आप खुश हैं कि नहीं कि नीतीश कुमार दोबारा अपना कार्यभार संभालेंगे? कभी नाराज ही नहीं थे, खुश होने की क्या बात. लेकिन ललन सिंह जी से तो काफी सारे लोग नाराज थे, काफी सारे जेडीयू नेता नाराज नहीं था. ये आप कह रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था. सब लोग खुश थे और सब खुश हैं और आगे भी खुश रहेंगे. भी कह रही थी कुछ भी ठीक नहीं है गठबंधन. दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उससे हमको कोई बहस नहीं. हमारे पार्टी में कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, दल का कोई आदमी, सब लोग खुश थे, सब एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे. कहीं कोई बात नहीं. ये माना जाए कि आज से नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं माना जाए. राष्ट्रीय परिषद के बाद इसको तय किया जाएगा.
So this is Afaq Ahmed Shivangi. Afaq Ahmed is the General Secretary, State General Secretary of JDU, and he clearly indicated that the National Council meeting, it will be formally announced that Nitish Kumar is the National President of JDU. But right now there's a lot of movement of JDU leaders here, because most of the JDU leaders were continuously were demanding that Nitish Kumar should take over the position of National President, which Nitish Kumar relinquished in 2020, and this position was then taken up by Lallan Singh, because it is a time for 2024 election, and as BJP is saying that nothing is good, nothing is going well in the alliance of RJD and JDU in Bihar, because they have been stating that there is an ongoing grift. There are two lobbies in the JDU right now, one with the Lallan Singh and other with the Nitish Kumar, and therefore the lot of things need to be improved in the alliance of JDU and RJD. And with the ongoing grift, this decision from Patna to Delhi was the talk of the town, that soon the resignation of Lallan Singh will be announced. Right now, as we see, a lot of leaders can be seen here, of a lot of leaders of JDU could be clearly seen here. We'll take up the word for some of the leaders. Sir, आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं. आप लोग को पहले से अंदेशा तो होगा कि डिसीजन यही होने वाला है, लल्लन सिंह इस्तीफा देने वाले हैं. दोनों आदमी देखिए, एक ही बात है, अब दोनों आदमी बने, ये तो परिषद का काम है कि उनको बना दें. लल्लन जी ने प्रस्ताव दिया, मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया, ये खुशी की बात है हम लोगों के लिए. जैसे ही प्रस्ताव दिया, मुख्यमंत्री ने स्वीकार भी कर लिया, यानी कि पहले से तय था ना कहीं ना कहीं कि लल्लन सिंह प्रस्ताव देने वाले हैं, उनकी सुगबुगाहट तो थी. लल्लन जी अपना कोई व्यस्तता है, लोकसभा का चुनाव उन्हें लड़ना है और हमारे नेता, सर्वमान्य नेता नीतीश जी को लड़ाना है. तो ऐसी परिस्थिति में उनको लगा कि हम समय नहीं दे पाएंगे, पूरे देश पार्लियामेंट का चुनाव है, उसके लिए ललन बाबू के पास समय का अभाव होगा, मेरा अनुमान है. अच्छा, मैं आप लोगों से समझना चाहती हूँ, क्योंकि नीतीश जी के नेशनल एम्बिशंस रहे हैं, उन्होंने कई बार ये बात जताई है कि उन्हें अपोजिशन का चेहरा बनाया जाए, पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए. तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही ये जो आवाज़ है जेडीयू की, वो और बुलंद होगी? और बुलंद होगी. बहुत अच्छी बात है, ये आपने सही बात कहा, बुलंद होगी और देश में इनकी और मतलब मांग बढ़ेगी कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए. लेकिन आप लोग अपोजिशन को कैसे समझाएंगे? वहाँ पे तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया है, तो अब ये तमाम चीजें कैसे ठीक होंगी? उनके नाम, किन्हीं के नाम को अभी नहीं आया है. आफ्टर पोलिंग के बाद जब सरकार बनाने का वक्त आएगा तो मिलजुल कर लोग बना लेंगे. नीतीश कुमार का ऐसा चेहरा है कि सहमति बन जाएगी नीतीश जी के. दोबारा से क्या जेडीयू नेता पोस्टर लगाएंगे बिहार से लेकर दिल्ली तक कि पीएम का चेहरा नीतीश कुमार? कार्यकर्ता नीतीश जी में जो चीज है, कार्यकर्ता अपने नेता को इस रूप में देखना चाहते हैं. नीतीश जी तो नहीं कभी इच्छा जाहिर की है कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ. नहीं, लेकिन उनके नेशनल एम्बिशन तो रहे हैं, उन्होंने कई बार इसका जिक्र भी किया है. उनका रहा है भाजपा भगाओ देश बचाओ, और उसमें वो सफल होंगे. So Shivangi, these are the leaders of JDU who are here in Constitution Club and are waiting for the National Council meeting to begin, because the National Council meeting, which will start at around 2:30 p.m. here in Constitution Club only, where again Nitish Kumar, Lallan Singh and all the leaders of JDU will be present here in that National Council meeting. It will be formally announced that Nitish Kumar from today onwards is the National President of JDU, and also several leaders of JDU has also stated that this is a step one towards the national ambition of Nitish Kumar, because Nitish Kumar will be the PM face from the side of opposition if the opposition has to go ahead for the 2024 Lok Sabha election, and therefore Nitish Kumar is taking over as the command, as the position of the national president. Back to you, Shivangi. Right, so right now what we see is Harsha who's getting us all the top details coming in right now. And Harsha, as you keep getting us more updates, this is the biggest news break. And the big question, of course, I would like to ask you, Harsha, is that how will this really impact 2024 Lok Sabha elections? So that is something that is on everybody's mind, Harsha.
Rightly stated, Shivangi. So this is a bigger role to Nitish Kumar ahead of the 2024 elections, and many are saying that from now onwards Nitish Kumar will work intactly and steadily with all the party leaders, the veterans of the JDU, and therefore the seat sharing formula will also be done under the umbrella leadership of Nitish Kumar, because the seat sharing formula is very important formula, and JDU wants to contest election in 2024 not only in Bihar but it is also looking for seat sharing formula in other states as well, and for that Nitish Kumar has to be the face and has to be the national president of JDU. And from now onwards, the next meeting of the JDU, which will commence in Patna in Bihar, in that meeting also the another step towards the 2024 Lok Sabha election will be taken up. But right now, as you clearly stated, that 2024 is a plan for Nitish Kumar, is a plan for JDU, where the Nitish Kumar's national ambition could be fulfilled. He is expecting that, and therefore next stage would also be to talk to the opposition leaders. But I'll ask my camera person Anil to stay with the visuals, to show you the visuals across, because there are so many JDU leaders who are here in the Constitution Club waiting for the National Council meeting also to begin. But we'll take a word with Sanjay ji right now. Sanjay ji, 2024 में नीतीश कुमार का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे होना, ये 2024 में क्या महत्व रखता है? बहुत महत्व रखता है। इनके होने से जैसे कि पूरे मैंने बिहार जैसे कि और हमारी 40 सीट में 40 सीट जीत के आएगा। पहले संजय जी, आप तो एमएलसी भी हैं, एक बात जो लगातार ये कही जा रही है कि बिहार के अलावा और राज्यों में भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला पे नीतीश कुमार बात करेंगे अपोजिशन से, तो जेडीयू बाहर भी चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में? जरूर, निश्चित नीतीश जी की अहम भूमिका रहेगी। ये इंडिया का जो गठन हुआ है, ये तो मुख्यमंत्री जी का अगुवाई में शुरुआत इन्हीं का किया हुआ है। शिवांगी, बैक टू बैक लीडर्स आर हियर। कौशलेंद्र जी, यू आर लाइव एंड बिहार के लोग भी आपको देख रहे हैं। कौशलेंद्र जी, आप तो सांसद हैं, दिल्ली आते जाते रहते हैं, लेकिन दिल्ली से बिहार तक का जो रास्ता है वो नीतीश कुमार की अगुवाई में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पे किस तरह से 2024 का कैंपेन जो है वो आगे बढ़ेगा? देखिए, मुझे भरोसा और विश्वास ही नहीं, पूरे बिहार वासियों को विश्वास है कि नीतीश कुमार जहां रहते हैं, जहां काम किए हैं, उसका निश्चित रूप से वहाँ की जनता उनको मजदूरी देगी। तो नीतीश कुमार जी जहाँ रहेंगे, बिहार की जनता वहाँ वोट देगी, जनता दल वहाँ चुनाव जीत कर आएगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं बिहार के बाहर भी अगर सीट शेयरिंग फॉर्मूला होता है तो वहाँ भी नीतीश कुमार का चेहरा एक अहम रोल प्ले करेगा? ये तो स्वाभाविक चीज़ है। आज नीतीश कुमार जी जो बिहार में जलनन योजना लाए, अब दिल्ली उसको देख रहा है, लेकिन बिहार में चले जाइए 99% गरीबों के घर में भी नल का पानी पी रहा है, लेकिन दूसरे प्रदेश में चले जाइए अभी नल का पानी का इंतजाम नहीं हुआ है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि अपोजिशन ब्लॉक में मल्लिकार्जुन खड़गे से ज्यादा बड़ा चेहरा नीतीश कुमार है अगर नेशनल पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो? देखिए, हम ये किसी को चेहरा को छोटा और बड़ा हम क्यों करें, वो भी पुराने लीडर हैं, हम उनका क्यों कहें कि वो खराब है। लेकिन हमारे नेता के जो काम करने का तौर है, तरीका है, जो आज नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं बिहार में, आप देख लीजिए उठा के, पिछले बार से लगातार 18 साल लगभग उनका होने वाला है, और 18 साल जब शुरुआत किए थे बिहार में, आवाज़ जो बजट होता है तो देखिए कि अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी आगे हैं। तो 2024 के लिए कौन सा मंत्र फूकने वाले हैं नीतीश कुमार, जो लल्लन सिंह से ना हो पाया लेकिन नीतीश कुमार जो है वो कर बताएंगे, क्योंकि 2024 के मद्देनजर ये चेंज किया गया है? ये चेंज नीतीश कुमार जी से उन्होंने आग्रह किया है कि भाई आप बन जाइए, हमें चुनाव लड़ना है, और मुझे भरोसा है और विश्वास है कि नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं, अभी जनगणना बिहार में हुआ है, देश का पहला राज्य है बिहार जहां जनगणना हुआ और आर्थिक रूप से जनगणना हुआ, लेकिन आज देश के कई पार्टियां हैं, सबके नेता ने यह मांग शुरू कर दिया है कि हर राज्य में यह जनगणना होनी चाहिए। तो एक साधारण बात नहीं है, नीतीश कुमार एक पुस्तक के रूप में है जिसको पढ़ा जा सकता है, जो उन्होंने काम किया है। Shivangi, this is Koshlendra Kumar, who is a member of parliament from JDU, and clearly stating that Nitish Kumar is going to take up the issue of caste census, which has been done in Bihar, and Bihar is the first state to do the caste census on the economic ground, and therefore this will be the major agenda under the umbrella leadership of Nitish Kumar. So right now, multiple versions, Shivangi, are coming from the JDU leaders in the Constitution Club. They are also waiting for the National Council meeting
meeting to begin, and in that National Council meeting, Nitish Kumar will also be present there, and the formal announcement of Nitish Kumar as National President will be announced. Shivangi, back to you. All right, Harsha getting us top updates coming in. A big suspense over what's happening in JDU is finally over. Nitish to take over reins of JDU, and Lalan Singh quits amid the exit speculations that we have had here for the longest time. A very short break, much more coming up on the other side. QSMT, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। जब पेरेंटल कंट्रोल के बिना हो हैकर्स के पास अथॉरिटी, फिर किस बात की साइबर सिक्योरिटी। क्विक हील, आज के लाइफ की प्रायोरिटी साइबर सिक्योरिटी। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। The countdown has begun for the 75th Republic Day celebrations. The parade rehearsals have begun in the national capital. The rehearsals began on Friday morning in Delhi's Kartavya Path and near India Gate. The ceremonial parade of the 75th Republic Day will be held at the historic Gandhi Maidan from 11th of January. India has announced that French President Emmanuel Macron will be the chief guest at this year's Republic Day celebrations. Bureau Report, Republic TV.
मोदी सरकार की गारंटी। किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। जामनगर की भट्ट फैमिली को तारे देखना पसंद है, जम्मू की भट्ट फैमिली को सितारे देखना पसंद है। फैमिलीज जितनी भी सेम लगे, होती अलग है। इसलिए नया वीमैक्स पोस्टपेड जो दे हर फैमिली को उनकी पसंद की चॉइसेस, जैसे ईज माई ट्रिप, Amazon प्राइम एंड मोर। वीमैक्स पोस्टपेड, चूज व्हाट यू वांट टू यूज। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इन खर्चों के लिए अब उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। यशस्वी प्रधानमंत्री के विजन से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाई है उत्तर प्रदेश के करोड़ों अन्नदाताओं के चेहरे पर मुस्कान। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2 करोड़ 63 लाख किसानों को मिला है स्वाभिमान से जीने का अधिकार। किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं 64,694 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत सभी किसानों को प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जाती है 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता। अब किसान भाइयों को कृषि कार्यों के लिए किस्मत के भरोसे नहीं रहना होगा। अन्नदाताओं का सम्मान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। Lalan Singh resigns as JDU chief, Nitish to take over as the next chief. Massive breakthrough after 12 years of negotiation as government strikes big success on Ulfa Peace Deal. Historic centre Ulfa Peace Deal to take shape today will end 4-decade-long insurgency. Probe reveals both suspects took auto from Jammu University. CCTV footage being scanned. Cracks widen in India alliance over PM face. Now Sadharan pitches for Rahul as PM face, even as Aam Aadmi Party and TMC bat for Kharge. State set for Grand Ram Mandir unveiling. PM to visit Ayodhya tomorrow to launch projects worth rupees 11,100 crores.
Amid buzz over major bureaucratic reshuffle, PM to preside over chief secretaries meet in the capital. Viewers, we're live and breaking. Bihar CM Nitish Kumar became the new president of the Janata Dal. And after this, Rajiv Ranjan has now gone ahead and resigned. Rajiv Ranjan Singh, Lalan Singh also he's called as, resigned from the post. Nitish Kumar was elected to the top party post at JDU's two-day national executive meeting in Delhi. Minutes before he was named the new JDU chief, Lalan Singh has stepped down and proposed Kumar as president. Here are the few reactions on the developments in Bihar cabinet. And we are also getting you top details here. Our leads have been right, viewers. Republic TV said that Lalan Singh will be stepping down as JDU chief, and that's what happened. Let's listen in to the reactions. अरे धूप चलिए, अरे वहाँ चलिए ना, धूप में चलिए, धूप में चलिए, धूप में चलिए। हम भी थे वहाँ जब उन्होंने प्रस्ताव दिया था। तो नीतीश कुमार कब कार्यभार संभालेंगे? राष्ट्रीय कुमार जी ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया तो ये कहा जाए कि आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नीतीश कुमार है। अभी तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। विजय जी, कारण क्या रहे ललन सिंह के इस्तीफे देने? ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। विजय जी, नाराजगी की बात थी ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों के बीच में, क्या वो एक मुख्य वजह रही ललन सिंह के इस्तीफे की? किस चीज की? ललन सिंह के इस्तीफे की मुख्य वजह क्या दोनों के बीच में जो नाराजगी है वो भी एक मुख्य वजह रही? नाराजगी? इतना नया शब्द आप कहाँ से ला रही है? ये इस शब्द का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। विजय चौधरी जी ये बताइए कि अब ये right now this is Vijay Chaudhary who clearly stated that Nitish Kumar has been the proposal was sent by Lalan Singh to make Nitish Kumar as the national president, and the formal announcement will be done at the National Council meeting. महेश्वर हजारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी स्पीकर। महेश्वर जी, एक बात जो आज जो बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ है वो ये हुआ है कि ललन सिंह का इस्तीफा और साथ ही साथ नीतीश कुमार का नाम जो प्रपोज किया ललन सिंह ने, तो आप लोग बताइए कि पहले से ही ये तय था कि ललन सिंह अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं? नहीं, पहले से तय नहीं था, चूँकि आदरणीय नेता ललन बाबू ने उन्होंने जाहिर की, चूँकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे बहुत व्यस्तता है और पार्टी के संगठन पूरे देश में खड़ा करना है, उसमें मैं पूरी समय नहीं दे पाऊंगा। इसलिए सम्मानित नेता नीतीश कुमार जी से आग्रह किए जो आप स्वयं इसको संभालने का काम कीजिए, और कर्तव्य ध्वनि से सभी ने स्वागत किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उसे स्वीकार भी करने का किया। अभी नेशनल काउंसिल की बैठक हुई, उसमें मुहर लग जाएगी। एक और बात महेश्वर जी, एक बात लगातार कही जा रही है कि अब बीजेपी भी ये बात खुल करके कह रही है कि जो नज़दीकियां थी ललन सिंह की आरजेडी से, वो एक मुख्य कारण रहा, क्योंकि नीतीश कुमार नाराज थे इस बात से, उनकी बढ़ती नज़दीकियां आरजेडी से, और वो एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से ललन सिंह के इस्तीफे की भी चर्चा सुखबुगाहट पटना से लेकर दिल्ली तक काफ़ी दिनों से थी। नहीं, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कोई हमारा शीर्ष नेतृत्व न बोला है, न हम लोगों को कोई भी MP MLA बोला है, यह सिर्फ मीडिया की उपज थी। हम लोगों को कहीं कोई नहीं थी। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और ललन बाबू में दोनों में इतनी मित्रता है, और जो पार्टी का फाउंडर मेंबर है दोनों आदमी, पार्टी के बनाने में, पार्टी के बढ़ाने में आदरणीय ललन बाबू की बहुत ही बढ़ चढ़ की हिस्सा रही है। इसलिए ललन बाबू पर कोई शंका नहीं कर सकता है। आज से ही नीतीश कुमार अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष? नेशनल काउंसिल की बैठक होगी, उसमें मुहर लग जाएगी, उसके बाद संभालेंगे। एक और बात, नाराजगी की वजह क्या ये भी थी, क्योंकि ललन सिंह को एक मुख्य भूमिका दी गई थी ये कन्वे करने के लिए कि नीतीश कुमार की मंशा है कि वो PM चेहरा हो, वो नेशनल कन्वीनर हो अपोजिशन ब्लॉक का, लेकिन ललन सिंह शुरू से कन्वे नहीं कर पाए, ये भी एक वजह बताई जा रही थी। सब कुछ नहीं, ललन बाबू ने ईमानदारी से पार्टी के संगठन बढ़ाने का काम किया, पार्टी की मेहनत करने का काम किया, और चूँकि यह तो प्रक्रिया होती है, प्रत्येक वर्ष बैठक का 2 वर्ष हो चुका था, इसलिए आदरणीय ललन बाबू ने
आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को कहा कि आप संभालने का काम कीजिए, क्योंकि मैं चुनाव में व्यस्त रहूंगा। जेडीयू के लीडर्स खुश हैं नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से, क्योंकि 2020 के बाद अब वो कमान संभालेंगे तो उनकी नेशनल एम्बिशन क्या अब खत्म हो जाएगी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाएंगे? वो सारे के सारे लोग खुश हैं, जितने भी हमारे नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं, नेशनल राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सारे लोग खुश हैं। निवेश जी, एक सवाल बस लेना चाहूंगी। आज जो फैसला हुआ, लल्लन सिंह ने अपना इस्तीफा सौंपा और नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रपोजल दिया, क्या इसकी सुगबुगाहट, इसकी चर्चा क्या कल ही हो चुकी थी? तमाम चीजें पहले ही तय थी? अगर आपको नहीं मालूम था कल कि कल क्या क्या हुआ था, तो हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? हाउ विल वी कम टू नो? वी हैव कम दिस मॉर्निंग. यू आर हियर इन दिल्ली सिंस लॉन्ग, सो यू मस्ट बी हैविंग मोर इन्फॉर्मेशन as to what was to happen. But there was already reports of Lallan Singh quitting from his designation as national president, and it was already iterated also that all these things will formally be announced in the national executive meeting. Could we say that the people, the veterans inside JDU already knew about it? Well, it was in the air. Definitely it was there in the air. And he had himself announced, Honorable Rajiv Ranjan Singh, Lallan Singh had himself announced that he wants to contest elections. He wants to go there in the field and work in his constituency. And that's why he wants to quit the post. But no fire is without the smoke. No smoke is without the fire, Deveji, you already know. And all the ongoing rift news was also because of close proximity of Lallan Singh with RJD leaders. And it was one of the reasons because of the growing rift. No, absolutely not. That's a rumor, I would say. That's not a very proper rumor to be spread around. We are in the government with the RJD. Where's the question of proximity? JDU is in the government with the RJD. So where's the question of proximity? The whole the complete JDU is in close proximity with the RJD as long as the government is there. It will always be there. Continuously is iterating that Lallan Singh is the man because of whom the alliance between BJP and JDU couldn't work, and the alliance between RJD and JDU was because of Lallan Singh only. All rumors spread by you people. Nitish Kumar, when he will formally take up the charge? Well, he has already accepted it. He's already become the president. Well, yes, I'm joined by Lallan Saraf, who's an MLC in the Bihar Vidhan Parishad and a very, very close confidant of Nitish Kumar. Nitish Kumar trusts him a lot. In fact, he is the eyes and ears of Nitish Kumar. Lallan Saraf जी, आप मीटिंग में मौजूद थे, क्या क्या बातें हुई? हम लोग तो पहले से बता ही रहे थे कि लल्लन जी जा रहे हैं, नीतीश जी आ रहे हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इच्छा व्यक्त की गई है, उसकी संपुष्टि नेशनल काउंसिल की बैठक में होनी है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि इस पद से मैं मुक्त होना चाहता हूं और आप इस पद को संभालिए। तो मेरा ये मानना है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए और इंडिया गठबंधन का जो धुरी बन के उभरे हैं नीतीश कुमार जी, ये बहुत ही आवश्यक था और ये ससमय सही फैसला है। इससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। नीतीश जी ने एक्सेप्ट कर लिया प्रेसिडेंटशिप का पोस्ट और क्या कहा? नीतीश कुमार जी का कहना था कि बहुत ही मुझ पर प्रेशर पड़ा और चूंकि इन्हें चुनाव भी लड़ना है तो मैंने स्वीकार कर लिया है, मैंने अपनी सहमति दे दी है और यदि राष्ट्रीय परिषद की संपुष्टि हो गई तो मैं इस पद को संभालूंगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं लोगों को कार्यभार दूंगा, अलग अलग कार्यभार दूंगा और सबको काम करना पड़ेगा और सबने काम करने की सहमति दी है। और क्या वर्किंग प्रेसिडेंट इस सब भी बनाए जाएंगे डिसेंट्रलाइज? ऐसी कोई नहीं है, काम वो बांटेंगे, लोगों को अलग अलग काम देंगे। और सबसे बड़ी बात कि ललन सराफ जी, ललन सिंह का 2 महीने पहले चुनाव के हटना ये अनायास नहीं है। ये एक तरीके से देखा जाए तो राजनीति में गलियारे में बात चल रही थी कि लालू जी से क्लोज हो गए, पार्टी के विधायक टूट रहे हैं, जैसे आरसीपी सिंह पर आरोप लगा था। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में नया पॉलिटिकल रिअलाइनमेंट हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी बातें आई है, आप जानते हैं कि भाजपा जो मिथ्या और भ्रामक दुष्प्रचार करती है, मुझे उसी का ये नतीजा लगता है। ललन सिंह जी का अपना चुनाव है और उसके साथ ही साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को। हमारे 25 प्रदेश में संगठन है, 25 प्रदेशों में जाना और हर जगह चुनाव का काम करना और खुद चुनाव लड़ना, यही कारण होगा कि उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर करके और नीतीश कुमार जी विधायक आपके एकजुट रहेंगे?
हर हालत में नीतीश कुमार जी के साथ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सबके सब विधायक एकजुट हैं और विपक्ष के विधायक भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का नेतृत्व बना रहे। 2017 में भी आप लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे और अचानक खिड़की दरवाजा खुल गया और डिनर आयोजन हो गया। बीजेपी के बड़े नेताओं को हवा भी नहीं थी बिहार में, ऊपर से आदेश आया, सारे विधायक सीएम हाउस में घुस गए। तो क्या उसी तरह की पटकथा फिर से लिखी जा रही है क्या? 2020 से जो भाजपा ने हमारे नेता के साथ किया है तो अब इसकी कोई संभावना नहीं, दूर दूर तक कोई संभावना। 2020 से कई मॉडल, आप भी जानते हैं, कई मॉडल छुटभइयों से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना कि क्षेत्रीय दल खत्म कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की जितनी बातें भाजपा ने की है, हमारे विधायकों को मणिपुर में तोड़ना, नॉर्थ ईस्ट में, जबकि हम राष्ट्रीय पार्टी बन जाते, ऐसी बातें वो की है जो भाजपा जैसे नेशनल पार्टी को शोभा नहीं देता है और सही नहीं है। भाजपा से मोह भंग हो गया। भाजपा मुक्त भारत चाहिए। लेकिन आपके जेडीयू का तो एक मजबूत धड़ा चाहता है कि भाजपा के साथ फिर से मिल जाए, लालू जी के साथ नहीं रहना चाहते। ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती है। लल्लन सिंह के इस्तीफे को लेकर के कल आपने एक बात कही थी कि ऑफिस बियरर्स की कैपेसिटी में नहीं है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो होगा वो देखा जाएगा। आज इस्तीफा हो गया है तो ये माना जाए कि तमाम चीजें पहले से तय थी जो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो कुछ भी होगा वो राष्ट्रीय परिषद के बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन जो प्रपोजल रखा लल्लन सिंह ने, नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का जो प्रपोजल दिया, कहा जा रहा है नीतीश कुमार ने उसको स्वीकार भी कर लिया। सब परिषद में होगा, अभी नहीं कुछ भी। तो ये नेशनल काउंसिल की बैठक में ये माना जाए कि जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है फाक जी, वो फॉर्मल अनाउंसमेंट हो, ऐसे फैसले होंगे वो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होंगे। तो बतौर जेडीयू नेता आप खुश हैं कि नहीं कि नीतीश कुमार दोबारा अपना कार्यभार संभालेंगे? कभी नाराज ही नहीं थे, खुश होने की क्या बात। लेकिन लल्लन सिंह जी से तो काफी सारे लोग नाराज थे, काफी सारे जेडीयू नेता नाराज नहीं था। ये आप कह रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब लोग खुश थे और सब खुश हैं और आगे भी खुश रहेंगे। कह रही थी कुछ भी ठीक नहीं है गठबंधन। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उससे हमको कोई बहस नहीं। हमारे पार्टी में कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, दल का कोई आदमी, सब लोग खुश थे, सब एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे, कहीं कोई बात नहीं है। माना जाए कि आज से नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं माना जाए। राष्ट्रीय परिषद के बाद इसको तय किया जाएगा। And viewers, so what we see right now is a big update coming in, where a day after dismissing reports time and again and time of resignation, Janata Dal United JDU leader Rajiv Ranjan Singh, alias Lullan Singh, has now stepped down from his post as JDU national president. As per Republic TV sources, Lullan Singh submitted its resignation at the party's conclave in Delhi, and now Nitish Kumar will take over as a JDU chief. And this is a very big update coming in, because yesterday, when speaking to Republic TV, Lullan Singh, considered, who's a very close aide of Bihar CM Nitish Kumar, said that JDU is united and will always be. I've shared a bond with Nitish Kumar for 37 years. BJP is trying to set a narrative, we are one. So even after that, after he told Republic TV that we are united, that's the kind of message that he gave. What we see right now is, on being asked, Nitish will take over as JDU chief. Bihar Minister Vijay Kumar Chaudhary has said that there will be a national executive meeting of JDU. And after this, what we see, a big rejig coming in. And for the first time, after a very long time, what we see is that a big shake-up is coming in Bihar politics, something which we were anticipating. A lot of speculation was about this. Let's go back to Harsha, who's joining us. Harsha, I want to ask you about what exactly is next, because now the big speculation is also that what will Lullan Singh do? Number two, is it confirmed that Nitish Kumar will be taking over as a JDU chief now? Yes, Shivangi, this confirmed for now that Nitish Kumar will be taking charge as the National President and JDU Chief of JDU, because in National Council meeting, Shivangi, the National Council meeting is a very important meeting, because the resolution is passed in the National Council meeting only, and the voter turnout in the National Council meeting, after that only it's formally announced that Nitish Kumar will be the President of the JDU, and also all the powers which till now were with Lullan Singh will be transferred officially
officially to Nitish Kumar. So all the formal things which has to be done for the transfer of powers from Lallan Singh to Nitish Kumar will be done in National Council meeting, and the announcement will be done in that meeting, which will commence at around 3 o'clock. And Shwangi, these are the visuals, because this is the place where at 3 o'clock the meeting of National Council will commence, and everyone now is eyeing on exactly what is going to be in JDU. What will be the responsibility? Will Lallan Singh will take over, and what exactly Nitish Kumar is going to change as a national president in JDU. So a lot of leaders are here and they all are waiting for 3 o'clock, because that is the time when Nitish Kumar, Lallan Singh will once again come here for the meeting of the National Council. But more and more leaders are here because everyone is eyeing on whether everything is well in JDU. Therefore, we continuously are trying to speak to several leaders as well. Sir, सब लोग एक बात पूछ रहे हैं कि क्या JDU में सब कुछ ठीक है लल्लन सिंह के इस्तीफे के बाद से? अगर परसेंटेज में पूछिएगा तो 100% ठीक है। और बताएं? लेकिन परसेंटेज के साथ ही बात ये भी हो रही है कि जो वजह रही है लल्लन सिंह के इस्तीफे की, वो वजह वो थी कि उनकी आरजेडी से जो करीबियत वो आजकल हो रही थी। दूसरी बात कि वो जो नीतीश कुमार का नेशनल एम्बिशन है, वो अपोजिशन को ठीक से बता नहीं पाए थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा पद के उम्मीदवार हो सकता है अपोजिशन। ये जो है ना, ये सगुफा आपको नहीं बोल रहे हैं हम, लेकिन मीडिया के द्वारा बनाया हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कि आदरणीय ललन बाबू ने कहा है कि हमको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, वहाँ समय हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उस हित में, देश हित में, अपने क्षेत्र के हित में। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो लोकसभा में जा सकते थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा सकते थे, वहाँ पे कार्यक्रम कर सकते थे और चुनाव लड़ सकते थे। आप भी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन आप जो काम कर रही हैं 24 घंटा हर आदमी के लिए होता है, उस 24 घंटे में ही सारा काम करना होता है। तो आप 24 घंटा ये काम करती हैं, दूसरा काम करना होगा तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं? तो नीतीश कुमार जब ये कार्यभार ग्रहण करेंगे काउंसिल की मीटिंग के बाद, उसके बाद नीतीश कुमार क्या परिवर्तन लाने वाले हैं जेडीयू के अंदर? देखिए, कोई भी परिवर्तन या विकास जो होता है ना, वो होता नहीं है, करना पड़ता है। और उसके लिए जो प्रदेश का या पार्टी का मुखिया हो, उसका विजन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। नीतीश कुमार का यह विजन स्पष्ट है कि उनको ये करना है, देश हित में, आम लोगों के हित में ये काम करना है। और जो अभी सरकार चल रही है, जो पूरा मतलब लोकतंत्र के को इसमें चल रही है, खत्म करने के चक्कर में चल रही है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, इन सब से निजात दिलाने के लिए जो विजन नीतीश कुमार के पास है, वो इस देश में किसी के पास नहीं है। रामानंदा जी, आरजेडी के नेता तो कह रहे हैं कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे लल्लन सिंह हो चाहे नीतीश कुमार हो। आप लोग उम्मीद करें कि नीतीश कुमार कुछ बेहतर करेंगे, आरजेडी कह रही है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आरजेडी को इससे कोई मतलब नहीं है कि लल्लन सिंह हो या नीतीश कुमार। देखिए, मान लीजिए नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोगों को सर्वमान्य नेता है, और ख़ास करके हम एक चीज़ बता दे रहे हैं कि जिस लोक संसदीय क्षेत्र से आदरणीय ललन बाबू हैं, उस क्षेत्र का हम लखीसराय जिला के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आप जानते हैं। लेकिन वो एक ही चीज़ कहे कि चुनाव में समय नहीं दे पाते हैं। हम लोग भी आग्रह कहे कि नहीं, हमको चुनाव लड़ना है, ये जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप। एक ही इलाके से आते हैं तो अफसोस नहीं हुआ थोड़ा भी? आपको तनिक भी अफसोस नहीं हुआ जब लल्लन सिंह ने अपना प्रस्ताव रखा? नहीं, हम लोग कहे भी, उनसे आग्रह भी किए, वो कहे कि नहीं से थोड़ा सा अभी हम लोग को चुनाव देखना है, अगर पूरे देश में भ्रमण करेंगे तो हमारा क्षेत्र छूट जाएगा। कारण कि ये मुंगेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र है ना, उसमें कुछ दिन पहले अमित शाह जी गए थे, माननीय गृह मंत्री, और बराबर वहाँ इस तरह की बात हो रही, इसलिए करके वो कहे कि नहीं, अभी फिलहाल हम लोग अपना क्षेत्र देखते हैं और महागठबंधन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। So right now you're watching Republic TV. More on the other side of the break as short break. We'll be returning after a short break. Stay tuned with us. QSMT achieved. The world's foremost university rankings organizations have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. दिल के सारे राज खोलता है,
जब ये डायमंड बोलता है। दिल की ऐसी बातों को डायमंड से बुलवाओ। मलाबार आओ। और अब पाइए डायमंड वैल्यू पे अप टू 25% ऑफ ड्यूरिंग माइंड डायमंड फेस्टिवल। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। इस पल को मुमकिन करने के लिए अबीर ने पहले से ही शुरुआत कर दी थी। ये पल सच हुआ, ये पल पलकों पे सूरज सा उगा, ये पल मानो रुक सा। और म्यूचुअल फंड से शुरुआत करना समझदारी की निशानी है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। आइवरी या क्रीम, कोई भी बताओ ना। टाइल्स जो भी हो, लगाने के लिए MI के लेटिक्रीट टाइल एडेसिव। MI के लेटिक्रीट टाइल एडेसिव, फॉर्मूला ऐसा कि टाइल न टूटेगा न छूटेगा। The country awaits the grand inauguration of Ayodhya Ram Mandir that is scheduled to take place on 22nd of January. Ahead of its inauguration, the highway walls near Ayodhya airport are being painted and women workers are working on polishing the stones to be used in Ram temple. PM Modi is scheduled to conduct a roadshow in Ayodhya on 30th of December. PM Modi will be inaugurating the Ayodhya airport tomorrow and later proceed with a 15-kilometer extensive road show. With just a few days to go for the Republic Day celebrations, parade rehearsals are underway at the India Gate. French President Emmanuel Macron will be the chief guest on the grand occasion. Delhi police conducted a security drill in East Delhi in preparation for New Year and Republic Day. The mock exercise has involved various teams including Delhi Fire Service, Traffic Police, Bomb Squad, Dog Squad, CAT ambulances and SWAT commandos. DMDK chief Vijay Kant's mortal remains have been brought to the island ground
in Anna Salai for a public homage. The mortal remains would be later taken to the office to perform his last rites. Protesters raised black flags against Kerala Governor Arif Muhammad Khan near Thiruvananthapuram General Hospital. The police have detained the protesters during the protest. The count of COVID-19 cases has been steadily rising in recent weeks, with 9 states and union territories confirming the existence of the JN1 virus subvariant. Kerala has reported 78 cases of new variant, positioning the state with the highest count of active cases of JN1. Much more coming up. Cracks widen in India lines over PM phase. Now Sadharan pitches for Rahul as PM phase, even as Aam Aadmi Party and TMC bat for Kharge. State set for Grand Ram Mandir unveiling. PM to visit Ayodhya tomorrow to launch projects worth rupees 11,000 crores. Stay tuned. हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी, तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। अक्सर मन में डर सा आता है, तुम बस एक हाथ बढ़ाओ, राह हम बना लेंगे। तुम बस मैदान तक जाओ, हम जीत को अपना लेंगे। लेट्स प्लेज टू हेल्प मेक इंडिया समर्थ बढ़ंडे, मंजिल उनकी, साथ हमारा। hungry.co.in पर लॉगिन करें। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट।
अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। Very good afternoon. It is 2 p.m. We are live and breaking. I'm Samiksha Srivastava. One of our focus stories, of course, remains the resignation of Lalan Singh as the JDU chief. All eyes are going to be on the press conference that would take place at 5 p.m. Let's begin first with the top headlines this afternoon. Lalan Singh resigns as JDU chief. Nitish Kumar to take over as the next chief. Massive breakthrough after 12 years of negotiation as government strikes big success on Ulfa peace deal. Historic Centre Ulfa peace deal to take shape today. Probe reveals both suspects took auto from Jamia University in Israeli embassy case. CCTV footage being examined. Cracks widen in India alliance over Prime Minister face. Now Sadharan pitches for Rahul Gandhi as Prime Minister face, even as AAP and TMC bat for Kharge. State set for the Grand Ram Mandir unveiling. Prime Minister Modi to visit Ayodhya today to launch projects worth more than 11,000 crore rupees. Amid buzz over major bureaucratic reshuffle, Prime Minister Modi to preside over Chief Secretaries meet in the national capital. In fact, we begin this edition with the latest that's coming in on the Ram Mandir unveiling. The idol of Ram Lalla has been finalized. In fact, the decision has been taken at the Temple Trust meet, which we understand has just concluded. A big decision that has now been taken with regard to the Ram idol, Lord Ram idol, beg your pardon. We will try and get more details and go across to Priyanka as well, who's been in Ayodhya since morning. But note that this decision was taken at a key trust meeting, which has just concluded. In fact, let's go across to Priyanka, who's joining us live right now. Priyanka, a big decision, of course, but take us through the deeper, in fact, more details on this idol that's been finalized by the trust members. Well, absolutely, Samiksha. We, of course, had been tracking the entire meeting. And the decision, in fact, the final decision will be taken by tonight is what we've been given to understand. But as of now, the meeting has concluded and there has been a verbal vote that has been taken of all of the trustees and all of the members, in fact, who had been present there. And as we had been pointing out, the kind of decisions that they had to take with respect to the idol were that of the sculptors who had made the idol out of black marble and white marble. So that was one point of discussion that had also transpired in the meeting to understand which kind of idol would be the best suited and, that idol that would also meet all of the criteria that had been set by the trustees as well. Apart from that, we had also seen that there was in fact a lot of discussion over the entire logistics of the Ram temple, because we are being told that on 23rd of January, from 23rd of January, the devotees will be coming into the temple to do their darshans. And as if we look at the entire visuals of how the Ram Mandir is being built, they need to also make sure that if hundreds and thousands of devotees are coming there, how the movement of the devotees can also take place without creating a lot of chaos. So all of these things had been discussed in the meeting, and in fact, from the smallest parts of where the
donation box are going to be kept, how the prasad is going to be distributed. All of these things have also been taken into consideration because they are also deciding and making plans for 23rd of January as well. Now, apart from that, there are also rituals that were being discussed in the entire meeting as to what rituals and customs will be followed by this particular temple from 16th of January. After the Pran Pratishtha ceremony, in fact, will also take place from 16th to 22nd of January as to how the rituals will take place in the entire temple. But of course, the big decision that is being taken today, the votes that will be finalized on and the decision that will be also made public as to how this idol had been selected will take place by tonight, because all the trust members had gotten together and there was a verbal discussion on it. However, this is not a formal vote that had been taken, but we are being told that by tonight is when they will be zeroing in on it, because let us also not forget that the UP Chief Minister Yogi Adityanath in fact is also en route to Ayodhya. He will be taking stock of the entire situation, of the developmental projects here. He'll be going to the airport, he'll be going to the railway station. So all of those updates are also going to take place, and then he will be meeting with the trust members as well. So by perhaps tonight they will be making a decision, but the unveiling of the idol will only take place perhaps 3 to 4 days prior to 22nd of January, because that is when the Muhurat has also been decided for. About 3:45 a.m. Is the Muhurat that has also been zeroed in on. Around 17th to 18th of January is what we're being given to understand. So before that, nobody will be able to see the idols. But of course, we also know how the unveiling of the idol will take place and how in the Sanctum Sanctorum, the Prime Minister, the UP Governor Anandiben Patel, Yogi Adityanath, Mohan Bhagwat and the chief priests are going to be present inside of the Sanctum Sanctorum when the idol will be unveiled. And we have seen how the entire long process of selection of the idol has also taken place for over 6 to 7 months. That the sketches that had been also looked at, they had been scrutinized to understand which kind of idol would be the best suited for this temple, post which they had been given to the sculptors, and the 3 sculptors had then made those idols, as I pointed out earlier, out of the black and white marble. So another such discussion that had taken place over this selection of the idol today. Perhaps by tonight we will have an answer as to which idol has also been selected by the trustees. Samiksha. Right. Priyanka, thank you for the moment. So Ram idol has been finalized by the trust members. In fact, talking about the other part of it, this is in relation to the politics that continues. In fact, a lot of the opposition leaders having said that they are going to be boycotting the ceremony that would take place on the 22nd. Listen in to those political reactions coming in as well. फैसला है नाम रखने में, भागीदारी वाल्मीकि समाज को कहाँ दिया है, वो कहीं नहीं है। तो इस तरह की सरकार तो चली रही है कि नाम करके खुश कर देना, जुमलों से खुश कर देना, झूठ बोल करके खुश कर देना, आत्ममुग्ध जनता को आत्ममुग्ध करने वाली बात से खुश कर देना या उनको गदगद कर देना, लेकिन रोजगार दें तब तो, नौकरी दें तब तो, और डेमोक्रेसी का सम्मान करें, वो सब कुछ तो है नहीं। तो जैसे नाम बदलते हैं तो उसका भी प्रचार करते हैं, नाम रखते हैं तो उसका भी प्रचार करते हैं, लेकिन समाज को, देश को, उस कम्युनिटी को क्या मिल रहा है? देखिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम लगातार कहते हैं कि जो काम बीजेपी की सरकारें करती हैं अपनी पसंद के नाम रख सकती हैं, लेकिन जो सड़कें, जो एयरपोर्ट्स, जो म्यूज़ियम दूसरी सरकारों ने बनाए हैं उनके नाम बदलने का उनको कोई हक नहीं है। वो शहरों के नाम बदलते हैं, सड़कों के नाम बदलते हैं, नेहरू म्यूज़ियम का नाम उन्होंने बदला है। जिन चीज़ों से उनका कोई वास्ता नहीं है उनके नाम उन्हें हरगिज़ नहीं बदलने चाहिए। नई सरकार आएगी वो उनके नामों को बदल देगी। इसलिए जो एयरपोर्ट उन्होंने बनाया उस पर जो नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। All right, here's a look at news in brief from across the country as the country awaits the grand inauguration of the Ram Mandir. On the 22nd, highway walls near Ayodhya Airport are being painted and
women workers are seen polishing the stones to be used in the Ram Mandir. Meanwhile, Prime Minister Modi is scheduled to conduct a roadshow in Ayodhya tomorrow. The Prime Minister will be inaugurating Ayodhya Airport as well as the redeveloped railway station in Ayodhya, followed by a roadshow that would stretch to 15 kilometers. With just a few days to go for the Republic Day celebrations, parade rehearsals have been underway at the India Gate. French President Emmanuel Macron to be the chief guest at Republic Day celebrations. Delhi police conducted a security drill in East Delhi in preparation for New Year and Republic Day. The mock exercise involved various teams including the Delhi Fire Services, Traffic Police, Bomb Squad, Dog Squad as well as SWAT commandos. DMDK Chief Vijay Kant's mortal remains have been brought to Anna Sarai region for public homage. The mortal remains would later be taken to the office for the last rites. Protesters raised black flags against Kerala Governor Arif Muhammad Khan near a Thiruvananthapuram General Hospital. The police have even detained the protesters involved in the incident. Meanwhile, count of COVID cases have been on the rise in recent weeks, with 9 states and union territories confirming the existence of JN.1 sub-variant. Kerala reported 78 cases of new variant, positioning the state with the highest count of active cases of JN.1. And in more news break coming in, this one in relation to the 2024 battle. This is a source-based information from the Congress that the party would start formal conversations on seat sharing with India bloc, with the opposition bloc partners from the first week of January. So hectic parleys are expected in the coming days over seat sharing formula. But important to note here that there have been a spate of meetings of opposition bloc that have happened over the past few weeks. But there's been no conclusion of sorts when it comes to seat sharing formula. And this is, of course, a development on that front. Sources in the Congress say that the meetings that would take place in January first week would revolve around seat sharing formula among the opposition parties. So, meetings expected in the first week of January. Congress will helm these conversations as per sources on seat sharing with Indie bloc partners starting first week of January. So, it's going to be the Congress that would be taking the lead when it comes to discussions regarding the seat sharing formula among the opposition leaders. Source-based information, of course, from the Congress. More details are awaited, but remains to be seen what really comes out of this meeting that is slated for first week of January. And shifting focus to the latest from J&K, where drone dropping has emerged as one of the major concerns for the BSF. Since 2020, and special equipments have now been installed for thwarting the drone threats. In fact, a 360-degree vigil is now being kept by the BSF Jawans equipped with light machine guns as well as other equipments to guard at the border areas. Gursimran gets us this report from Jammu's Aknoor sector. The threat that emerged in 2020 is now turning to be one of the most challenging threats along the international border. The drone threat by the Pakistani side. It was in 2020 when it came into being, when a drone was brought down by the BSF in the Kathua area of Jammu. And since then,
the drone has become a menace. If we speak of the present year, in Jammu region and in Punjab, there have been more than 120 drones that have been brought down by the border security forces, which shows the intensity with which Pakistan is smuggling arms and ammunition as well as narcotics into the Indian territory. And to thwart the attempt of Pakistan, these troops of the BSF, they have developed a localized system to thwart the attempt of the drone. Based on this poll, this is the LMG that can give the enemy's drone a shot at. And also equipped with the Breta and INSAS, these troops of the BSF have been deployed on almost every post of the border security force. Heading into a very short break, coming up on the other side, amid buzz over major bureaucratic reshuffle, Prime Minister Modi to preside over Chief Secretary's meet in the national capital. And cracks widen in opposition bloc over PM face. Sadharan now pitches Rahul as the Prime Minister face. CSMT-Amritsar, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. Gujarat, the land of future-ready mega projects. Since 2003, the vibrant Gujarat Global Summit has played a pivotal role in enabling several iconic infrastructure initiatives in the state. From Gift City and Dream City to ambitious projects like Dholera SIR, MBSIR, DMIC, High Speed Rail and PCPIR, Gujarat's mega projects showcase its unwavering commitment to pioneering purpose-built infrastructure to enable 24/7 growth. With future-ready infrastructure, Gujarat has positioned itself as a premier investment hub, propelling India towards achieving the vision of Vikasit Bharat at 2047. Be a part of Gujarat's plug-and-play mega project ecosystem at Vibrant Gujarat Global Summit 2024, Gateway to the Future. हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। सब जांचा है, परखा है, समझा है, इसलिए मेरे समझदारी का नाम इंट्रा है।
टाटा की नई इंट्रा V20 पिकअप है इंडिया की पहली बाय फ्यूल पिकअप जो दे आपको बढ़िया ड्राइवेबिलिटी, सुपीरियर ड्राइविंग कंफर्ट, ज्यादा लोडेबिलिटी, सबसे ज्यादा माइलेज, जो दे सबसे ज्यादा रेंज। टाटा इंट्रा V20 पिकअप, सब कुछ उठाए, हर दिन जिताए। પાછા જઈએ 2000 માં પાછા જઈએ 23 વર્ષ પાછળ જઈએ તો સુરેન્દ્રનગર માટે આ સ્વપ્ન હતું એ સ્વપ્ન આજે સાકાર થયું છે હું હરદેવસિંહભાઈને હૃદયપૂર્વક બહુ શુભકામનાઓ અને અભિનંદન આપવા માંગુ છું 1960 થી આ બેંક બની અને ગુજરાતમાં સૌથી વધુ દુકાળ પડવાવાળું આ ક્ષેત્ર હતું All right, moving on to a lead that's now coming in the Israel Embassy blast probe. The NSG would be giving seal blast sample report to the Delhi police in explosion near the Indian Embassy case. Now, top officials in the NSG's bomb squad team say that this report has been kept highly sensitive and a seal report would be handed over to the Delhi police itself. So, another lead coming in as far as the probe into the embassy incident is concerned. The NSG will now be submitting sealed incident sample report to the Delhi police personnel. So the NSG that would be submitting the sealed blast sample report to the Delhi police in the explosion case related to the Israel embassy in the national capital. In fact, top officials in the NSG's bomb squad team say that this report has been kept highly sensitive and a sealed report shall be handed over to the Delhi police itself. So, yet another lead in this case. Also note that 2 suspects have already been identified by the Delhi police personnel in relation to the Israel embassy blast case. All right, here's a look at news in brief from across the country. Indian Navy has proudly unveiled the new design of Admiral's epaulets showcasing the nation's maritime legacy. The unveiling symbolizes Indian Navy's pride in its heritage and innovation. Millions of visitors are anticipating a visit to Ayodhya after its inauguration on the 22nd. On transport facilities for the visitors, UP Transport Minister said that the department would conduct a bus depot to provide airport-like facilities with VIP lounges in Ayodhya. Ahead of Ayodhya Airport inauguration, Union Minister for Civil Aviation Jyotiraditya Scindia said that Ayodhya Airport aims to facilitate convenient visits for a significant number of tourists to the Ayodhya Ram Temple. यूनाइटेड का अपना मामला है, वहाँ की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम आज भी तैयार हैं कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर चुनाव लड़े, दोनों को हराने का काम। जेडीयू में जो खुल के सामने आ गया है सर। देखिए, नेता तो सिर्फ एक ही है, नीतीश कुमार, वहाँ दूसरे और तो है नहीं। तो नीतीश कुमार जी कभी आरसीपी जी को अध्यक्ष बनाए, कभी ललन जी को अध्यक्ष बनाए, कभी और किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, ये उनका दायित्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम पूरे महागठबंधन और इंडी गठबंधन के लोगों को हराने के लिए तैयार हैं।
fall due to hard weather condition, but these troops of the BSF are ensuring that any attempt of the adversary is foiled, no matter how challenging the weather conditions or the attempts from the adversary are. There have been frequent attempts by the Pakistan to push in terrorists into the Indian territory, but the allied troops of the BSF have foiled all the nefarious designs. If you look at the weather conditions, it's completely packed due to the fog that has prevailed in the area very close to the Chenab River. But these troops of the BSF, they are keeping a strict eye on each and every development that is taking place from across the border, because on the left side is the Pakistan that always mounts troubles for the security forces, and that's why they are carrying out the searches in the area, the ground patrol, and all this ensures that any attempt of the adversary can be foiled well within the time. Important to mention that this stretch that is very close to the line of control has always been prone to the activities of Pakistan. Look at news in brief. Prime Minister Modi set to inaugurate multiple development initiatives valued at over 11,000 crore rupees in Ayodhya. The range of projects aimed at boosting Ayodhya's development and infrastructure include airport and a redeveloped railway station. Prime Minister Modi is scheduled to conduct a roadshow in Ayodhya tomorrow. After inaugurating the airport, Prime Minister Modi will be holding a 15-kilometer roadshow as well. Prime Minister Modi will be unveiling a newly built Ayodhya airport tomorrow as well. Ahead of its inauguration, paintings depicting Lord Ram and Goddess Sita have also been painted on the highway wall near Ayodhya airport. Ayodhya Dham Junction is being illuminated in preparation for Prime Minister's visit tomorrow. The Prime Minister will inaugurate Ayodhya Dham Junction and flag off new Amrit Bharat train and 6 new Vande Bharat trains as well. Ahead of the consecration ceremony of Ayodhya Ram Temple, 2,100 women performed a puja said to be a ritual believed to bring auspiciousness before commencing any significant endeavor. To enhance the look of Ayodhya Ram Temple's aesthetics, women workers were seen polishing stones designated for temple's construction, contributing to its beautification efforts. And tracks widen in India alliance over PM face. Now Sadharan pitches for Rahul as Prime Minister face. Stage set for the Grand Ram Mandir unveiling. Prime Minister Modi to visit Ayodhya tomorrow to launch projects. There's a reason why over 200 new age companies scout for talent from our campuses. It's because we've future-proofed our courses with a higher technological baseline, with a thrust on specialized industry skills and tech innovation skills. The Amrita School of Engineering. Tomorrow's engineering today. Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. गोल का स्टाइलिश पंखा सिर्फ हवा ही नहीं देता, आपके आलीशान घर के कोने-कोने में ठंडी हवा के झोंके पहुंचाता है। कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर को सुंदर बनाएं। 5 स्टार BLDC कूल फैन से बिजली भी बचाएं। समय आ गया है घर के पंखे बदलने का और कूल फैंस घर लाने का। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में
दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। As Vallabhbhai Patel passed away, Nehru could not tolerate his cabinet colleague K.M. Munshi taking part in the Somnath temple reconstruction. So I think Nehru, in the name of secularism, wanted India to detach itself from its Hindu roots. Jawaharlal Nehru's tolerance of Hinduism vanished after Sardar Patel. He politically tolerated Hinduism, and he was, according to me, a fake secularist who did not want Hinduism in India. Everything related to the Hindus, he only scorned. Top headlines tracking right now, viewers. Lalan Singh resigns as JDO chief. Nitish to take over as the next chief. Massive breakthrough after 12 years of negotiations as government strikes big success on Ulfa peace deal. Historic center Ulfa peace deal to take shape today will end 4-decade-long insurgency. Probe reveals both suspects took auto from Jammu University. CCTV footage being scanned. Cracks widen in India, lines over PM phase now. Sadharan pitches for Rahul as PM phase, even as Aam Aadmi Party and TMC bat for Kharge. Stage set for the Grand Ram Mandir unveiling. The PM to visit Ayodhya tomorrow to launch projects worth rupees 11,000 crores. Amid buzz over major bureaucratic reshuffle, PM to preside over chief secretaries meet in the capital. Viewers, we are live and breaking
breaking. I'm Shivangi Shukla getting you the latest. Bihar CM Nitish Kumar became the new president of the Janata Dal president. And in fact, this is happening after Rajiv Ranjan Singh, alias Lalan Singh, resigned from the post. Nitish Kumar was elected to the top party post at the JDU's two-day National Executive meeting in Delhi. Minutes before he was named the new JDU chief, Lalan Singh stepped down and proposed Kumar as president. Here are a few reactions on the developments in the Bihar cabinet. Listen in, and we also are tracking the story very closely. Let's play out the reactions first. अरे धूप चलिए आज बैठक में अरे वहाँ चलिए ना धूप में चलिए हम भी थे वहाँ जब उन्होंने प्रस्ताव दिया था। तो नीतीश कुमार कब कार्यभार संभालेंगे? राष्ट्रीय कुमार जी ने स्वीकार कर लिया तो ये कहा जाए कि आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नीतीश कुमार है। अभी तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। और विजय जी, कारण क्या रहे ललन सिंह के इस्तीफे देने? ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। विजय जी, नाराजगी की बात थी ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों के बीच में, क्या वो एक मुख्य वजह रही ललन सिंह के इस्तीफे की? किस चीज की? ललन सिंह के इस्तीफे की मुख्य वजह क्या दोनों के बीच में जो नाराजगी है वो भी एक मुख्य वजह रही? नाराजगी? बिल्कुल। इतना नया शब्द आप कहाँ से ला रही है? ये इस शब्द का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। महेश्वर हजारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी स्पीकर महेश्वर जी। एक बात जो आज जो बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ है वो ये हुआ है कि ललन सिंह का इस्तीफा और साथ ही साथ नीतीश कुमार का नाम जो प्रपोज किया ललन सिंह ने, तो आप लोग बताइए कि पहले से ही ये तय था कि ललन सिंह अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं? नहीं, पहले से तय नहीं था, चूँकि आदरणीय नेता ललन बाबू ने उन्होंने जाहिर की, चूँकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे बहुत व्यस्तता है और पार्टी के संगठन पूरे देश में खड़ा करना है, उसमें मैं पूरी समय नहीं दे पाऊंगा। इसलिए सम्मानित नेता नीतीश कुमार जी से आग्रह किए जो आप स्वयं इसको संभालने का काम कीजिए और कर्तव्य ध्वनि से सभी ने स्वागत किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उसे स्वीकार भी करने का किया। अभी नेशनल काउंसिल की बैठक हुई, उसमें मुहर लग जाएगी। एक और बात महेश्वर जी, एक बात लगातार कही जा रही है कि अब बीजेपी भी ये बात खुल करके कह रही है कि जो नज़दीकियां थी ललन सिंह की आरजेडी से, वो एक मुख्य कारण रहा क्योंकि नीतीश कुमार नाराज थे इस बात से, उनकी बढ़ती नज़दीकियां आरजेडी से, और वो एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से ललन सिंह के इस्तीफे की भी चर्चा सुखबुगाहट पटना से लेकर दिल्ली तक काफ़ी दिनों से थी। नहीं, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कोई हमारा शीर्ष नेतृत्व न बोला है, न हम लोगों को कोई भी MP MLA बोला है, यह सिर्फ मीडिया की उपज थी। हम लोग कहीं कोई नहीं थी। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और ललन बाबू में दोनों में इतनी मित्रता है, और जो पार्टी का फाउंडर मेंबर है दोनों आदमी, पार्टी के बनाने में, पार्टी के बढ़ाने में आदरणीय ललन बाबू की बहुत ही बढ़ चढ़ की हिस्सा रही है, इसलिए ललन बाबू पर कोई शंका नहीं कर सकता है। आज से ही नीतीश कुमार अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष? नेशनल काउंसिल की बैठक होगी, उसमें मुहर लग जाएगी, उसके बाद संभालेंगे। एक और बात, नाराजगी की वजह क्या ये भी थी क्योंकि ललन सिंह को एक मुख्य भूमिका दी गई थी ये कन्वे करने के लिए कि नीतीश कुमार की मंशा है कि वो PM चेहरा हो, वो नेशनल कन्वीनर हो अपोजिशन ब्लॉक का, लेकिन ललन सिंह शुरू से ही कन्वे नहीं कर पाए, ये भी एक वजह बताई जा रही थी। सब कुछ नहीं, ललन बाबू ने ईमानदारी से पार्टी के संगठन बढ़ाने का काम किया, पार्टी की मेहनत करने का काम किया, और चूँकि यह तो प्रक्रिया होती है, प्रत्येक वर्ष बैठक का 2 वर्ष हो चुका था, इसलिए आदरणीय ललन बाबू ने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को कहा कि आप संभालने का काम कीजिए, क्योंकि मैं चुनाव में व्यस्त रहूंगा। तो JDU के लीडर्स खुश हैं नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से, क्योंकि 2020 के बाद अब वो कमान संभालेंगे तो उनकी नेशनल एम्बिशन क्या खत्म हो जाएगी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाएंगे? वो सारे के सारे लोग खुश हैं, जितने भी हमारे नेशनल काउंसिल के मेंबर है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सारे लोग खुश हैं। निवेश जी, एक सवाल बस लेना चाहूंगी, आज जो फैसला हुआ ललन सिंह ने अपना इस्तीफा सौंपा और नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रपोजल दिया, क्या इसकी सुखबुगाहट, इसकी चर्चा क्या कल ही हो चुकी थी, तमाम चीजें पहले ही तय थी? अगर आपको नहीं मालूम था कि कल क्या क्या हुआ था, तो हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? हाउ विल वी कम टू नो? वी हैव कम दिस मॉर्निंग, यू आर हियर इन दिल्ली सिंस लॉन्ग, सो यू मस्ट बी हैविंग मोर इन्फॉर्मेशन as to what was to happen. But there
There was already reports of Lallan Singh quitting from his designation as national president, and it was already iterated also that all these things will formally be announced in the national executive meeting. Could we say that the people, the veterans inside JDU already knew about it? Well, it was in the air. Definitely it was there in the air. And he had himself announced, Honorable Rajiv Ranjan Singh, Lallan Singh had himself announced that he wants to contest elections. He wants to go there in the field and work in his constituency. And that's why he wants to quit the post. But no fire is without the smoke. No smoke is without the fire, Deveji, you already know. And all the ongoing rift news was also because of close proximity of Lallan Singh with RJD leaders. And it was one of the reasons because of the growing rift. No, absolutely not. That's a rumor, I would say. That's not a very proper rumor to be spread around. We are in the government with the RJD. Where's the question of proximity? JDU is in the government with the RJD. So where's the question of proximity? The whole the complete JDU is in close proximity with the RJD as long as the government is there. It will always be there. Continuously is iterating that Lallan Singh is the man because of whom the alliance between BJP and JDU couldn't work, and the alliance between RJD and JDU was because of Lallan Singh only. All rumors spread by you people. Nitish Kumar, when he will formally take up the charge? Well, he has already accepted it. He has already accepted it. He's already become the president. Well, yes, I'm joined by Lallan Saraf, who's an MLC in the Bihar Vidhan Parishad and a very, very close confidant of Nitish Kumar. Nitish Kumar trusts him a lot. In fact, he is the eyes and ears of Nitish Kumar. Lallan Saraf जी, आप मीटिंग में मौजूद थे. क्या-क्या बातें हुई? हम लोग तो पहले से बता ही रहे थे कि ललन जी जा रहे हैं, नीतीश जी आ रहे हैं. देखिए, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इच्छा व्यक्त की गई है. उसकी संपुष्टि नेशनल काउंसिल की बैठक में होनी है. तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि इस पद से मैं मुक्त होना चाहता हूं और आप इस पद को संभालिए. तो मेरा ये मानना है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए और इंडिया गठबंधन का जो धुरी बन के उभरे हैं नीतीश कुमार जी, ये बहुत ही आवश्यक था और ये ससमय सही फैसला है. इससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा. नीतीश जी ने एक्सेप्ट कर लिया प्रेसिडेंटशिप का पोस्ट और क्या कहा? नीतीश कुमार जी का कहना था कि बहुत ही मुझ पर प्रेशर पड़ा और चूंकि इन्हें चुनाव भी लड़ना है तो मैंने स्वीकार कर लिया है, मैंने अपनी सहमति दे दी है और यदि राष्ट्रीय परिषद की संपुष्टि हो गई तो मैं इस पद को संभालूंगा. लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं लोगों को कार्यभार दूंगा, अलग अलग कार्यभार दूंगा और सबको काम करना पड़ेगा और सबने काम करने की सहमति दी है. और क्या वर्किंग प्रेसिडेंट ये सब भी बनाए जाएंगे डिसेंट्रलाइज? ऐसी कोई नहीं है. काम वो बांटेंगे, लोगों को अलग अलग काम देंगे. और सबसे बड़ी बात कि ललन सराफ जी, ललन सिंह का 2 महीने पहले चुनाव के हटना ये अनायास नहीं है. ये एक तरीके से देखा जाए तो राजनीति में गलियारे में बात चल रही थी कि लालू जी से क्लोज हो गए, पार्टी के विधायक टूट रहे हैं, जैसे आरसीपी सिंह पर आरोप लगा था. तो क्या आपको लगता है कि बिहार में नया पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ये जो भी बातें आई है, आप जानते हैं कि भाजपा जो मिथ्या और भ्रामक दुष्प्रचार करती है, मुझे उसी का ये नतीजा लगता है. ललन सिंह जी का अपना चुनाव है और उसके साथ ही साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को. हमारे 25 प्रदेश में संगठन है, 25 प्रदेशों में जाना और हर जगह चुनाव का काम करना और खुद चुनाव लड़ना, यही कारण होगा कि उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर करके और नीतीश कुमार जी विधायक आपके एकजुट रहेंगे हर हालत में नीतीश कुमार जी के साथ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सबके सब विधायक एकजुट हैं और विपक्ष के विधायक भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का नेतृत्व बना रहे. 2017 में भी आप लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे और अचानक खिड़की दरवाजा खुल गया और डिनर आयोजन हो गया. बीजेपी के बड़े नेताओं को हवा भी नहीं थी बिहार में, ऊपर से आदेश आया, सारे विधायक सीएम हाउस में घुस गए. तो क्या उसी तरह की पटकथा फिर से लिखी जा रही है क्या? 2020 से जो भाजपा ने हमारे नेता के साथ किया है, तो अब इसकी कोई संभावना नहीं, दूर दूर तक कोई संभावना. 2020 से कई मॉडल, आप भी जानते हैं, कई मॉडल छुटभइयों से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना कि क्षेत्रीय दल खत्म कर दिए जाएंगे. तो इस तरह की जितनी बातें
भाजपा ने की है। हमारे विधायकों को मणिपुर में तोड़ना, नॉर्थ ईस्ट में, जब क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बन जाते, ऐसी ऐसी बातें वो की है जो भाजपा जैसे नेशनल पार्टी को शोभा नहीं देता है और सही नहीं है। भाजपा से मोह भंग हो गया। भाजपा मुक्त भारत चाहिए। लेकिन आपके जेडीयू का तो एक मजबूत धड़ा चाहता है कि भाजपा के साथ फिर से मिल जाए, लालू जी के साथ नहीं रहना चाहते। ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती है। लल्लन सिंह के इस्तीफे को लेकर के कल आपने एक बात कही थी कि ऑफिस बियरर्स की कैपेसिटी में नहीं है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो होगा वो देखा जाएगा। आज इस्तीफा हो गया है तो ये माना जाए कि तमाम चीजें पहले से तय थी जो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो कुछ भी होगा वो राष्ट्रीय परिषद के बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन जो प्रपोजल रखा लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का जो प्रपोजल दिया, कहा जा रहा है नीतीश कुमार ने उसको स्वीकार भी कर लिया। सब परिषद में होगा, अभी नहीं कुछ भी। तो ये नेशनल काउंसिल की बैठक में ये माना जाए कि जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है फाक जी, वो फॉर्मल अनाउंसमेंट हो, ऐसे फैसले होंगे वो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होंगे। तो बतौर जेडीयू नेता आप खुश हैं कि नहीं कि नीतीश कुमार दोबारा अपना कार्यभार संभालेंगे? कभी नाराज ही नहीं थे, खुश होने की क्या बात। लेकिन लल्लन सिंह जी से तो काफी सारे लोग नाराज थे, काफी सारे जेडीयू नेता नाराज नहीं था। ये आप कह रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब लोग खुश थे और सब खुश हैं और आगे भी खुश रहेंगे। कह रही थी कुछ भी ठीक नहीं है गठबंधन। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उससे हमको कोई बहस नहीं। हमारे पार्टी में कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, दल का कोई आदमी, सब लोग खुश थे, सब एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। कहीं कोई बात नहीं है। माना जाए कि आज से नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं माना जाए। राष्ट्रीय परिषद के बाद इसको तय किया जाएगा। कह रहे हैं लल्लन सिंह जी कि हम इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं कि चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ना है तो व्यस्तता ज़्यादा होगी, इस कारण से। देखिए, कई पार्टी और होगी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और चुनाव भी लड़ते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते और तब चुनाव लड़ते तो कोई विदेश में थोड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाकर काम करना पड़ता है कि अपने क्षेत्र में समय नहीं दे पाते। यह तो बिल्कुल फालतू की बातें हैं ना। जो अंदर की बात है, जो बाहर भी उस तरह की चर्चा आ रही थी, इनका आरजेडी के साथ अधिक नज़दीक का रिश्ता होना, इससे जेडीयू को खतरा महसूस हो रहा था, इस कारण से ऐसा हुआ है। यूनाइटेड का अपना मामला है, वहां की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम आज भी तैयार हैं कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर चुनाव लड़े, दोनों को हराने का काम है। जेडीयू में जो खुल के सामने आ गया है सर। देखिए, नेता तो सिर्फ एक ही है, नीतीश कुमार, वहां दूसरे और तो है नहीं। तो नीतीश कुमार जी कभी आरसीपी जी को अध्यक्ष बनाए, कभी ललन जी को अध्यक्ष बनाए, कभी और किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, ये उनका दायित्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम पूरे महागठबंधन और इंडी गठबंधन के लोगों को हराने के लिए तैयार हैं। Indian Navy proudly unveils a new design of admirals, and they are showcasing the nation's maritime legacy. Now, this unveiling is symbolizing the Indian Navy's pride in its heritage and innovation. Millions of visitors are anticipating to visit Ayodhya after its inauguration. On transport facilities for the visitors, Uttar Pradesh Transport Minister said that department will construct a bus depot to provide airport-like facilities with VIP lounges in Ayodhya. Ahead of the Ayodhya Airport inauguration, the Union Minister for Civil Aviation, Jyotiraditya Scindia, said that the Ayodhya Airport aims to facilitate convenient visits for a significant number of tourists to the Ayodhya Ram Temple. Several parts of Delhi-NCR enveloped in dense fog today morning. The IMD has issued red alert and urged people not to venture out their vehicles between 4 a.m. and 10 a.m. because of the reduced visibility across the state. External Affairs Minister S. Jaishankar said that the bond between India and Russia holds a deeper significance. He said that India and Russia are always trying to find new linkages, common points, and the intellectual world can make a difference.
The Gujarat BJP meet is underway in Gandhinagar ahead of the 2024 Lok Sabha polls. Gujarat CM Bhupendra Patel chairs the executive meet with other top leaders to discuss the poll strategy. Drone dropping has emerged. One of the major concerns for the BSF since 2020, and special equipment have been installed for thwarting the drone threats. A 360-degree vigil is being kept by BSF troops equipped with light machine guns. And this is happening as Gursimran gets this report from Jammu's Akhnur sector. The threat that emerged in 2020 is now turning to be one of the most challenging threats along the international border. The drone threat by the Pakistani side. It was in 2020 when it came into being, when a drone was brought down by the BSF in the Kathua area of Jammu. And since then, the drone has become a menace. If we speak of the present year, in Jammu region and in Punjab, there have been more than 120 drones that have been brought down by the border security forces, which shows the intensity with which Pakistan is smuggling arms and ammunition as well as narcotics into the Indian territory. And to thwart the attempt of Pakistan, these troops of the BSF, they have developed a localized system to thwart the attempt of the drone. Based on this poll, this is the LMG that can give the enemy's drone a shot at. And also equipped with the Breta and INSAS, these troops of the BSF have been deployed on almost every post of the border security force. Temple Town Ayodhya is being decked up with flowers, lights and sculptures to give it a divine look ahead of the Prime Minister Modi's visit that is scheduled to take place tomorrow, December 30th, to inaugurate an international airport and the redeveloped Ayodhya railway station. Here's more. 4 hours to go for the Prime Minister to arrive in Ayodhya, where he will be inaugurating thousands of crores worth of project and dedicating them to the nation. But this, of course, also requires a lot of security arrangement, and you can see how right behind me there have been several police officers that have been deployed, and in fact this is across the city of Ayodhya that this kind of a bandobast is in place, especially keeping in mind that the Yogi Adityanath, the Chief Minister for Uttar Pradesh, is going to be arriving here, taking a stock of the entire situation, carrying out review meetings as well, right before the Prime Minister's arrival in Ayodhya as well. In fact, police officers from across the state have been deployed in the city of Ayodhya. We also see RPF as well that has been deployed along the route in this particular national highway on the entrance of Ayodhya as well. And that essentially helps us understand the kind of security that is in place, because it is not just one rally. There is going to be a huge road show that the Prime Minister is going to be also carrying out. Keeping that in mind, the security is in place. In fact, this is the entire Dharm Path that we also get to see, where in fact the police has been deployed. The police has been kept and making sure that each and every vehicle that is passing by from that particular place and that particular point is also being checked. And that's how the security is in place, just less than 24 hours for the Prime Minister to arrive in Ayodhya. With video journalist Vipin Mori, I'm Priyanka Sharma for Republic. Special rituals will be performed from 14th to 22nd January. The festivities will include the Amrit Mahotsav and a 1008 Hundi Mahayagya, culminating in the consecration ceremony on Jan 22nd. A procession featuring 100 idols of Lord Ram is set to take place on Jan 17, adding to the spiritual fervor. Take a look at this report. मेरी झोपड़ी के भागा जाग जाएंगे, राम आएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे.
elaborate arrangements have been made for Amrit Mahotsav. तो आपको बता दें कि इंतजार 22 तारीख का है जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन आपको बताएं उससे पहले किस तरीके की तैयारियां अयोध्या नगरी में देखने को मिल रही हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त एक ऐसी जगह पर है जहां पर 14 तारीख से उत्सव की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि अमृत उत्सव यहां मनाया जाएगा, जो कि राम भद्राचार्य जी के द्वारा यहां आपको बता दें कि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में अनुष्ठान किए जाएंगे और इसी के साथ में कई ऐसे कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए हैं। The ritual will be conducted by Jagat Guru Ram Bhadracharya. क्या तैयारी है यहाँ पर, किस तरीके से कितनी यज्ञशालाएं बनाई गई हैं, कैसे कैसे ये अनुष्ठान होगा? ये तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अष्टोत्तर सहस्र यानी 1008 कुंडीय श्री हनुमान महायज्ञ होगा और 14 जनवरी को महाराज श्री जगत गुरु जी का जन्म दिवस है। उस दिन से यह कार्यक्रम शुरू होगा 14 जनवरी से 22 जनवरी पर्यंत। और इस यज्ञ के आचार्य हमारे गुरुदेव राजस्थान से डॉक्टर बालकृष्ण जी कौशिक होंगे और यज्ञशाला की अभी तैयारियां चल रही है। कुंड निर्माण हो चुके हैं, लेकिन जो शेष तैयारी है वो पूर्ण हो रही है, अभी जारी है। और ये अनुष्ठान जो है इसमें 1008 जोड़े भी बैठेंगे? बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि 14 तारीख से शुरू होकर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही इसका समापन होगा। 22 जनवरी को ही इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। आपको ये तस्वीर देखने को मिल जाएगी कि अभी जो यज्ञशालाएं हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। इसी यज्ञशाला में हवन होते हुए यहाँ पर नजर आएगा और जिसमें 1008 जोड़े यहाँ पर बैठेंगे और 1008 ही जो यज्ञशालाएं हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। तो आप देखिए कि प्रभु राम के आगमन को लेकर, मंदिर निर्माण को लेकर किस तरीके का उत्सव आपको अयोध्या नगरी में देखने को मिलेगा। जगह जगह इसी तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर होंगे और राम भद्राचार्य जी का जन्म दिवस है 14 तारीख को और उसी शुभ दिन से शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी अमृत उत्सव की, जो कि मनाया जाएगा, जिसमें बड़े गणमान्य लोग भी यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं जो पहुंचेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए जो 14 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक एक बड़ा उत्सव आपको अयोध्या नगरी में देखने को मिलेगा। साथ में आपको ये भी बता दें कि लगभग 1008 हवन कुंड बनाए गए हैं जिसमें सीधे तौर पर अनुष्ठान को संपूर्ण किया जाएगा। वो कुंड भी हम आपको दिखाएंगे, लेकर चलेंगे और यहाँ पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो भी होने वाले हैं। पीछे भी एक बार संतोष आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मंच अभी तैयार हो रहा है, सजाया जा रहा है और अभी तैयारी यहाँ लगातार जारी है। From special rituals to cultural programs such as Ram Katha will be conducted in the build-up to the Pran Pratishtha. Bureau Report, Republic TV. Massive breakthrough after 12 years of negotiation as government strikes big success on Ulfa peace deal. Historic center Ulfa peace deal to take shape today will end 4-decade-long insurgency. Amid buzz over major bureaucratic reshuffle, PM to preside over chief secretaries meet in the capital. Narasimha Rao, when he was Prime Minister, kept referring to the disputed structure as a mosque. So was that also an attempt to instigate? See, it was always referred to as the disputed structure. It was never referred to as mosque. Till Narasimha Rao said there is a mosque. And then this whole clash of temple versus mosque was built. Muslims versus Hindu was built. Secularism versus nationalism was built. QSMT, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद
देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। टाइल्स जो भी हो, लगाने के लिए MI के लेटिक्रीट टाइल एडेसिव, MI के लेटिक्रीट टाइल एडेसिव, फॉर्मूला ऐसा कि टाइल न टूटेगा न छूटेगा। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। पुलाची जाना था, बस छूट गई। अगली बस कब है? गुरुजी, सालों के बाद देख रहा हूँ तुमको। गुरुजी ने मुझे क्लीनर से ड्राइवर बनाया। आप पोलाची जा रहे हो ना? हाँ, चलिए आपको ट्रक से छोड़ देंगे। अब ट्रक में सफर करना मुश्किल है। हमारा नया टाटा सिग्ना घर जैसा आरामदायक है। पोलाची में कोई खास काम? मैं नाना बन गया हूँ। बधाई हो। नातिन के लिए सोने की कड़ी ले जा रहा हूँ। गुरुजी खाना खा लेते हैं फिर चलेंगे। यहाँ क्या मिलेगा? अपना ढाबा यही है। गुरुजी पोलाची पहुँच गए। सफर का पता ही नहीं चला। वापसी में साथ चलेंगे? हाँ, मगर ट्रक मैं चलाऊंगा। टाटा मोटर्स ने बड़ी लगन और समझ से बनाया है एक नया सिग्ना कैबिन, जो आपके सेफ्टी, स्टोरेज और कंफर्ट की जरूरतों को पूरा करे। अब ड्राइवर प्रोडक्टिविटी होगी और भी ज्यादा। टाटा ट्रक्स, देश के ट्रक्स। Rao, when he was Prime Minister, kept referring to the disputed structure as a mosque. So was that also an attempt to instigate? See, it was always referred to as the disputed structure. It was never referred to as mosque. Till Narasimha Rao said there is a mosque. And then this whole clash of temple versus mosque was built. Muslims versus Hindu was built. Secularism versus nationalism was built. I'm Shivangi Shukla getting you the latest. And what we see right now is happening is that we are waiting for that very important massive breakthrough which has come in. Center and the ULFA will ink a peace deal, and this is a huge breakthrough in negotiations. We'll get to you all the details of that, but first the headlines we are tracking at this moment. Massive breakthrough of a 12-year center ULFA to ink peace deal shortly. Mega reject in JDU ahead of 2024 elections. Lalan Singh steps down. Nitish set to take over as chief.
India divided over prime ministerial phase. Hurdle. Siddharamaiah pitches for Rahul now. Sources suggest seat sharing discussion likely in January. BJP fires Indi Joro Yatra attack. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in Ayodhya to take stock of the preparedness. All eyes on Prime Minister's mega Ayodhya visit set to unveil mega projects ahead of the inauguration. And viewers, let's go ahead to the top story tracking right now. Nitish Kumar was unanimously re-elected as president of Bihar's ruling Janata Dal at a meeting of the party's national executive in Delhi. The Bihar chief minister was reappointed minutes after aide Lalan Singh stepped down, ending weeks of frenzied speculation. The big development comes ahead of 2024 elections, viewers. So top update coming to Republic TV, and we are getting many reactions coming in as well. Let's play them out. अरे धूप चलिए, आज बैठक में अरे बैठक में अरे वहाँ चलिए ना, धूप में चलिए, धूप में चलिए, धूप में चलिए। हम भी थे वहाँ जब उन्होंने प्रस्ताव दिया था। तो नीतीश कुमार कब कार्यभार संभालेंगे? राष्ट्रीय कुमार जी ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया तो ये कहा जाए कि आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नीतीश कुमार है। अभी तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। और विजय जी, कारण क्या रहे ललन सिंह के इस्तीफे देने? ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिए। विजय जी, नाराजगी की बात थी ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों के बीच में, क्या वो एक मुख्य वजह रही ललन सिंह के इस्तीफे की? किस चीज की? ललन सिंह के इस्तीफे की मुख्य वजह क्या दोनों के बीच में जो नाराजगी है वो भी एक मुख्य वजह रही? नाराजगी? बिल्कुल। इतना नया शब्द आप कहां से ला रही है? ये इस शब्द का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। महेश्वर हजारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी स्पीकर महेश्वर जी। एक बात जो आज जो बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ है वो ये हुआ है कि ललन सिंह का इस्तीफा और साथ ही साथ नीतीश कुमार का नाम जो प्रपोज किया ललन सिंह ने, तो आप लोग बताइए कि पहले से ही ये तय था कि ललन सिंह अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं? नहीं, पहले से तय नहीं था, चूँकि आदरणीय नेता ललन बाबू ने उन्होंने जाहिर की, चूँकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे बहुत व्यस्तता है और पार्टी के संगठन पूरे देश में खड़ा करना है, उसमें मैं पूरी समय नहीं दे पाऊंगा। इसलिए सम्मानित नेता नीतीश कुमार जी से आग्रह किए जो आप स्वयं इसको संभालने का काम कीजिए और कर्तव्य ध्वनि से सभी ने स्वागत किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उसे स्वीकार भी करने का किया। अभी नेशनल काउंसिल की बैठक हुई, उसमें मुहर लग जाएगी। एक और बात महेश्वर जी, एक बात लगातार कही जा रही है कि अब बीजेपी भी ये बात खुल करके कह रही है कि जो नज़दीकियां थी ललन सिंह की आरजेडी से, वो एक मुख्य कारण रहा क्योंकि नीतीश कुमार नाराज थे इस बात से, उनकी बढ़ती नज़दीकियां आरजेडी से, और वो एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से ललन सिंह के इस्तीफे की भी चर्चा सुखबुगाहट पटना से लेकर दिल्ली तक काफ़ी दिनों से थी। नहीं, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कोई हमारा शीर्ष नेतृत्व न बोला है, न हम लोगों को कोई भी MP MLA बोला है, यह सिर्फ मीडिया की उपज थी। हम लोगों को कहीं कोई नहीं थी। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और ललन बाबू में दोनों में इतनी मित्रता है और जो पार्टी का फाउंडर मेंबर है दोनों आदमी, पार्टी के बनाने में, पार्टी के बढ़ाने में आदरणीय ललन बाबू की बहुत ही बढ़ चढ़ की हिस्सा रही है, इसलिए ललन बाबू पर कोई शंका नहीं कर सकता है। आज से ही नीतीश कुमार अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष? नेशनल काउंसिल की बैठक होगी, उसमें मुहर लग जाएगी, उसके बाद संभालेंगे। एक और बात, नाराजगी की वजह क्या ये भी थी क्योंकि ललन सिंह को एक मुख्य भूमिका दी गई थी ये कन्वे करने के लिए कि नीतीश कुमार की मंशा है कि वो PM चेहरा हो, वो नेशनल कन्वीनर हो अपोजिशन ब्लॉक का, लेकिन ललन सिंह शुरू से कन्वे नहीं कर पाए, ये भी एक वजह बताई जा रही थी। सब कुछ नहीं, ललन बाबू ने ईमानदारी से पार्टी के संगठन बढ़ाने का काम किया, पार्टी की मेहनत करने का काम किया, और चूँकि यह तो प्रक्रिया होती है, प्रत्येक वर्ष बैठक का 2 वर्ष हो चुका था, इसलिए आदरणीय ललन बाबू ने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को कहा कि आप संभालने का काम कीजिए, क्योंकि मैं चुनाव में व्यस्त रहूंगा। जेडीयू के लीडर
लीडर्स खुश हैं नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से, क्योंकि 2020 के बाद अब वो कमान संभालेंगे तो उनकी नेशनल एम्बिशन क्या अब खत्म हो जाएगी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाएंगे? वो सारे के सारे लोग खुश हैं, जितने भी हमारे नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं, नेशनल राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सारे लोग खुश हैं। निवेश जी, एक सवाल बस लेना चाहूंगी, आज जो फैसला हुआ, लल्लन सिंह ने अपना इस्तीफा सौंपा और नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रपोजल दिया, क्या इसकी सुगबुगाहट, इसकी चर्चा क्या कल ही हो चुकी थी, तमाम चीजें पहले ही तय थी? अगर आपको नहीं मालूम था कल कि कल क्या क्या हुआ था, तो हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? हाउ विल वी कम टू नो? वी हैव कम दिस मॉर्निंग, यू आर हियर इन दिल्ली सिंस लॉन्ग, सो यू मस्ट बी हैविंग मोर इन्फॉर्मेशन as to what was to happen. But there was already reports of Lallan Singh quitting from his designation as national president, and it was already iterated also that all these things will formally be announced in the national executive meeting. Could we say that the people, the veterans inside JDU already knew about it? Well, it was in the air. Definitely, it was there in the air, and he had himself announced. Honorable Rajiv Ranjan Singh, Lallan Singh, had himself announced that he wants to contest elections. He wants to go there in the field and work in his constituency, and that's why he wants to quit the post. But no fire is without the smoke. No smoke is without the fire, Deveji. You already know, and all the ongoing rift news was also because of close proximity of Lallan Singh with RJD leaders. And it was one of the reasons because of the growing rift. No, absolutely not. That's a rumor, I would say. That's not a very proper rumor to be spread around. We are in the government with the RJD. Where's the question of proximity? JDU is in the government with the RJD. So where's the question of proximity? The whole the complete JDU is in close proximity with the RJD as long as the government is there. It will always be there. Continuously is iterating that Lallan Singh is the man because of whom the alliance between BJP and JDU couldn't work, and the alliance between RJD and JDU was because of Lallan Singh only. All rumors spread by you people. Nitish Kumar, when he will formally take up the charge? Well, he has already accepted it. He's already become the president. Well, yes, I'm joined by Lallan Saraf, who's an MLC in the Bihar Vidhan Parishad and a very, very close confidant of Nitish Kumar. Nitish Kumar trusts him a lot. In fact, he is the eyes and ears of Nitish Kumar. Lallan Saraf जी, आप मीटिंग में मौजूद थे, क्या क्या बातें हुई? हम लोग तो पहले से बता ही रहे थे कि ललन जी जा रहे हैं, नीतीश जी आ रहे हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इच्छा व्यक्त की गई है, उसकी संपुष्टि नेशनल काउंसिल की बैठक में होनी है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि इस पद से मैं मुक्त होना चाहता हूं और आप इस पद को संभालिए। तो मेरा ये मानना है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए और इंडिया गठबंधन का जो धुरी बन के उभरे हैं नीतीश कुमार जी, ये बहुत ही आवश्यक था और ये ससमय सही फैसला है। इससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। नीतीश जी ने एक्सेप्ट कर लिया प्रेसिडेंटशिप का पोस्ट और क्या कहा? नीतीश कुमार जी का कहना था कि बहुत ही मुझ पर प्रेशर पड़ा और चूंकि इन्हें चुनाव भी लड़ना है तो मैंने स्वीकार कर लिया है, मैंने अपनी सहमति दे दी है और यदि राष्ट्रीय परिषद की संपुष्टि हो गई तो मैं इस पद को संभालूंगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं लोगों को कार्यभार दूंगा, अलग अलग कार्यभार दूंगा और सबको काम करना पड़ेगा और सबने काम करने की सहमति दी है। और क्या वर्किंग प्रेसिडेंट सब भी बनाए जाएंगे डिसेंट्रलाइज? ऐसी कोई नहीं है, काम वो बांटेंगे, लोगों को अलग अलग काम देंगे। अच्छा। और सबसे बड़ी बात कि ललन सराफ जी, ललन सिंह का 2 महीने पहले चुनाव के हटना ये अनायास नहीं है। ये एक तरीके से देखा जाए तो राजनीति में गलियारे में बात चल रही थी कि लालू जी से क्लोज हो गए, पार्टी के विधायक टूट रहे हैं, जैसे आरसीपी सिंह पर आरोप लगा था। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में नया पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी बातें आई है, आप जानते हैं कि भाजपा जो मिथ्या और भ्रामक दुष्प्रचार करती है, मुझे उसी का ये नतीजा लगता है। ललन सिंह जी का अपना चुनाव है और उसके साथ ही साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को। हमारे 25 प्रदेश में संगठन है, 25 प्रदेशों में जाना और हर जगह चुनाव का काम करना और खुद चुनाव लड़ना, यही कारण होगा कि उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर करके और नीतीश कुमार जी विधायक आपके एकजुट रहेंगे?
हर हालत में नीतीश कुमार जी के साथ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सबके सब विधायक एकजुट हैं और विपक्ष के विधायक भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का नेतृत्व बना रहे। 2017 में भी आप लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे और अचानक खिड़की दरवाजा खुल गया और डिनर आयोजन हो गया। बीजेपी के बड़े नेताओं को हवा भी नहीं थी बिहार में, ऊपर से आदेश आया, सारे विधायक सीएम हाउस में घुस गए। तो क्या उसी तरह की पटकथा फिर से लिखी जा रही है क्या? 2020 से जो भाजपा ने हमारे नेता के साथ किया है तो अब इसकी कोई संभावना नहीं, दूर दूर तक कोई संभावना। 2020 से कई मॉडल, आप भी जानते हैं, कई मॉडल छुटभइयों से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना कि क्षेत्रीय दल खत्म कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की जितनी बातें भाजपा ने की है, हमारे विधायकों को मणिपुर में तोड़ना, नॉर्थ ईस्ट में जब क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बन जाते, ऐसी बातें वो की है जो भाजपा जैसे नेशनल पार्टी को शोभा नहीं देता है और सही नहीं है। भाजपा से मोह भंग हो गया। भाजपा मुक्त भारत चाहिए। लेकिन आपके जेडीयू का तो एक मजबूत धड़ा चाहता है कि भाजपा के साथ फिर से मिल जाए, लालू जी के साथ नहीं रहना चाहते। ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती है। लल्लन सिंह के इस्तीफे को लेकर के कल आपने एक बात कही थी कि ऑफिस बियरर्स की कैपेसिटी में नहीं है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो होगा वो देखा जाएगा। आज इस्तीफा हो गया है तो ये माना जाए कि तमाम चीजें पहले से तय थी जो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो कुछ भी होगा वो राष्ट्रीय परिषद के बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन जो प्रपोजल रखा लल्लन सिंह ने, नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का जो प्रपोजल दिया, कहा जा रहा है नीतीश कुमार ने उसको स्वीकार भी कर लिया। सब परिषद में होगा, अभी नहीं कुछ भी। तो ये नेशनल काउंसिल की बैठक में ये माना जाए कि जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है फाक जी, वो फॉर्मल अनाउंसमेंट हो। ऐसे फैसले होंगे वो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होंगे। तो बतौर जेडीयू नेता आप खुश हैं कि नहीं कि नीतीश कुमार दोबारा अपना कार्यभार संभालेंगे? कभी नाराज ही नहीं थे, खुश होने की क्या बात। लेकिन लल्लन सिंह जी से तो काफी सारे लोग नाराज थे, काफी सारे जेडीयू नेता नाराज नहीं था। ये आप कह रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब लोग खुश थे और सब खुश हैं और आगे भी खुश रहेंगे। कह रही थी कुछ भी ठीक नहीं है गठबंधन। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उससे हमको कोई बहस नहीं। हमारे पार्टी में कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, दल का कोई आदमी, सब लोग खुश थे, सब एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे, कहीं कोई बात नहीं। ये माना जाए कि आज से नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं माना जाए। राष्ट्रीय परिषद के बाद इसको तय किया जाएगा। कह रहे हैं लल्लन सिंह जी कि हम इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं कि चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ना है तो व्यस्तता ज़्यादा होगी, इस कारण से। देखिए, कई पार्टी और होगी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और चुनाव भी लड़ते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते और तब चुनाव लड़ते तो कोई विदेश में थोड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाकर काम करना पड़ता है कि अपने क्षेत्र में समय नहीं दे पाते। यह तो बिल्कुल फालतू की बातें हैं ना। जो अंदर की बात है, जो बाहर भी उस तरह की चर्चा आ रही थी, इनका आरजेडी के साथ अधिक नज़दीक का रिश्ता होना, इससे जेडीयू को खतरा महसूस हो रहा था, इस कारण से ऐसा हुआ है। यूनाइटेड का अपना मामला है, वहां की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम आज भी तैयार हैं कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर चुनाव लड़े, दोनों को हराने का काम है। जेडीयू में जो खुल के सामने आ गया है सर। देखिए, नेता तो सिर्फ एक ही है, नीतीश कुमार, वहाँ दूसरे और तो है नहीं। तो नीतीश कुमार जी कभी आरसीपी जी को अध्यक्ष बनाए, कभी ललन जी को अध्यक्ष बनाए, कभी और किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, ये उनका दायित्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम पूरे महागठबंधन और इंडी गठबंधन के लोगों को हराने के लिए तैयार हैं। The Prime Minister is set to inaugurate multiple development initiatives valued at over 15,000 crore rupees in Ayodhya, the range of projects aimed at boosting Ayodhya's development and infrastructure. Prime Minister Modi is scheduled to conduct a roadshow in Ayodhya tomorrow. After inaugurating the Ayodhya airport, PM Modi will be holding a 15-kilometer long mega roadshow. Prime Minister Modi will be unveiling the newly built Ayodhya airport tomorrow ahead of its inauguration. Paintings depicting Lord Ram and Goddess Sita have been painted on the highway wall near Ayodhya airport.
Ayodhya Dham Junction is being illuminated in preparation for PM Modi's visit tomorrow. PM Modi will inaugurate Ayodhya Dham Junction and flag off new Amrit Bharat trains and 6 new Vande Bharat trains. Ahead of the consecration ceremony of Ayodhya Ram Temple, 2,100 women performed the puja, a ritual believed to bring auspiciousness before commencing any significant endeavor. This ritual holds the significance in preparation for the upcoming event in Ayodhya. To enhance the look of the Ayodhya Ram Temple's aesthetics, the women workers are polishing the stones designated for the temple's construction, contributing to its beautification efforts. The temple town of Ayodhya is being decked up with flowers, lights and scriptures to give it a divine look ahead of Prime Minister Modi's visit that is scheduled to take place tomorrow, December 30th, to inaugurate an international airport and the redeveloped Ayodhya railway station. Here's more. It is less than 24 hours to go for the Prime Minister to arrive in Ayodhya, where he will be inaugurating thousands of crores worth of project and dedicating them to the nation. But this, of course, also requires a lot of security arrangement, and you can see how right behind me there have been several police officers that have been deployed, and in fact this is across the city of Ayodhya that this kind of a bandobast is in place, especially keeping in mind that the Yogi Adityanath, the Chief Minister for Uttar Pradesh, is going to be arriving here, taking a stock of the entire situation, carrying out review meetings as well, right before the Prime Minister's arrival in Ayodhya as well. In fact, police officers from across the state have been deployed in the city of Ayodhya. We also see RPF as well that has been deployed along the route in this particular national highway on the entrance of Ayodhya as well. And that essentially helps us understand the kind of security that is in place, because it is not just one rally. There is going to be a huge road show that the Prime Minister is going to be also carrying out. Keeping that in mind, the security is in place. In fact, this is the entire Dharm Path that we also get to see, where in fact the police has been deployed. The police has been kept and making sure that each and every vehicle that is passing by from that particular place and that particular point is also being checked. And that's how the security is in place, just less than 24 hours for the Prime Minister to arrive in Ayodhya. With video journalist Vipin Mori, I'm Priyanka Sharma for Republic. Special rituals will be performed from 14 to 22nd January. The festivities will include the Amrit Mahotsav and also a Mahayagya, culminating in the consecration ceremony on Jan 22nd. A procession featuring 100 idols of Lord Ram is set to take place on Jan 17th, adding to the spiritual fervor. Take a look at this report. मेरी झोपड़ी के भागा जाग जाएंगे, राम आएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे. Elaborate arrangements have been made for Amrit Mahotsav. तो आपको बता दें कि इंतजार 22 तारीख का है जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन आपको बताएं उससे पहले किस तरीके की तैयारियां अयोध्या नगरी में देखने को मिल रही हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त एक ऐसी जगह पर है जहां पर 14 तारीख से उत्सव की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि अमृत उत्सव यहां मनाया जाएगा, जो कि राम भद्राचार्य जी के द्वारा यहां आपको बता दें कि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में अनुष्ठान किए जाएंगे और इसी के साथ में कई ऐसे कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए हैं। The ritual will be conducted by Jagat Guru Ram Bhadracharya. क्या तैयारी है यहाँ पर, किस तरीके से कितनी यज्ञशालाएं बनाई गई हैं, कैसे कैसे ये अनुष्ठान होगा? ये तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अष्टोत्तर सहस्र यानी 1008 कुंडीय श्री हनुमान महायज्ञ होगा और 14 जनवरी को महाराज श्री जगत गुरु जी का जन्म दिवस है। उस दिन से यह कार्यक्रम शुरू होगा 14 जनवरी से 22 जनवरी पर्यंत। और इस यज्ञ के आचार्य हमारे गुरुदेव राजस्थान से डॉक्टर बालकृष्ण जी कौशिक होंगे
और यज्ञशाला की अभी तैयारियां चल रही है। कुंड निर्माण हो चुके हैं, लेकिन जो शेष तैयारी है वो पूर्ण हो रही है, अभी जारी है। और ये अनुष्ठान जो है इसमें 1008 जोड़े भी बैठेंगे? बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि 14 तारीख से शुरू होकर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही इसका समापन है। 22 जनवरी को ही इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। आपको ये तस्वीर देखने को मिल जाएगी कि अभी जो यज्ञशालाएं हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। इसी यज्ञशाला में हवन होते हुए यहाँ पर नजर आएगा, और जिसमें 1008 जोड़े यहाँ पर बैठेंगे और 1008 ही जो यज्ञशालाएं हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। तो आप देखिए कि प्रभु राम के आगमन को लेकर, मंदिर निर्माण को लेकर किस तरीके का उत्सव आपको अयोध्या नगरी में देखने को मिलेगा। जगह जगह इसी तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। और राम भद्राचार्य जी का जन्म दिवस है 14 तारीख को, और उसी शुभ दिन से शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी अमृत उत्सव की, जो कि मनाया जाएगा, जिसमें बड़े गणमान्य लोग भी यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं जो पहुंचेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए जो 14 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक एक बड़ा उत्सव आपको अयोध्या नगरी में देखने को मिलेगा। साथ में आपको ये भी बता दें कि लगभग 1008 हवन कुंड बनाए गए हैं, जिसमें सीधे तौर पर अनुष्ठान को संपूर्ण किया जाएगा। वो कुंड भी हम आपको दिखाएंगे, लेकर चलेंगे, और यहाँ पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो भी होने वाले हैं। पीछे भी एक बार संतोष आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मंच अभी तैयार हो रहा है, सजाया जा रहा है, और अभी तैयारी यहाँ लगातार जारी है। From special rituals to cultural programs such as Ram Katha will be conducted in the build-up to the Pran Pratishtha. Bureau Report, Republic TV. And viewers, we see that red alert has been issued. Dense fog is in Delhi, Punjab, Haryana and Chandigarh. Now, a thick layer of fog has engulfed the national capital, leading to reduction in the visibility. Akil gets the bird's eye view of thick fog that's enveloped the entire Delhi-NCR region. Right now, I'm just standing at the center of Yamuna Bridge, and here you see the visual of dense fog behind me and towards my right and towards my left. There you see a dense fog has engulfed this Yamuna Bridge at the GNDU flyover. And if you see, a red alert has been issued for dense fog in Delhi, Punjab, Haryana and Chandigarh. So a thick blanket of fog in the national capital has led to over 100 of flights being delayed due to which, and dense fog in the Delhi and the neighboring region, that is the Delhi-NCR region. If you talk about Gurgaon, if you talk about Noida, if you talk about Greater Noida, if you talk about Faridabad, so in the entire region, the dense fog, the thick layer of dense fog has covered everything right now. And what we know so far, that Delhi is expected to see this dense fog on Friday, that is today and tomorrow itself, and with the minimum temperature to hover around 7 to 8 degrees Celsius. This is what we have been told by the IMD. And what we know so far, that schools in Noida and Greater Noida will remain shut due to the dense fog. And there have been reports that several flights have been delayed due to the dense fog. Not only the flights, the air traffic has been affected. Apart from air traffic, if you talk about the vehicular traffic, I would like to request my VJ to show you this side visual. Here you see the visibility is pretty less, and due to which the cars moving on this road is not moving very fast. And right now, apart from this, if you talk about the train movement, so train movements is also got delayed, and several trains have been cancelled. Apart from that, what we know so far, that some trains are running very late for almost 6 to 8 hours. With video journalist Rawat Akil for Republic TV. Much more coming up. India divided over prime ministerial face hurdles. Sadharan pitches for Rahul now. Sources suggest a seat-sharing discussion likely in January. BJP fires Indi Joro Yatra attacks. Stay tuned. अक्सर मन में डर सा आता है। तुम बस एक हाथ बढ़ाओ, राह हम बना लेंगे। तुम बस मैदान तक जाओ, हम जीत को अपना लेंगे। Let's pledge
to help make India समर्थ by Hyundai. मंजिल उनकी, साथ हमारा. Hyundai.co.in पर लॉग इन करें. हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे. हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे. भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है. अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का. वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए. करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं. याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023. प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता. हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली. जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां. हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे. हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े. अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए. हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए. चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो. यही आजादी के असली मायने हैं. शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे. अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं. बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं. पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार. इस पल को मुमकिन करने के लिए रिया ने पहले से ही शुरुआत कर दी थी. ये पल सच हुआ, ये पल अपनों के ख्वाबों से सजा है. ये पल मानो रुक सा. और म्यूचुअल फंड से शुरुआत करना जिम्मेदारी की निशानी है. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा. हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन. हमारा संकल्प विकसित भारत. Massive breakthrough after 12 years. Centre and ULFA to ink a peace deal very shortly. Mega rejig in JDU ahead of the 2024 elections. Lallan Singh steps down. Nitish Kumar takes over as the chief. India divided over prime ministerial face hurdle. Siddaramaiah pitches for Rahul now. Sources suggest seat sharing discussion likely in January.
BJP fires Indi Jodo Yatra attack. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in Ayodhya to take stock of preparedness. All eyes on Prime Minister's mega Ayodhya visit, set to unveil a mega project ahead of inauguration. A tripartite peace accord between the pro-talks faction of the ULFA, that is the United Liberation Front of Assam, and the Central and Assam governments will be signed today, aiming to end decades-old insurgency in the state. Union Home Minister Amit Shah, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, and more than a dozen top leaders of the pro-talks faction of the ULFA will be present during the signing of this peace agreement. So it's a big breakthrough after 12 years, viewers. We are talking about Centre and the ULFA peace deal here. And as just a few days ago, Republic TV got you this story first, that Centre and the ULFA peace deal will be signed on the 29th of December. That is what we're expecting today. And my colleague Anirudh is joining us live on the broadcast for more on this. A tripartite peace accord is what we expect, and this is going to be historic, Aniruddha. Tell us more details about this and the importance of it. Yes, Raxita, definitely this is going to be a tripartite memorandum of settlement between the United Liberation Front of Assam, the Government of India, as well as the Government of Assam, and this will bring to an end of 43 years of violence in the state. That is at least what is being hoped now. And with this signing of accord, there will be a tremendous shift as far as the political discourse of the state is also concerned, looking into the fact that this faction, the Pro-Talk faction, have the largest number of ULFA cadres intact with them. It is very, very important. The might and power of this faction cannot be underestimated. And as far as the signing of accord today is concerned, we have got to know that all the top leadership of the ULFA is already in Delhi. In a short while from now, they will be arriving at the Ministry of Home Affairs, where they will be signing the agreement, the memorandum of settlement with the government. As far as the content of this agreement is concerned, it has been kept top secret. No one from the ULFA or from the government has opened up on what is there in this accord. But yes, sources who are privy to the points in the Charter of Demand and who are privy to what has been eventually made into the agreement have informed us that many contentious issues concerning the state of Assam, like the citizenship issues, like the NSC issue, have been kept out of this agreement for now. And there are, but let us not forget that a mega financial project will be announced through this memorandum of settlement today. And also it is going to bring in a new era of development, not only for the Assam but for the entire northeastern state, because Assam happens to be the gateway for the northeast. And we have also got to know that as far as the rights of the local indigenous people is concerned, it has been the priority of the Pro-Talk faction, and this agenda has also made it through the government of Assam, the government of India, and the ULFA had been able to crack through this. And there will be a major deliberation on the number 2 agenda of the Charter of Demand, which was put in by the ULFA, that is the status of the missing ULFA leaders and cadres. And we, if sources are to be believed, then a commission is likely to be set up
so that the status of the missing ULFA cadres and leaders can be investigated. Apart from this, there were several demands. Each and every demand were given a peaceful hearing by both the parties involved in this talks, and after going through a process which lasted for more than 13 years, today we have arrived at this historic movement in a short while from now, that is at around 5 o'clock in Delhi. At around 5 o'clock today, the memorandum of settlement between the ULFA and the government of Assam and the government of India will be signed in New Delhi. Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma has also arrived in Delhi today, in fact, to be present during this historic movement. Overall, it brings a message of peace to the violent seat, the northeastern, and also it will pave way for many other organizations who are still engaging in talks or who are still shying away from the talks with the government. It will pave way for those organizations who want to come for a settlement with the government, so that a peaceful solution can be reached not only in terms of ULFA but also in the greater context of the Northeast. Rakshita. Right, Anuruddha, of course, the fact that, this is known to be the mother of all peace deals, isn't it? And it's a really historic moment that we are going to witness just in a short while from now. But tell us, why did it take 12 years? Because this is a very big question. This is this is, as you just said, that this will not only, bring a betterment for the people of Assam, but also the entire Northeast. But why? What were the hurdles? What were the difficulties? Or what politically and on ground also? So what were the challenges that it took 12 long years for this peace deal to actually materialize? See, in the initial stage itself, when the peace process started way back in 2011, there was a historic blunder by the then central government. The UPA was in power and Home Minister was P. Chidambaram. At that moment, many in Assam, many intellectuals, many organizations from Assam, including the ULFA, the product faction, now had tried to convince the government of India so that it can be arrangements can be made so that Paresh Barua, who is still in an undisclosed location, can come out and join the table of talks. But the government of India at that point in time decided to proceed without bringing in Paresh Barua on the table of talks. And later on also there were several efforts by the ULFA and others as well as the government of Assam too, in order to bring Paresh Barua also on the table of talks. And the pace of the talks, which is kicked off in 2011, and the charter of demand was placed before the center, it went in a very slow-paced manner, and only towards the end of 2015, the talks resumed once again, bringing a ray of hope to the people of Assam. And when ULFA's General Secretary Anup Sethia was extradited from Bangladesh, the Bangladesh government, when they agreed to deport Anup Sethia from Bangladesh to India, then the talks process once again resumed a pace. And after it resumed a pace, a lot of deliberations were held. In the meantime, there were several efforts from the government as well as all the ULFA leaders including General Secretary Anup Sethia, to bring Paresh Barua on the table of talks. And there were certain issues again on the charter of demands which the government of India was not ready to talk. This had put the entire peace talks into a deadlock. But however, now with the government of Assam, the ULFA, as well as the government of India also agreeing together on many terms and conditions which were given by each other on the table of talks, they have reached a conclusion, and this is a positive conclusion that for once and for all, a settlement is going to be signed in Delhi today. Rakshita. Right.
All right, thank you so much, Anurudha, for joining us with those details from Guwahati. We'll keep a tab on all those updates that are coming in, because just a short while from now, we are going to see that peace deal that is going to be signed very shortly. But we will keep you updated, viewers, on that. But right now, a look at some other stories. Indian Navy proudly unveils the new design of Admiral's epaulets, showcasing the nation's maritime legacy. This unveiling symbolizes the Indian Navy's pride in its heritage and innovation. Millions of visitors are anticipated to visit Ayodhya after its inauguration. On transport facilities for the visitors, Uttar Pradesh Transport Minister says that the department will construct a bus depot to provide airport-like facilities with VIP lounges in Ayodhya. Ahead of the Ayodhya Airport inauguration, the Union Minister for Civil Aviation, Jyotiraditya Scindia, has said that the Ayodhya Airport aims to facilitate convenient visits for a significant number of tourists to the Ayodhya Ram Temple. वहाँ की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम आज भी तैयार हैं कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर चुनाव लड़े, दोनों को हराने का काम है। जेडीयू में जो खुल के सामने आ गया है सर। Several parts of Delhi-NCR enveloped in a dense fog this morning, the IMD has issued red alert and urged people not to venture out their vehicles between 4 a.m. and 10 a.m. because of the reduced visibility across the state. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says that the bond between India and Russia holds a deeper significance. He says that India and Russia are always trying to find new linkages, common points, and the intellectual world can make a difference. Gujarat BJP meet is underway in Gandhinagar ahead of the 2024 Lok Sabha polls. Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel chairs the executive meeting with other top party leaders to discuss the poll strategy. The temple town of Ayodhya is being decked up with flowers, lights and sculptures to give it a divine look ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit that is all scheduled to take place tomorrow, that is the 30th of December, to inaugurate an international airport and the redeveloped Ayodhya railway station. Here's a report on that. 24 hours to go for the Prime Minister to arrive in Ayodhya, where he will be inaugurating thousands of crores worth of project and dedicating them to the nation. But this, of course, also requires a lot of security arrangement, and you can see how right behind me there have been several police officers that have been deployed, and in fact this is across the city of Ayodhya that this kind of a bandobast is in place, especially keeping in mind that the Yogi Adityanath, the Chief Minister for Uttar Pradesh, is going to be arriving here, taking a stock of the entire situation, carrying out review meetings as well, right before the Prime Minister's arrival in Ayodhya as well. In fact, police officers from across the state have been deployed in the city of Ayodhya. We also see RPF as well that has been deployed along the route in this particular national highway on the entrance of Ayodhya as well. And that essentially helps us understand the kind of security that is in place, because it is not just one rally. There is going to be a huge road show that the Prime Minister is going to be also carrying out. Keeping that in mind, the security is in place. In fact, this is the entire Dharm Path that we also get to see, where in fact the police has been deployed. The police has been kept and making sure that each and every vehicle that is passing by from that particular place and that particular point is also being checked. And that's how the security is in place, just less than 24 hours for the Prime Minister to arrive in Ayodhya. With video journalist Vipin Mori, I'm Priyanka Sharma for Republic. We are looking at how the entire city of Ayodhya is getting decked up before the 22nd of January, and this is not just aesthetics but also with a lot of significance with which the entire decoration and the construction is being carried out. Ayodhya essentially is being also promoted as the Sun City, and that is being reflected in each and every infrastructure that we see. Right here is the Dharm Path that we are looking at, and of course there are the Surya Stambh that has already been installed, which is the glass light
which has the inscriptions of Jai Shri Ram as well. But right here, over here, in fact, is a very interesting statue as well that is going to be installed in the entire entry of the Dharmpath, because this is the Surya Bhagwan, the Surya god, in fact, the sun god, who is on the 7 horses, and they will of course be painting this entire murti, this entire idol, which will then later on be also installed in the very beginning of the Dharmpath, or the very entry of Ayodhya. Coming in from Ayodhya, where Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath is all set to review the situation and the arrangements ahead of Prime Minister's visit that is all set to take place tomorrow. Ram Mandir in its final touches given to the inauguration, the construction of the Ram Temple. And right now on your screens is Yogi Adityanath. Live visuals coming in from Ayodhya. This is a live feed that we are getting right now. Chief Minister Yogi Adityanath in Ayodhya. I am yet to understand the location, the exact location where he is, but right now we know that he is holding several meetings, back-to-back meetings, and reviewing all the aspects of arrangements that have been done for yesterday's inauguration. Remember, there's an inauguration of the Ayodhya International Airport and the Ayodhya Dham railway station. He's visiting the rally ground. All right, Yogi Adityanath is in the rally ground, and he is inspecting all the venues. And tomorrow we are going to see Prime Minister Modi's arrival in Ayodhya to inaugurate the airport in Ayodhya, and also the Ayodhya Dham railway station. Those are the visuals coming in of the Ram Mandir that is all set to be fully constructed. The final touch is being given, and we see that it is taking shape ahead of the consecration ceremony on the 22nd of January. My colleague Priyanka Sharma joins us on the phone line as she's tracking all development from Ayodhya. Priyanka, we just got the live visuals of Yogi Adityanath. He was at the rally ground. Tell us what are the plans for Yogi Adityanath today? He's been reviewing the arrangements for tomorrow. Well, absolutely, Rakshita. A big day tomorrow that is all set to take place, and the magnitude of it is reflected in these pictures that we're putting out on our screens for our viewers to understand how the Chief Minister Yogi Adityanath is in Ayodhya today. He is going to be here through the day today and is going to be taking stock of the entire developmental projects that are set to be inaugurated tomorrow by the Prime Minister in that roadshow in the rally. Now, the Chief Minister is, of course, going to be at the Ram Janmabhoomi temple as well and look at the entire construction work. Apart from that, he is going to go to the airport and then, of course, to the railway station. He is expected to also carry out a high-level review meeting with the authorities here in Ayodhya as well, where they will be reviewing the entire security measures that are in place, because to tell our viewers to understand the magnitude of it, how there are hundreds of police officials from across the districts of Uttar Pradesh who have in fact been deployed in Ayodhya to make sure that the security arrangements are in place, because there is going to be a lot of VVIP movement tomorrow, along with the Prime Minister being here and carrying out a road show. That in itself requires a lot of security measures in place that are being taken stock of by the Chief Minister Yogi Adityanath. Apart from that, we have seen how there have been several of these projects that have been extremely controversial as well as and also highlighted when it comes to Ayodhya, that being of the airport and also the railway station, also of the tent city that is going to be inaugurated. So all of these developmental push projects that are being made and are inaugurated, so that we can see how the government is pushing for Ayodhya to be made into an international religious tourist destination as well. So those points being kept in mind, we are looking at the magnitude of the entire event that is all set to take place tomorrow, when the Prime Minister is going to be in Ayodhya tomorrow morning. And that is why the Chief Minister is here today. And we had seen how the Chief Minister was expected, in fact, to be here even yesterday and carry out review meetings with the authorities here in Ayodhya, along with the trust members as well that he was all set to meet with. Because remember, in the backdrop of all of these security measures, we are also looking at developments taking place from the trust. There had been a high-level meeting of the trust as well that had taken place at Champat Rai's house, where in fact Gopal Rai along with
Vipendra Mishra and other chief priests had also been present, because the main important decision of selecting the idol was supposed to be taken today. The voting is supposed to take place today, and perhaps the Chief Minister is also going to be briefed about these developments when it comes to the trust as well today itself, because he was expected to be here yesterday, and all of these discussions were also expected to take place here yesterday itself. But today, as the Chief Minister is here, he's on the ground, he's making it a point to go to all of these places personally and looking at the entire arrangements that have been made by the authorities here. He is in fact also going to be having a meeting with the SSP for the security arrangements. Then we'll also be meeting with the ADA for the entire projects that have been inaugurated. So a lot of review meetings that we can expect perhaps in an hour or two from now, post the ground level taking stock of the situation that the Chief Minister really completes. Post that, we can expect a lot of high-level review meetings that will take place. And we were also learning from our sources that the Chief Minister perhaps might also spend the night here in Ayodhya itself, because the Prime Minister is going to be arriving early in the morning tomorrow, and post which we will see back-to-back events and road shows and rallies that will take place of the Prime Minister. Expected that the Prime Minister might also visit the Ram Janmabhoomi temple as well. So a lot of movement that we can expect tomorrow of the Prime Minister, which is why the magnitude of the event in itself requires that this kind of arrangements are to the T, and that's why the Chief Minister himself here on the ground or in Ayodhya and making it a point to go to each and every point where the Prime Minister expected to visit as well, and will also be speaking to each and every official to make sure that the security is in place, the arrangements are in place, and also, as you pointed out, that we were getting those pictures of Yogi Adityanath at the rally point, making sure that the public rally also goes without a hitch as well. Absolutely. All right. Thank you so much, Priyanka, for joining us with those details. We'll keep coming back to you for more as we get more inputs from Ayodhya. But those are the live visuals coming in. Yogi Adityanath reviewing preparations and even speaking to the public there at the rally ground in Ayodhya before Prime Minister's visit. We'll try and get you more details on the other side. Time for a very, very short break, viewers. But on the other side, more details and news coming in on the other side. Stay tuned. Narasimha Rao, when he was Prime Minister, kept referring to the disputed structure as a mosque. So was that also an attempt to instigate? See, it was always referred to as the disputed structure. It was never referred to as mosque. Till Narasimha Rao said there is a mosque. And then this whole clash of temple versus mosque was built. Muslims versus Hindu was built. Secularism versus nationalism was built. QSMT achieved. The world's foremost university rankings organizations have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. दिल के सारे राज खोलता है जब ये डायमंड बोलता है। दिल की ऐसी बातों को डायमंड से बुलवाओ। मलाबार आओ। और आप पाइए डायमंड वैल्यू पे अप टू 25% ऑफ ड्यूरिंग माइन डायमंड फेस्टिवल। फिल्म अनुकूल नीति, सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन शूटिंग की अनुमति और सब्सिडी की सुविधा ने उत्तर प्रदेश को बनाया है देश का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। 80 फिल्मों को सब्सिडी के तौर पर दिए गए हैं 44 करोड़ रुपए। विभिन्न स्थानों पर 450 से अधिक फिल्मों की हुई है शूटिंग। स्थानीय कलाकारों को मिला है अपना हुनर दिखाने का अवसर। माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि सकारात्मक फिल्में समाज को जागरूक बनाने का आधार हैं। इसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस इंटरनेशनल फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। फिल्म स्टूडियो, होटल्स, मॉल्स, थीम पार्क, मिक्सिंग और रिकॉर्डिंग स्टूडियो जैसी सुविधाएं फिल्म उद्योग के माध्यम से आकर्षित करेंगी पूंजी निवेश। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां,
बद इंतजामिया। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। आंध्रा की वर्मा फैमिली को गरम भाजी पसंद है, आगरा की वर्मा फैमिली को धर्म भाजी पसंद है। फैमिलीज जितनी भी सेम लगे, होती अलग है। इसलिए नया वीमैक्स पोस्टपेड जो दे हर फैमिली को उनकी पसंद की चॉइसेस, जैसे इजी डाइनर, डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड मोर। वीमैक्स पोस्टपेड, चूज व्हाट यू वांट टू यूज। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। Massive breakthrough after 12 years. Centre and ULFA to ink a peace deal shortly. Mega reject in JDU ahead of 2024 elections. Lallan Singh steps down. Nitish Kumar takes over as the chief. Indeed, divided over prime ministerial face hurdle. Siddaramaiah pitches for Rahul Gandhi now. Sources suggest seat sharing discussion likely in January. BJP fires Indi Jodo Yatra attack. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in Ayodhya takes stock of preparedness. All eyes on Prime Minister's mega Ayodhya visit, all set to unveil mega projects ahead of the inauguration. Now, tripartite peace accord between the pro-talks faction of the United Liberation Front of Assam and the central and Assam governments will be signed today, aiming to end the decade-old insurgency in the state. And Home Minister Amit Shah, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, and more than a dozen of the top leaders of the pro-talks faction of the ULFA will be present during the signing of this peace agreement. So very shortly, we are going to expect this big breakthrough. It's happening after 12 years. It's known to be as mother of all peace accords. And these negotiations have been taking place for quite some time now under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. And it is very historic. In a bit, if we talk about what's been happening, if you talk about Assam, this is it's a big
upliftment and a really good news for the people of Assam, and not just Assam but also the people of the northeast. The ULFA's pro-talks faction is in the national capital, and just a few days back we got you this story first on Republic TV that the centre and Assam are going to sign a tripartite peace accord with the group ULFA. And my colleague Aniruddha is joining us live from Guwahati for more. Now, the ULFA peace deal, Aniruddha, it encompasses a lot of things, including a financial package. There have been some 12-point demands also that have been put out by ULFA. Take us through all those details briefly so that for the benefit of our viewers, we can understand how important and what all goes into this deal. Yes, Raxita, as you have pointed out, there are financial packages to be announced. There are also several demands from the 12-point set of demands which have been met. But in order to give a perspective to our viewers, let me also take back them to the history part. It was on 7th of April 1979 that at the peak of the Assam agitation, the ULFA was born. They were not happy with the approach of the centre in dealing with the situations back here in Assam, and they waged a war on India. They led out an armed struggle seeking independence from India. The ULFA had been very much clear till the year 2011 that without the condition of sovereignty on the table of talks, they will not come and join the talks. But when the ULFA leaders who had been in the jungles of Myanmar, Bangladesh and Bhutan for several years since 1979 to at least 2006-07, when they came back to India, they realized the grounds have changed. The grounds have changed for better. The approaches which had been in the 1960s, 1970s have brought in some changes in the state of Assam. And it was in 2011 that the leaders led by Chairman Aravinda Rajkua agreed to sit on talks. At that point in time, it was Aravinda Rajkua, Sasazar Chaudhary, the Foreign Secretary of ULFA, Raju Borua, the Deputy CNC of ULFA, then it was Chitraban Hazarika, the Financial Secretary, who initially started the peace process with the government of India. And with the sort of demands placed before the government in 2011, the talks took an official turn and an agreement was signed. However, the entire process kept on hanging for a long time, and only after arrival of ULFA's General Secretary Anup Setia, a tripartite agreement, a tripartite pact was signed in order to formally engage in official talks with the government of India, the government of Assam and the ULFA. And today we are at this historic juncture where hopefully bringing an end to the 4-decade-long violence in Assam, which has also greatly affected the entire northeast region. A memorandum of settlement will be signed at 5 p.m. in the presence of Union Home Minister Amit Shah in New Delhi, as well as Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma will be also there. And it is being hoped that this will pave way for development, for peace and progress in the region of Northeast. However, there are also certain set of people, there are also a section of people who still believe that this signing of this accord will not bring in much change as it is being expected, because ULFA's commander-in-chief, who is now leading the anti-talk faction of the ULFA, that is Paresh Barua, who is in an undisclosed location, probably somewhere in the border of Myanmar or in China, in a safe place. He had been always
has not yet joined the table of talks. He is still adamant. He is still adamant on what he says, that the demand of sovereignty is not being agreed upon by the government of India to engage in talks, and that is the reason why Paresh Barua is away from the talks. But if we consider the might, if we consider the the number of strength, it is the Ulfa product faction which is today signing an agreement with the government of India, whose strength is manifold compared to that of the faction being led by Paresh Barua. Paresh Barua have been trying very hard to prove his presence in the last, 1 month also. He had targeted several low-intensity blasts in and around Assam's Upper Assam district, and this has always been there from his side to prove his presence. But if we talk about the strength, as I was referring to, Paresh Barua is now confined with a small number of people. What is the name you said? Taha. Let me clarify on that. Look, on this issue, I normally wouldn't like to comment about what election processes are in a different country. However, what I would like to say is the issue of radical elements being normalized and participate in elections is something perhaps I should comment on. We have seen some reports in this regard. It is an internal affair, so let me not comment on it. But the mainstreaming of radical terrorist outfits in Pakistan is nothing new and has been a part of the state policy for a long time. Such developments have serious implications for the security of our region. On our part, we will of course continue to monitor all developments that have an implication on our national security. Let me leave it at that. As regards the issue of Indian diplomats, you said being expelled from. Look, to be honest, I'm not aware of any such development. There were some speculative reports saying that intelligence officers are not being allowed being posted abroad. As a matter of policy, we do not comment on intelligence issues. I would caution against speculative reports, and I'm not aware of any such incidents of expulsion. You wanted to know in Hindi, आपका प्रश्न कौन पूछ रहा था? आप पूछ रहे थे हिंदी में. देखिए, इस मुद्दे के संबंध में जो अभी सिद्धांत ने पूछा, इस संबंध में हमने कुछ रिपोर्ट देखी हैं. हालांकि हम अन्य देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों का ये इस तरह से मेन स्ट्रीम में आना कोई नई बात नहीं है और लंबे समय से उनकी राजनीति का हिस्सा बन चुका है. ये इस तरह के डेवलपमेंट्स में हमारे क्षेत्र की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है. हमारी ओर से हम उन सभी डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करना जारी रखेंगे जिनका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी तरह से भी प्रभाव पड़ सकता है. Pranay, no, your question was slightly different. You had asked about whether a request regarding his activities. Look, as you're aware, the person in question is wanted in numerous cases in India. He is also a UN proscribed terrorist. In this regard, we have conveyed a request along with relevant supporting documents to the government of India to extradite him, government of Pakistan, to extradite him to India to face trial in a particular case. I think that is what you were referring to. So yes, we have of course been flagging the issue of activities that he's been wanted for. In this case, you specifically mentioned whether we wanted to extradite him. Yes, there has been a request sent to face trial in a particular case. This is a recent request. Well, I'm file numbers. just a day. Some time ago, some weeks ago, I would say. I'll have to check exactly when it was submitted. I have a date of when it was sent. I think our High Commission in Islamabad would have passed it on, but I could try to get you more information. But as I said, activities of people who are wanted in criminal or terrorist activities here, we continue to take up these cases with partners to say
In this case, of course, there's extradition with Pakistan, where we have asked for, where we don't have a, I think, extradition agreement, but we have requested for him to be brought back to India to face trial. सॉरी मैं भूल गया था, आपने इंग्लिश में शुरू किया था. जैसे मैंने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो व्यक्ति के बारे में आपने जिक्र किया, उन काफ़ी मामलों में इंडिया में वांटेड है. वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक लिस्ट है, उस लिस्ट के भी आतंकवादी लिस्ट में है. इस संबंध में हमने संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ पाकिस्तान सरकार को एक विशेष मामले में मुकदमे के सामना करने के लिए भारत में एक्स्ट्राडाइट करने का अनुरोध किया है. Really a matter for the Ministry of External Affairs. Perhaps, yes, we are aware of this. Chief External Affairs is briefing right now, speaking to the media. That was Arinder Bagchi, the spokesperson of the MEA, talking to the media about the Qatar sentencing. Remember, there were 8 of our the veterans who had been in fact sentenced to death in Qatar. Yesterday, it was a historic move that we saw, that it was reversed. The punishment has been reduced. The death sentence was reversed. So the MEA is saying that they are monitoring all the developments very closely. Right now, they cannot give out much more details. But the latest we have is that the MEA is monitoring all the activities and all the developments that are happening with regards to this case, because this is a case that that New Delhi has been fighting for justice for our 8 veterans in Qatar who had been in custody, who had been behind the bars for around a year, more than a year or so now in Qatar. The death sentence has been quashed, but of course the legal battle still remains. So the MEA continues to monitor the situation and monitor what is happening and provide all the legal aid to those army or navy veterans there, who had been commuted by the Qatar court. The death sentence was commuted by the Qatar court. Of course, that is a high court. The matter could go to Supreme Court. So a lot of legalities still remain, and the MEA is monitoring all of the activities there. In other news, latest update in Israel Embassy blast case in Delhi. 2 suspects have been identified by Delhi police. It is known that both suspects had taken an auto rickshaw from Jamia to Prithviraj Road. Police is investigating the CCTV footage of the entire route. BJP has once again lashed out at the Congress for seeking crowdfunding. BJP lashed out at the Congress, saying that after looting from the country, the Congress is now asking the country for donations. Cracks continue to widen within the opposition bloc. Karnataka Chief Minister and Congress leader Sadharan has pitched Rahul Gandhi now as the Prime Ministerial candidate on behalf of the India Alliance. Now, the Karnataka Chief Minister further said that only Congress party has the strength to address the problems of this country. So Rahul Gandhi should become the Prime Minister of the country. Anand Vihar Railway Station in New Delhi Railway Station experienced delays and cancellations of several trains due to the dense fog. Adverse weather conditions also led to the diversion of around 60 flights, where low visibility posed challenges for air travel. Indian Navy has unveiled a new design of Admiral's epaulets, showcasing the nation's maritime legacy. Announced by Prime Minister Modi during Navy Day, the new design is drawn from the naval ensign and it's inspired from Raj Mudra of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Ayodhya is gearing up to extend an extraordinary welcome to the Prime Minister, transforming the city of Ayodhya into a divine spectacle. Streets in the temple town are adorned with flowers. Orange and yellow marigolds enhance the beauty of the redeveloped Rampath, where ornamental lampposts are wrapped in decorative floral arrangements, adding to the grandeur of the preparations.
Republic Day preparations too are on full swing with the rehearsals for parade underway at the India Gate in the national capital. French President Emmanuel Macron has been invited as the guest for the event. The BJP responded to the Aam Aadmi Party's dirty politics charge. BJP has said that the Chief Minister Bhagwant Mann had been shamelessly lying over the matter of the centre not accepting Punjab's tableau for the Republic Day parade. अरविंद केजरीवाल गणतंत्र दिवस की परेड की झांकी पर अपनी फोटो लगवाना चाहते थे। किसी भी राज्य की झांकी निकलती है उसमें कोई राजनीतिक फोटो नहीं होती है। आपको अपने प्रदेश की संपन्नता दिखानी होती है, अपने प्रदेश के अचीवमेंट दिखाने होते हैं जो इनके पास नहीं है। वो ये सच नहीं बता रहे कि अरविंद केजरीवाल अपनी फ़ोटो लगवाना चाहते थे, इसी कारण से वो रिजेक्ट हुआ। और जहाँ तक अचीवमेंट्स की बात है तो दिल्ली में क्या दिखाएंगे? एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री, या नकली दवाई जो सरकारी हॉस्पिटल में या मौत का क्लिनिक में बट रही है। All right, the other big story that we're tracking today, Bihar politics, of course, continues to witness a lot of churn. Nitish Kumar was unanimously re-elected as president of Bihar's ruling Janata Dal at a meeting of the party's national executive in Delhi. Bihar chief minister was reappointed minutes after aide Lalan Singh stepped down, ending weeks of frenzied speculation. Of course, Republic TV got you that lead just yesterday. And the big development just comes ahead of 2024 elections. And they have, of course, it's coming in after days of suspense. Lalan Singh has finally stepped down as it was being speculated. Lalan Singh has stepped down as the president of the JDU for a second time now. Nitish Kumar is the president of JDU. So this is the latest we have right now. There are several reactions too that have been coming in from the meeting venue today. Let's take a look at those. अरे धूप चलिए, अरे वहाँ चलिए ना, धूप में चलिए, धूप में चलिए। हम भी थे वहाँ जब उन्होंने प्रस्ताव दिया था। तो नीतीश कुमार कब कार्यभार संभालेंगे? नीतीश कुमार जी ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया तो ये कहा जाए कि आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नीतीश कुमार है। अभी तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। और विजय जी, कारण क्या रहे ललन सिंह के इस्तीफे देने? ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। विजय जी, नाराजगी की बात थी ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों के बीच में, क्या वो एक मुख्य वजह रही ललन सिंह के इस्तीफे की? किस चीज की? ललन सिंह के इस्तीफे की मुख्य वजह क्या दोनों के बीच में जो नाराजगी है वो भी एक मुख्य वजह रही? नाराजगी? बिल्कुल। इतना नया शब्द आप कहां से ला रही है? ये इस शब्द का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। नहीं, पहले से तय नहीं था, चूँकि आदरणीय नेता ललन बाबू ने उन्होंने जाहिर की, चूँकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे बहुत व्यस्तता है और पार्टी के संगठन पूरे देश में खड़ा करना है, उसमें मैं पूरी समय नहीं दे पाऊंगा। इसलिए सम्मानित नेता नीतीश कुमार जी से आग्रह किए, जो आप स्वयं इसको संभालने का काम कीजिए, और कर्तव्य ध्वनि से सभी ने स्वागत किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उसे स्वीकार भी करने का किया। अभी नेशनल काउंसिल की बैठक हुई, उसमें मुहर ले जाएगा। एक और बात महेश्वर जी, एक बात लगातार कही जा रही है कि अब बीजेपी भी ये बात खुल करके कह रही है कि जो नज़दीकियां थी ललन सिंह की आरजेडी से, वो एक मुख्य कारण रहा, क्योंकि नीतीश कुमार नाराज थे इस बात से, उनकी बढ़ती नज़दीकियां आरजेडी से, और वो एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से ललन सिंह के इस्तीफे की भी चर्चा सुखबुगाहट पटना से लेकर दिल्ली तक काफी दिनों से थी। नहीं, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। कहीं कोई हमारा शीर्ष नेतृत्व न बोला है, न हम लोगों को कोई भी MP MLA बोला है। यह सिर्फ मीडिया की उपज थी, हम लोगों कहीं कोई नहीं थी। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और ललन बाबू में दोनों में इतनी मित्रता है, और जो पार्टी का फाउंडर मेंबर है, दोनों आदमी पार्टी। All right, getting in visuals of Yogi Adityanath, who is in Ayodhya ahead of Prime Minister's visit for the launch of the airport tomorrow. Yesterday we saw him holding meetings. Today again he is on ground
reviewing the preparations for tomorrow's event. Remember, there will be rallies and also several meetings of the Prime Minister with officials in Ayodhya, and there will be the inauguration of that sprawling airport in Ayodhya and also the Ayodhya Dham railway station. We're getting in visuals of Yogi Adityanath right now, who is in Ayodhya reviewing all the preparations and ensuring that yesterday all goes well for tomorrow's event. It is to ensure a grand welcome for the Prime Minister in Ayodhya also. And you can see right now he is offering prayers right now in Ayodhya. Yogi Adityanath, Chief Minister of Uttar Pradesh right now. Earlier we saw him reviewing preparations in the rally ground, and right now he's in a temple. My colleague Priyanka Sharma, tracking of developments right now, is joining us on the phone line. Priyanka, we see Yogi Adityanath now in Ayodhya. He is offering prayers, doing aarti. Tell us more details about this. Well, yes, Rakshita, we have seen how Yogi Adityanath, in fact, had arrived in Ayodhya about an hour ago, and he had taken stock of all the projects that are set to be inaugurated tomorrow by the Prime Minister. He's also gone to the airport. He will be going towards the railway station and the airport, and then also now we are looking at him in the Hanuman Gadi temple as well, carrying out those puja and rituals. And we had also seen a very candid moment of the Chief Minister Yogi Adityanath at the Lata Mangeshkar Chowk, the newly named Lata Mangeshkar Chowk, which apparently has Lata Mangeshkar songs also running, where he had taken a selfie as well and then had met with the officers, had a light moment with them. But all through the day, we will expect that the Chief Minister will be meeting with the officials and taking the review of all of the projects that are in place and how the security arrangements are in place in terms of the Prime Minister's arrival. Because let us tell our viewers that we had also seen how at least 3 DIGs, 17 SPs, 40 ASPs, 82 DSPs had also been deployed just about 24 hours ago. And after that, we have also seen that the RPF had also been deployed in the area as well. And now we are looking at the Chief Minister carrying out the Havan inside of the Hanuman Gadi temple. He will also be going towards the Ram Janmabhoomi temple, is what we've been given to understand. He will also have a meeting with the trustee members as well, is something that we are learning. We had seen how they were going to be meeting, in fact, with the trustees of the Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra, the trust that is responsible for the Ram Janmabhoomi temple. And the important decisions that are all set to take place today, because we were being given to understand that there will be a voting that will take place of all of the trust members and the chief priests of the temple, who will get together to decide upon the 51-inch tall idol of Lord Ram that will be selected out of the 3 designs that had been made. And we have seen over the last 1 year as well the entire process that it has taken, the strike from the very beginning of the sketches being made and then the sketches being zeroed in on with the team, with trustees, the designers as well. And then, of course, these 3 sculptors, in fact, being given the task of making the idols of Ram Lala that would also have 2 characteristics, which is that of divinity and innocence, because it is the Ram Lala, the child form of Lord Ram, that is going to be installed in the Ram Janmabhoomi temple. So these are some of the things that we are seeing as developments, because we will expect that the voting will take place, and post that the Chief Minister Yogi Adityanath may also meet with the trust members as well and be also briefed about the developments that have taken place today. And of course, another very important part of this meeting is also going to be about how the devotees will be accommodated there at the Ram Janmabhoomi temple, because only the main part of the temple has been completed, Rakshita, we must remember, and the entire pathway towards the temple as to how rituals will be carried out, how the devotees movement will also be taken into consideration, and how, because post 22nd of January, post the Pran Pratishtha, the authorities are expecting a lot of thousands of devotees, at least 25,000 or so footfall that they are expecting will start to take place in Ayodhya, and that is why these briefings are all the more important. And we are looking at the Chief Minister right now here in Ayodhya, personally overlooking each and every detail of Ayodhya, and specifically to tomorrow when the Prime Minister is going to be here at the airport first,
landing at the airport, at the Ayodhya airport, and then going towards the railway station that has been renamed from Ayodhya Junction to Ayodhya Dham. He will also be flagging off several of the trains, the Vande Bharat train specifically, which will be the highlight, and the frequency of the trains that will also be added to the Ayodhya Dham railway station. Post that, he will, of course, be going to the airport and once again inaugurating the newly named airport as well. And the frequency of the flights that have also been attached is going to be another highlight of the tomorrow's event, when we will see passengers, in fact, from Ayodhya already having booked several of their flights right after the Prime Minister leaves around 1 p.m. Is what we've been given to understand. So this is the kind of enthusiasm, the excitement and the arrangements that we see on the ground, and rightly so, the Chief Minister being in Ayodhya, he was expected to be here even yesterday, because he was expected to carry out the review meetings 2 days prior to the Prime Minister's arrival, that is yesterday and today as well. But because of a bad weather condition, he could not take off from Lucknow and could not arrive in Ayodhya on time. And then that's why he had to carry out the entire review meeting virtually yesterday. We had seen at around 5 p.m. when the review meeting had been carried out with the authorities, with the collector, the mayor, and also with the trust members as well. And now today we are looking at the Chief Minister Yogi Adityanath having arrived in Ayodhya and having met with the authorities, having met with the officials. Gujarat is where ideas turn into industries. And for 2 decades, Vibrant Gujarat Global Summit has been the dynamic platform from where the state's entrepreneurial spirit emerges. Through its visionary startup policy, combined with strategic initiatives like Gujarat Startup and Innovation Scheme, iHub and iCreate, Gujarat has propelled its startups to new heights and is today recognized as the startup capital of India. And with that distinction, Gujarat's transformative vision for emerging entrepreneurs is propelling India towards achieving the vision of Viksit Bharat at 2047. Be a part of Gujarat's progressive startup ecosystem at Vibrant Gujarat Global Summit 2024. Gateway to the future. हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। 3 से 4 व्हीलर में अपग्रेड तो करना है, पर इसमें से क्या खास बात है? इसमें एक खासियत हो तो बताएं। टाटा इस गोल्ड पेट्रोल CX में है दमदार इंजन जो दे बढ़िया पिकअप, बड़ी और स्ट्रॉन्ग लोड बॉडी और मेंटेनेंस
एकदम कम। तो अब सोचो, समझो और टाटा इस गोल्ड पेट्रोल से लो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो रही है। प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग और भर्ती बोर्ड तेजी के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने से आज प्रदेश के युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना साकार हो रहा है। मेरा नाम राम प्रकाश शर्मा है। मुझे जेल विभाग में जॉब मिली है, जेल वार्डर के पद पे हूँ मैं। हम लोगों ने सबसे पहले लिखित परीक्षा दी है, उसके बाद में कट ऑफ मेरिट वगैरह क्लियर करने के बाद में फिर हमने शारीरिक दक्षता क्लियर करी, DVPST हुआ, उसके बाद में फिर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, फिर मेरिट हुई, इसके बाद हम यहाँ आए। रोजगार सृजन की दिशा में नित नए कदम बढ़ा रही योगी सरकार ने प्रदेश में सरकारी नौकरी की नियुक्ति में एक रिकॉर्ड कायम किया है। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। Massive breakthrough after 12 years. Centre and ULFA to ink a peace deal shortly. Mega reject in the JDU ahead of 2024 elections. Lalan Singh steps down. Nitish Kumar takes over as the chief. India divided over prime ministerial pace hurdle. Siddaramaiah pitches for Rahul Gandhi now. Therefore, they have not been able to come up with logo, with neta, with niti. There's only confusion and contradiction in their alliance, and that is what is evident. Sources suggest seat sharing discussion likely in January. BJP fires Indi Jodo Yatra attack. Uttar Pradesh Minister Yogi Adityanath in Ayodhya takes stock of the preparedness. And all eyes on Prime Minister's mega Ayodhya visit tomorrow, set to unveil mega projects ahead of inauguration. So it's going to be a historic peace deal, viewers, that is going to be signed in a short while from now. This is the Centre and the ULFA deal that is going to be signed today. It's a big breakthrough that is going to take place after 12 long years for the benefit of the people of Assam, and not just Assam, of course, also for the people of the Northeast. Now, the United Liberation Front of Ahom, that is ULFA, the pro-talk faction of the ULFA, and the Centre is going to sign this peace deal. And we will get you more details about this in a short while from now. It is going to, of course, bring a significant breakthrough in the decades-old problem of insurgency in the Northeast. It's a tripartite peace accord between the pro-talks faction, viewers of the ULFA, and the central and Assam governments will be signing this deal today as it aims to end the decades-old insurgency in the state of Assam. For more on this, I'm being joined by my colleague Anuruddha from Guwahati. Anuruddha, of course, it's going to be a very historic peace deal, isn't it? Tell us about this deal and quite the key points, as in what is the most important point to actually, it has taken 12 years. We've been, the people of Assam have been struggling, but on the political level also, on the ground level also, there have been various hurdles. But this is going to be a deal that is going to bring about a sense of peace in Assam and in Northeast. Take us through the key details of this accord.
Yes, Raxita, this, if we see at the 12-year context, then it is a very less time compared to the 43-year-long history of violence that the state of Assam has gone through because of insurgency. Starting from 1979 till that, a lot of, violence have taken place in the state of Assam, and in most of them the ULFA is directly or indirectly linked. And as there has been several attempts also in the past to bring ULFA on the table of talks, there was a lack in political will to reach out a conclusive solution which we have witnessed very lately in terms of the Northeast or Assam is concerned. When in 2011 the talks were formally initiated, there was no certain agenda or point of talks on which the talks can proceed. It was only in the year 2016-17 when a formal agreement was made as to on what basis the talks will proceed between the centre, the government and the government of Assam and the ULFA. It is going to be a tripartite talk, and that is the reason why a tripartite agreement was in 16-17, so that the talks can proceed in a conclusive manner, so that a solution can be achieved. And after a lot of deliberation, all these three parties went through. Today we are here at a historic moment when the peace agreement will be inked formally between the government of India, the government of Assam and the ULFA. And there are a lot of aspirations for the people of Assam as far as this pact is concerned. Their hopes of each and everyone is very high. But yes, let me tell that as per our sources, many contentious issues such as NRC, such as the citizenship issues have been kept out of this agreement to be inked today. However, on the development front, there are many new things which the state of Assam will be witnessing. We are getting to know from our sources that a mega financial package for the state of Assam, a mega development package is likely to be announced. Apart from that, there are several agendas on which talks had taken place. This also include the scheduled tribe status for the 6 ethnic communities of the state, and these are all aspirations and what the people of the state have been expecting to hear from today. But yes, in a short while from now, exactly after half an hour, everything will be clear as what the government of India and the centre have decided on as far as these talks are concerned. And we are hopeful that this talks will bring in a permanent solution to the violence in the region, because ULFA, as far as the ULFA is concerned, ULFA has been one of the oldest outfit in the region, and they have been also one of the major groups, and the peace pact signed between the ULFA and the government of Assam and the central government will pave way for other organizations, other smaller organizations to join the table of talks with the government, so that a permanent solution can be reached not only for the state of Assam but for the entire Northeast. Rakshita. In fact, Anuruddha, we are seeing and we're playing those graphics also where a Prime Minister in his tenure, in the total number of years that he's been a Prime Minister, the Northeast had actually got a lot of push, not just development, but the peace push, which has a lot of challenges. And, be it the Bodo Accord and several other accords that we have just listed out, they have taken place for the benefit of a Northeast. His Act East policy, his Northeast policy has been a very important point of focus of both the governments, be
it Modi one, the first term or even this second term. But tell us about why it has taken 12 years, because there have been a lot of challenges on the political front as well, and also from the stakeholders also. So take us through what all has happened up until now, and why did it take 12 long years for this push, for this big breakthrough in Assam? Yes, Raxita, your question takes me to way back to 2011 when when the ULFA was brought on the table of talks. In the year 2011, when the UPA was in power and the Home Minister of this country was P. Chidambaram, at that time there was a historic blunder that was committed by the centre, and it was keeping Paresh Barua completely out of the talks. Later on, though there had been several attempts, though he never joined the table of talks, but if there are viewpoints in Assam that if in 2011 itself a concrete effort was made to bring in Paresh Barua on the table of talks, then things would have been completely different. But yes, even after starting the peace process in 2011 also, only a few meetings actually took place in the state, and there was no concrete meeting which could have led to a positive solution as far as the conflict between the ULFA and the government of India is concerned. And there was no concrete political outreach by the leadership in Delhi in order to pave way for the talks to go for a conclusive solution. But things changed later towards the end of 2015-16, and in 2016 when the centre initiated extradition of Anup Sethia from Bangladesh, and eventually after Anup Sethia's deportation from Bangladesh to India, in fact, Prime Minister Narendra Modi also himself thanked Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina for the extradition. And thereafter, after Anup Sethia's arrival from Bangladesh, the talks took a smooth takeoff. And today we are here at this juncture when this historic pact will be signed in Delhi. Rakshita. Right, and of course, it's of course a very significant development that is going to take place, and we will be shortly getting us. We'll get you more details about that, viewers, in a short while from now. That this deal is going to be signed. The Home Minister will also be present while this peace accord is signed. But right now, we'll be moving on to some other news, and if this is the news coming in from Ayodhya, of course, remember Yogi Adityanath, the Chief Minister, is in the temple town of Ayodhya, and he is going to review all the preparations that is going to take place for the events tomorrow. Remember, the Ayodhya Dham railway station and the Ayodhya airport, that is the Maharishi Valmiki Airport in Ayodhya, is going to be inaugurated tomorrow, and there is going to be thousands of crore rupees of projects that will be announced by the Prime Minister. So we will get you what the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh had to say ahead of that big event tomorrow. Take a listen in. देखिए, जहाँ जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम, और जो राम को लाए हैं वह अयोध्या आए हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर स्वच्छ अयोध्या, सुंदर अयोध्या का एक संकल्प जो अयोध्या वासियों ने लिया है, अयोध्या के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लिया है, यहाँ के हमारे महापौर जी, हमारे विधायक जी गणों ने लिया है, हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता यहाँ अयोध्या के पूज्य साधु संत और जनता जनार्दन सब ने लिया है, उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इससे कड़ाके की ठंड, जब लाठियां चलती थी, जब गोलियां चलती थी, जब जेल भेजा जाता था, तब भी राम भक्त रुकता नहीं था। हम राम भक्त हैं, राम सेवक हैं, कार सेवक हैं, और हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान है, सबको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ये आप समझिए, आवा तो पूरी अतिरुचिर बनाई प्लास्टिक मुक्त अयोध्या को लेकर के, यह हमारे यहाँ नगर निगम में महापौर जी विशेष जो अभियान चला रहे हैं यहाँ पे, उसी का यह भी एक क्रम है। Time for a short break, viewers. On the other side, the Indy remains divided over prime ministerial face hurdle. Siddaramaiah pitches for Rahul Gandhi now.
There's a reason why over 200 new age companies scout for talent from our campuses. It's because we've future-proofed our courses with a higher technological baseline, with a thrust on specialized industry skills and tech innovation skills. The Amritsar School of Engineering. Tomorrow's engineering today. हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो रही है। प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग और भर्ती बोर्ड तेजी के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने से आज प्रदेश के युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना साकार हो रहा है। मेरा नाम राम प्रकाश शर्मा है। मुझे जेल विभाग में जॉब मिली है, जेल वार्डर के पद पे हूँ मैं। हम लोगों ने सबसे पहले लिखित परीक्षा दी है, उसके बाद में कट ऑफ मेरिट वगैरह क्लियर करने के बाद में फिर हमने शारीरिक दक्षता क्लियर करी, DVPST हुआ, उसके बाद में फिर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, फिर मेरिट हुई, इसके बाद हम यहाँ आए। रोजगार सृजन की दिशा में नित नए कदम बढ़ा रही योगी सरकार ने प्रदेश में सरकारी नौकरी की नियुक्ति में एक रिकॉर्ड कायम किया है। जब सेफ बैंकिंग के बिना हो हैकर्स के पास अथॉरिटी, फिर किस बात की साइबर सिक्योरिटी। क्विक हील, आज के लाइफ की प्रायोरिटी साइबर सिक्योरिटी। The latest update in Israel embassy blast case in Delhi. 2 suspects have been identified by the Delhi police. It is known that both the suspects had taken an auto rickshaw from Jamia to Prithviraj Road. Police is investigating the CCTV footage of the entire route. The BJP has once again lashed out at Congress for seeking crowdfunding, saying that after looting the country, Congress is now asking the country for donations. Rahul Gandhi should forget about Nyaya Yatra. He should start Indi Jodo Yatra, because the way in which the alliance partners are fighting. Latest example is the Sanjay Samvad from Maharashtra. Have you heard Sanjay Nirupam say that Uddhav Sena is टूटी हुई party who will give them 23 seats? So Sanjay Raut from Uddhav Sena says that Congress has to start from zero. These गांव गली के नेताओं से we do not talk. We talk to leaders in Delhi. Who are these leaders in Maharashtra?
And this is the kind of confusion they have even in West Bengal, Trinamool Congress versus Adhir Ranjan Chaudhary. In Uttar Pradesh, Samajwadi Party versus Congress Party. In Punjab, Delhi, Aam Aadmi Party versus Congress Party. In Kerala, left party say that Rahul Gandhi should not contest from Wayanad. And we see Congress Party labeling Pinarayi Vijayan as dictator, coward, psychopath. अब पूरे alliance में no mission, no vision. Therefore, they have not been able to come up with logo, with neta, with niti. There's only confusion and contradiction in their alliance, and that is what is evident even now. Cracks continue to widen within opposition bloc. Karnataka Chief Minister and Congress leader Sadharan has pitched Rahul Gandhi as the prime ministerial candidate on behalf of the Indie bloc. The Karnataka Chief Minister also went on to say that the Congress party has the strength to address problems of this country, so Rahul Gandhi should become the prime minister of the country. New Delhi station experienced delays and cancellations of several trains due to dense fog. The adverse weather conditions also led to the diversion of around 60 flights where low visibility posed challenges for air travel. Indian Navy has unveiled the new design of